Hello and welcome to India Voice Fest 2022. It is day 2 of the fifth year of India Voice Fest. 2018 में शुरू हुआ भारत की वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री को एक साथ लाने का ये सफर, ये मुहिम, और आज 5 साल होने को हैं और सैकड़ों हजारों लोग इस मुहिम में, इस प्लेटफॉर्म, इस मंच पर हमारे साथ जुड़ गए हैं. दिस इज इंडिया वॉइस फेस्ट 2022, conceived and curated by yours truly, Darpan, produced and organized by Sugar Mediaz. The main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsors Audio Magic, proudly supported by the Arc Audio, a wonderful studio in Nasik, C Sharp Recording Studio in Pune and Mumbai, Skylink Freight Forwarders Private Limited, one of India's leading freight forwarding companies, and Petagaskar Spa. लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है क्योंकि कल हमारा पहला दिन था आज इस 2022 के संस्करण का, और आज दूसरा दिन है और हम लोग चल पड़े हैं. 7 दिन का ये महोत्सव है. दिस इज अ 7-day फेस्टिवल. इंडीड दिस इज इंडियाज biggest voice industry festival, and I would like to believe that this is possibly the world's biggest voice acting industry festival. मैं लौटूंगा कुछ ही क्षणों में और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का ये धमाकेदार सफर, आज की धमाकेदार शाम. कहीं मत जाइएगा, stay with us. I will be right back with some fantastic veteran magical artists from the voice acting industry. Right back. You know, one of the most amazing things about India Voice Fest, especially for me and for my team here, is हर रोज
कोई ना कोई चाहने वाला, सम और द अदर लव्ड वन सेंड्स अस सम अमेजिंग गिफ्ट्स। तो कल बहुत सारी केक्स आई थी और आज मैं स्टूडियो में आया एंड गेस व्हाट आई सॉ, दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ लव from one of India's most respected leading voice coaches, vocal coaches, Rama Vaidyanathan ma'am. She sent this beautiful hamper for all of us at India Voice Fest. Rama ma'am, thank you so much. And in fact, for some of you who don't know, Rama ma'am has written a fantastic book called Discover Your Voice, which is available on all leading book platforms. And she also heads the Shankar Mahadevan Music Academy ka voice coaching division, and she is fantastic. I've had the privilege of having had some vocal coaching from her, and I can't thank her enough for this. Thank you, ma'am. There you go. Thank you. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेशन एज ऑल ऑफ यू नो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन द स्केड्यूल टुडे वी हैव टू फैंटास्टिक सेशंस लाइंड अप विद सम ऑफ द मोस्ट wonderful artists in the industry, true veterans, young and very happening and very promising, and people with absolutely amazing amount of talent. The first session that we have today is called You Know This Voice, और इसका एक कारण है कि हमने इस सेशन का नाम रखा है You Know This Voice, क्योंकि ये जो 4 वॉइस आर्टिस्ट हमारे साथ हैं ये मल्टी फैसेटेड मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटीज हैं, और इनको आप हर रोज या आए दिन आप इनको सुनते हो टेलीविजन पर, ओटीटी पर, एड्स में, डबिंग में, आपकी जो फेवरेट किरदार हैं उनको ये आवाज़ें देते हैं. सो यू डेफिनेटली नो दिस वॉइस, और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि इन आवाज़ों के पीछे के चेहरों को आपके सामने लाया जाए. वैसे इनके चेहरे ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, पर आज हमारे साथ इस सेशन में जो बड़े ही कमाल के आर्टिस्ट जुड़े हैं, आइए एक एक करके उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएं. सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्क्रीन, आज कह रहा हूँ ऑन स्क्रीन, 11 तारीख को हम हर एक के लिए कहेंगे आई वुड लाइक टू कॉल यू ऑन स्टेज. 11 तारीख से याद आया, आई होप आपने अपने ग्रैंड फिनाले की टिकट ले लिए हैं हमारे इंडिया वॉइस फेस्ट की वेबसाइट से. अगर नहीं लिए हैं तो यू स्टिल हैव टाइम. Go on to indiavoicefest.com and get your ticket for the grand finale. And if you would like to join us for the dinner party, you can get a ticket for that too. It is going to be on the 11th of December, 4 p.m. onwards at Rangshad Auditorium, Bandra. And I'm looking forward to see all of you there. For now, please call on screen Vishal Menon. Hello, sir. Hi, Vishal. Hi, sir. So lovely to see you. I hope I'm audible, sir. ये कल मैंने एक जोक मारा था, मैंने सुना जिसके सर. लिए मुझे एक कमेंट आया कि जब मैंने कहा यू आर नॉट ओनली ऑडिबल यू आर ऑल्सो स्पॉटिफाई, तो किसी ने कमेंट किया कि हमारे टिकट के पैसे तो इस डायलॉग में वसूल हो गए. You're Yes, sir. मैंने absolutely सुना. audible. For all of you, I'll give you a quick introduction of Vishal. वैसे मेरे पास ये क्यू कार्ड्स हैं जो मेरी टीम ने बहुत पेनस्टेकिंगली बनाए हैं, पर इनके इतने बड़े बड़े इंट्रोडक्शंस हैं कि फिर पूरा सेशन खत्म हो जाएगा. तो आई एम गोइंग टू टेक द इजी वे आउट, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ऑल ऑफ देम आर आल्सो फ्रेंड्स. तो मैं बताऊं विशाल के बारे में. यार विशाल बहुत कमाल के वॉइस आर्टिस्ट है. इनफैक्ट ही इज ऑल्सो वन द इंडिया वॉइस फेस्ट अवार्ड इन 2021 इन द डिजिटल फिल्म कैटेगरी. बट व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट विशाल, आई एम नॉट श्योर इफ यू लाइक this or not, but I'm a huge fan of Vishal the dancer. So if you haven't seen his Instagram reels, then you are missing out on something. Please check out Vishal Menon on Instagram. His dance performances, his dance reels are absolutely another level. And Thank you, sir. उसके अलावा विशाल is also an MBA in marketing. Apparently ये मुझे पता नहीं था. So I'm glad कि इस चक्कर में इस वजह से मुझे ये बात पता चल गई. He's worked as a marketing analyst. In fact, he also teaches at the Sydenham Institute of Management for MBA, which is so amazing. तो हमारी इंडस्ट्री में इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं, मुझे पता नहीं था. Thank you, sir. And Vishal is the voice of a lot of brands, a lot of characters. He's voiced for brands like Tata Motors, Mahindra XUV, Bajaj Pulsar, Swiggy, Discovery, History Channel. He's also been the voice of leading characters in Bridgerton, The Grey Man, Miss Marvel, James Marsden and Dead to Me, Dragon Ball, 13 Hours, the English voice of Ranvijay in Mismatched Season 2, and of Hiten Tejwani in Jogi, to name a few. Jogi तो बहुत recently आई है ये film, and I love the film.
The जी same one, सर. right? Diljit Dosanjh wali, na? Right sir. That's Oh, right. I love the film. So Vishal is an absolute legitimate young veteran of the industry, and I'm so glad that Vishal you could join us today. थैंक यू सो मच सर. आप वेटरन लिखे तब से मैं दाढ़ी थोड़ा बढ़ा के रख दिया था कि यार थोड़ा वेटरन लगूं. कितनी भी दाढ़ी बढ़ा लो यार, वो 12-15 साल के ऊपर की उम्र जाएगी नहीं. So, so I'm going to now call on the screen uh, someone that a lot of people have been waiting to meet, and someone who has been in the news, especially this year, someone who has worked very hard to reach where he is. Please welcome Sachin Gole. Sachin Gole, I think Sachin, Sachin has not joined the stream, or has हेलो he? सर हेलो Sachin, you're हेलो here. सर Sachin, welcome to India Voice Fest थैंक यू 2022. यहाँ दर्पण जी आवाजें फिर मिलेंगी. जी कैसे हो आप सब लोग सचिन कैसे हो? बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. एंड सचिन, जी एवरीवन, आई थिंक सचिन के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा सोशल मीडिया, अरे पूरा देश सचिन की बात कर रहा है जब से केजीएफ की जो सीरीज आई है. एंड पीपल गॉट टू नो दैट सचिन इज द वॉइस ऑफ यश. एंड थैंक यू बट सर कमाल की बात यह है सचिन, आई एम श्योर मेरे से तुम अग्री करोगे इस बात के लिए कि लोगों को जी लगता है कि रातों रात सचिन गोले सुपरस्टार बन गया, पर लोगों को अरे ये नहीं नहीं पता सर कि सचिन गोले की ये रात 20 साल लंबी थी. है ना सचिन? हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल 20 साल तो नहीं यू नो 12 साल तो बहुत, लंबी थी लेकिन हाँ, तो वो बहुत होते हैं ना, तो ये जी मैं चाहता हूँ कि आज सचिन, आज आप इस सेशन के दौरान ये बात ज़रूर लोगों को कहो, स्पेशली जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो यंग आपके फैंस हैं, जो आपको बहुत जी इतना इंस्पायर फील करते हैं आपसे, उनको ये पता चलना चाहिए कि रातों रात कुछ नहीं होता है. और जी किसी भी पेड़ को जब काटा जाता है, तो उसके पहले इसको 100 बार उस पर वार होता है, उसके बाद जाके जी जी वो पेड़ कटता है. जी बैड बिल्कुल सर एग्जाम्पल बिल्कुल कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, बट कहने की बात ये है बिल्कुल कि बहुत वक्त लगता है, तब जाके रातों रात आदमी स्टार बनता है. सो जी सचिन सर जी obviously has been the voice of Yash, and also Dhanush Part 1, Part 2, Kantara. In fact, the recent Kantara, he has dubbed more than 2,000 South Indian films into Hindi. Can you beat that? 2,000 फिल्में सचिन ने डब की हैं साउथ इंडियन से हिंदी में. तो सुन के तो जी लगता है कि कोई 60-70 साल का शख्स होना चाहिए, इतना काम किया है, पर ऐसा है नहीं. और obviously then I mean there's no end. I mean look at this, his Money Heist में Denver is dubbed by Sachin. एंड ये जो फेरिस्त है, जो लिस्ट है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में लियोनार्डो डिकैप्रियो की आवाज सचिन ने दी है, और 200 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स को सचिन ने डब किया है. तो लाइक आई सेड, यू नो दिस वॉइस, यू नो देम. इनकी आवाजों को आप दिन रात सुनते हैं, एंड आई एम सो प्राउड दैट इंडिया वॉइस फेस्ट एक ऐसा मंच है जहां पर हम सब एक साथ में हैं. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आने वाले समय में हजारों लाखों लोग इस होपफुली इस सेशन को देखेंगे, एंड दे विल गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी सचिन. थैंक यू सर थैंक यू And now I would like to call upon Neha Gargava on the screen, please. Neha, hi. Hi, Darpan. Hello. Neha, it So is good so to be here. lovely to see you. It is so lovely to see you. What is amazing is, Neha, I've seen you as a rookie, and I'm seeing you as a veteran. And nothing gladdens my heart more than seeing where you have reached and what you have achieved. And as I was going through your profile, Neha, one very interesting thing that struck me was that Neha इस वक्त ड्रामा स्कूल मुंबई में थिएटर स्टडी कर रही हैं on scholarship. How cool is that? I think for you to continue your studies and for you to enroll to study theater, that too on a scholarship, is very commendable and very, very proud. Neha, as all of you know, Neha Gargava, very, very famous for being the voice of Nala in Lion King. And Neha has also won awards at India Voice Fest. India Voice Fest is the only platform in the country which celebrates excellence in voice acting, where any individual can take part and submit his or her work. And we've had the fortune of having some of the finest voice artists in the country being a part of the awards. And Neha is one of them. Iske alawa, Neha is the Catwoman in Batman. She's voiced lead characters in Black Panther, Red Notice,
and she's played Charlize Theron in The Old Guard. So, and Katie in Hobbs and Shaw, of course, how can I forget that? See, I've got the cue card here. It is not possible कि मैं याद कर लूं, क्योंकि आप लोग चारों को मिलाकर काफी पन्ने भर जाते हैं. जो अगले हमारे पैनलिस्ट आ रही हैं, उनका तो लिटरली इतना लंबा पन्ना है कि क्यू कार्ड में नहीं समाया. So welcome Neha, and now I'm Thank you, Darpan. Thank you. I just want to add one thing, that the reason for also mentioning about my study was that I wanted to discuss this and bring it up on this event. क्योंकि जो कर लिया है वो तो past है, and like you say you're only as good as your last job. So it is like dusted. But what are we doing right now, and what could lead somebody or us into future is something that we should talk about, which is what also India Voice Fest is all about. So this is the first time I'm sharing it here, and I'll be happy to talk about it. And thank you for having me here. It is a pleasure for me to begin with you and to keep meeting you at every milestone and be, talked with so much respect and love from you. It's a sheer honor. I just feel that I'm only an artist and I'm learning. I'm happy to get this kind of opportunity and space. That's Thank amazing. you. I love this humility, and keep this intact, and I wish the best for you. And हम लोग 11 तारीख को तो मिल ही रहे हैं सब. 11 तारीख को आवाजें फिर मिलेंगी. And अब मैं इनवाइट करूंगा ऑन द स्क्रीन उनको जिनका जो प्रोफाइल है वो इतना ज्यादा लंबा है कि वो मेरे क्यू कार्ड में नहीं समाया. केका घोषाल. Hello, hi everyone. केका हाय. केका मैं क्या करूं, ये ये मेरे क्यू कार्ड में समा नहीं रहा है, तो कहाँ से शुरू करें. केका की खास ऐसा बात ये कुछ है नहीं है. कल मैं किसके बारे में कह रहा था कि मेघना के बारे में कह रहा था. मेघना इज विटामिन ई, एनर्जेटिक. सो केका इज एब्सोल्युटली विटामिन ई रेज टू द पावर ऑफ 3 or 4, क्योंकि she's One of my a friends bundle of that day joy, was a saying bundle of me, enthusiasm. She can light up a stage with her voice as a singer, and she lights up a room with her smile, with her radiant smile. So Keka Ghoshal is again Thank you so a much. fantastic multiple award-winning voice artist and singer. Not only has she won awards, and she's won awards in singing, in fact. And she, by the way, Keka has won the Mirchi Music Award in 2020 for the best female vocalist of the year for the Bangla film Sweater. So that's how cool is that? How cool is that? And of course, she's sung for famous series like Mirzapur 2 and Bombay Begums, and she's worked as a voice for many TV commercials like Ole. Ole ही बोलते हैं ना, sorry मैं वो use नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं पता. Ole बोलते हैं ना. Ole and Pantene and Pond's, and she's also rendered the voice for the title songs of Saregama singing superstar Kitni Mohabbat Hai, and oh my god, the list is long. Gulal, Mahadev, and wow. And she's also the voice of Nairobi in the series Money Heist, so that's also very popular. And she has dubbed the Hindi and Bangla version for Ramya Krishnan in the series Queen. How cool is that? Wow. And she performs all over the world. It is absolutely our honor that we've managed to catch hold of Keka for this session today. Thank you so much. Thank you. And It's also let absolute me pleasure. also tell everyone, let me give everyone one more reason to be there on the 11th. Keka is going to sing on stage on the 11th in the grand finale. And Lovely. I've said it, और मैंने केका को बांध लिया है. अब केका मुकर नहीं सकती. नहीं, Incidentally, मैं she मुकर also नहीं sang रही in हूँ. 2019, and Keka is such a Yes. sport. I just have to call her, and I she's am always so much looking forward to How see you lovely. all. Thank you, Keka. Thank you, Neha, Sachin, and Vishal. I'm going to now stop blabbering and leave this forum to the four of you. Vishal is going to navigate this forum, and I'm looking forward to a fantastic session. And have a blast, guys. And thank you once again for joining. And I'll see you on the other side. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Okay, so welcome everybody to this amazing session that is going to be amazing right now. And so firstly, I'll have to tell everybody कि आप लोग इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, इतने like मैं जबरदस्त पहले कलाकार। मैं पहले नहीं, मैं पहले मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, मैं तो मॉडरेटर हूँ। मैं आप सबकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। थैंक यू Thank you so much. तो हाँ, Thank तो you, मैं Vicky. कह रहा था कि आप लोग इतने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं कि आप लोग के सामने मैं थोड़ा सा मॉडरेट सा आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैं आज मॉडरेटर हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं मुझे ये जोक अंदर इंसर्ट करना था। Okay. तो यस,
Sachin sir, Neha ma'am, and Keka, welcome everybody to this brilliant session Thank called as you. "You Know This Voice." Thank तो you. Thank Thank you. you दर्पण so सर ने much. तो Thank you. yes. So दर्पण सर ने तो एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो आई डोंट थिंक वी हैव टू गो टू दैट. But having said that, now I have many questions to ask you guys, and I'm sure it will definitely echo the questions जो audience को आपसे पूछना है, the viewers को आपसे पूछना है. तो let me start with the first question जो इस topic के बारे में है, जो है कि you know this voice. तो हम जो आर्टिस्ट हैं, हम जब डब करते हैं तो हम आर्टिस्ट भी जब डब करते वक्त बोलते हैं, अरे यार ये आवाज ही तो सुनिए, अरे ये जैसे 3 इडियट्स में बोलते हैं, अरे अपना फरहान, दैट वे. तो जब हम आर्टिस्ट तो करते ही हैं, पर व्हेन आवर वॉइस गेट्स टू द ऑडियंस, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू फील कि यार वी अराइव्ड, और यार हम वी मेड इट, या शायद शुरुआत हो गई है, या जो भी है. तो मुझे आप लोग से जानना है कि आप लोग का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट या वर्क था जिसमें आपको लगा हो कि यार लोग बोल रहे हैं यू नो दिस वॉइस, और आपको लगा होगा कि आई हैव अराइव्ड. केका, इफ यू कुड स्टार्ट. I think that should be Nairobi for me. Money Heist. And if you Yeah. could tell me how your project, what was your experience of Um, doing the project, और उसके बाद जो आपको प्यार मिला और आपको लगा कि अरे यू नो दिस वॉइस. Actually, I didn't know anything about this series, that it is like so famous worldwide and everything. I just auditioned as I audition every day. We all do. I mean, that is how. But after I got the part and after I get into this, then मैंने थोड़ा सा R&D किया, तो समझ आया कि ओ अच्छा, तो ये है. So then I felt really privileged that I am a part of this huge thing. और बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला. और या और सबसे बड़ी बात है कि रिकग्निशन की मैं बात करूं तो कभी कभी होता है ना कि सिंगिंग सेशन में रहते हैं, कभी कभी होता है कि मैं सिंगिंग का कोई परफॉर्मेंस कर रही हूँ, या सिंगिंग के सिलसिले में कोई लाइव चैट में हूँ, जैसे मैं आज हूँ वॉइसिंग के लिए. तो वहां पे भी लोग नायरोबी की बातें करते हैं. तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि नो, पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर. सो yeah, that happened. So for me, Lovely. Nairobi would be this. Nairobi. और वो तो epic levels पे है Nairobi, तो obviously as a character also it brings in a lot of responsibility एक तरह से तो. yeah. Lovely. नेहा मैम, अच्छा मैं बीच बीच में ना मैं एक एनेक्डोट बताऊंगा आप लोग सबके बारे में जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं फैन बॉय हूँ काफी आप लोगों का. तो नेहा मैम हैज बीन माय co-host in Rangoli, Doordarshan's Rangoli, and we've hosted on television. We've hosted 10 episodes. So I go back a long way, and मैम ने काफी मुझे वॉइसिंग में भी काफी गाइडेंस दी थी, और उसके बाद जब ये होस्ट भी किया था तो इट्स ऑलवेज एनलाइटनिंग. तो मुझे आपसे सुनना है कि आपका वो कौन सा मोमेंट था, और वो प्रोजेक्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या सीखने मिला और क्या प्यार मिला आपको. Thank you, Vishal. Yeah, like we share something special on screen. I think we always come together some way or the other. It's nice. Keka, Right. it's lovely to hear from you about your work. I mean, काफी enlightening. It's so much work you've done, and I think we all know that though we have heard of each other, या कभी कभी टकराते हैं, इतना मौका नहीं मिलता है कि एक दूसरे से ये सब बातें कर सकें. तो it's wonderful that इस platform पे we are able to do that publicly. Same here. That's lovely. Yeah. And coming to your question, Vishal, I think for me there are two projects. You're asking about the projects, right? I hope I have not missed the line of thought. You're asking about two projects. The project where you felt you know this voice, you arrived. Yeah, so for me, first one is obviously The Lion King. बहुत ही different था उसे dub करना. मुझे नहीं पता था कि who are the other cast. जब उसका marketing जब हो रही थी और जब poster आया, that is when I saw the kind of voices, because I dubbed on a Q scratch. तो reference track था, which Mona ma'am had done for me. And it was a very different kind of project, lot of security around it. तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि कास्ट क्या होने वाली है और क्या सब है. तो to know that I was casted among such veterans in the industry, इतने मंजे हुए आर्टिस्ट के साथ, शनाज मैम, आशीष विद्यार्थी सर, श्रेयस तलपड़े, oh my god, that was just another thing. मैं काफी टाइम तक numb थी, and I think a lot of people asked me also कि कैसा लग रहा है Lion King करके. I think I was numb to be able to respond at that time.
क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा असिमिलेट करने में that what have I become a part of. So that was Wow. huge for me. That touched me. And of course, and उसके बाद because the reach was so much, it's such a loved movie. इतने fans हैं, so a lot of people started knowing me. So this voice moment happened with this. And other than this, doing Piper Chapman in Orange is the New Black was just very surreal kind of a role. There was a lot of complexity in the character. There were like many seasons to it. So और बहुत बड़ी series थी और काफी काम था. So that was another Right. thing which really touched me. So these are the two projects I would say which shifted something in me. Lovely. And the love you received from people, did people go gaga? And how did they go? Yeah. I mean, with Lion King, it definitely happened. There was so much of tagging, talking about papers में बहुत सारा coverage था. So many people were, tagging me on Instagram and all that. So थोड़ा सा I was numb at that time because I had not experienced anything like this before and I had not expected it as well. So Right. it is a little puzzling and I think as an artist, मैं तो थोड़ा सा मुझे time लगता है absorb करने में. So, but it is nice. I mean, it's very sweet when you look back at it. So it's Correct. something for life. And yeah, it's lovely. It's a great experience. Lovely. Thank you, Neha, ma'am. I just want to add on one thing. Welcome. Yes, that please. as Neha said, I also did one of the most complex character in Orange is the New Black. जो मुझे लगता है कि आज तक का मेरा सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर था, मुझे करने में सबसे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, which is Suzanne Crazy Eyes. तो लेकिन the kind of recognition I was expecting about this series, people don't know that much about this thing, but आज तक का सबसे डिफिकल्ट काम था, मतलब it was one of the most complex and most intriguing characters in the whole show. So I my think to be God. casted for something like that, and you pulled it off so beautifully. I think people who Thank watched it you. would You be too. able to You did Piper, right? Piper Chapman, yeah. Awesome. Fantastic. Lovely. वो एक इंडस्ट्री की ऐसी सीरीज थी जिसमें सारे आर्टिस्ट यूज हुए थे, मतलब सारे आर्टिस्टों को काम करना पड़ा था। नारंगी महिला मंडल बोलते थे हम। 205 कैरेक्टर थे उसके अंदर पूरे के पूरे। I remember Kalpesh talking about people जिसके अंदर सारे आर्टिस्ट यूज हुए थे। हाँ, सही बोल रहे हो। कल्पेश मुझे ध्यान है बोलता था इतने 100 लोग कास्ट करने हैं मुझे, इतने 100 लोग कास्ट करने हैं मुझे, and he did it so सारी लड़कियां थी इंडस्ट्री की, सारी लड़कियां वहां पे काम कर रही थी उस टाइम पे। And also he pulled out a lot of people who were not so actively working at that point of time. 7 Everyone seasons, did so imagine. wonderful. Yeah. क्या बात, क्रेजी क्या बात। तो सचिन सर, आपका प्रोजेक्ट मैं बोल दूं? अरे क्यों नहीं, प्रोजेक्ट बोल दूं मैं? देखो आप उसी के बारे में बात करो आज। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज अगर आप मेरे Amazon प्राइम ओपन करेंगे मेरे अकाउंट का, और तो लास्ट वॉच्ड KGF होगा 2, और वो 3 सीन्स में से एक होगा, एक जहां पे वो कलाशनिका वो ट्रक से नीचे उतरता है, या वो पुलिस स्टेशन जाता है, या वो दुबई जाता है, और अब वो आपकी आवाज ऐसी चिपक गई है ना कि मुझे नहीं ऐसा रियलाइज हो रहा कि वो उसकी आवाज नहीं है। अच्छा, True. ऐसा लगता है कि यश ही सामने आ गया। अरे सर, मतलब आपने जो माई किया, ब्रदर इज हियर इन टाउन राइट नाउ, और वो दिन भर यही बोलता रहता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस। पूरा दिन वायलेंस। आप इतने छाए हुए हो सर सबके दिलो दिमाग पर। सर 500 crore ओनली इन हिंदी बेल्ट, ऑलमोस्ट 500, उससे भी ज्यादा ही हो गया था, उससे ज्यादा ही हो गया था, ज्यादा ही हो गया था। तो सर आपको तो यू नो द वॉइस वाला मोमेंट मैं समझ गया। आप मुझे बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा था, और आपको प्यार आज भी मिल रहा है, आई एम श्योर अभी मिल रहा है मुझसे, तो आप बताइए कैसा था। दोनों का बता दूं कि सेकंड का सुनना चाहेंगे आप? सब बताइए सर, आप सब बताइए, कंतारा बताइए, सब बताइए सर। अच्छा, फर्स्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब उसका ऑडिशंस हो रहे थे उसके, तो बहुत सारे आर्टिस्टों की वॉइसेस के ऑडिशंस तो हुए, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि बाद में जो प्रॉपर हीरो था यश, तो उसने बाद में कॉल लिया कि कास्टिंग मैं करूंगा, तो मुझे सारी वॉइसेस पहले सुनाओ। मतलब ये बात जब यश भाई डबिंग के लिए आए थे मेरी, तो उस समय उन्होंने सारी मुझे पर्सनली बताई थी कि मैंने तुम्हारी कास्टिंग की थी और मैंने 5-6 वॉइसेस सुनी, लेकिन मुझे तुम्हारी वॉइस ज्यादा पसंद आई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको मेरी वॉइस क्यों पसंद आई? तो बोले कि सचिन, तुम्हारी जो फिल्में थी मेरी की हुई, मतलब
केजीएफ से पहले उनकी 5-6 फिल्में मैंने डब की थी, जो यूट्यूब पर ओह! अपलोड थी। तो यूट्यूब पर ओके, जो अपलोड थी वो उन्होंने सुनी थी और उन्होंने कहा कि मुझे वो मैच लगी बहुत सारी, मतलब तुम्हारी जो वॉइस है वो मेरे मेरे कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा मैच है। तो मैं सोच रहा था कि तुमसे ही करवाऊँ वगैरह, ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। लेकिन क्या फिर भी बात है! उन्होंने ऑडिशंस इसलिए माँगे कि थोड़ा-सा उनको परफॉर्मेंस इसमें ये देखना था कि केजीएफ का जो उनका कैरेक्टर है, वो पहले की जो फ़िल्में हैं उसके अंदर तो उनका कैरेक्टर लाइक मस्ती भरा, रोमांटिक लड़का वगैरह ये सारी चीज़ें। इसके अंदर ऐसा था कि करेक्ट, पूरा अंडर प्ले और पूरी तरह से एकदम रफ एंड टफ सारा, तो उस हिसाब से उनको करेक्ट। वो वॉइस उनको थोड़ा-सा चेक करनी थी। तो उन्होंने कहा कि सचिन, इसलिए मैंने तुम्हारा ऑडिशन लिया और नो डाउट मैं तुमको कास्ट करने ही वाला था, भले ही तुम्हारा ऑडिशन ना भी लेता, तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। तो मैं क्या उसके लिए बात उनको है! थैंक यू बोल दिया और उसकी डबिंग के वक़्त तो ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लगा था कि 2 दिन में डबिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि गिनकर 35 से 40 डायलॉग्स थे उसमें उसके। राइट। लेकिन फिर बाद में जब यश भाई बैठे और प्रोडक्शन के कुछ हुँ। लोग बैठ गए, तो वो 2 दिन के कब 2 हफ्ते हो गए, मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि डेली एक बार आके एक सीन करवा लेते थे, फिर उसके बाद वो बोलते, "नहीं सचिन, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऐसा बोलो, थोड़ा वैसा बोलो", तो उसमें 5-6 घंटे बीत जाते थे। फिर मैं बोलता था, "भाई थोड़ा-सा थक गया हूँ, तो अपन कल करते हैं", क्योंकि अगर आपको अच्छे से फ़िल्म करवानी है तो बेटर रहेगा कि एक-एक सीन ही करा लेते हैं। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और लगभग 1 हफ्ता लगा डबिंग करने के लिए पूरा, और उसके बाद फ़िल्म वॉव! रिलीज़ हुई, अच्छी लगी। लोगों को भी अच्छी लगी, तो लोगों को अच्छी लगने के बाद फिर सेकंड के टाइम, मतलब मुझे पता नहीं था कि सेकंड के टाइम, क्योंकि ऐसी बातें उठ रही थी, यश भाई भी मुझे बोले थे बैंगलोर में कि मैं खुद डबिंग इसकी करना चाहूँगा। तो मैं बोला मोस्ट ओह! वेलकम, अच्छी बात है, करो आप। लेकिन थोड़ा-सा हिंदी में ध्यान रखिए, तो मैंने उनको कहा था ऐसे। तो बात ये हुई कि बाद में लाइक प्रमोशंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो थी, तो उसके अंदर वो इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं सचिन भाई, मेरा डबिंग का जो कारोबार है वो सारा आप ही सँभालो और आप ही उसका दारोमदार उठाओ। तो मैंने कहा ठीक है यश यश भाई, करते हैं फिर इसको। और फिर सेकंड की जब डब स्टार्ट होनी थी, तो उन्होंने कहा कि सचिन, हम इसको बैंगलोर में करेंगे, तो बैंगलोर में तुम्हें पूरे 15 से 20 दिन हमारे पास आना पड़ेगा। तो ओह मैंने भाई कहा साहब! सर 15 से 20 दिन तो सारी चीज़ें अभी सब सँभालना, सारी डबिंग्स वगैरह कैंसल करना। अब प्यार भी इतना मिला उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं सचिन भाई प्लीज़ आ ही जाओ तुम, आ ही जाओ। तो मैं बोला क्या बात चलो ठीक है, आ ही जाते हैं। और फिर डब स्टार्ट हो गई। डब स्टार्ट होने के बाद पहले के 3-4 दिन जो थे, तो उस समय तो मैंने सारी फ़िल्म डब कर ली थी। उसके बाद फिर यश भाई आए अगले हुँ। हफ्ते, उन्होंने सुना तो उनके बाद उसके बाद उन्हें लगा कि भाई थोड़ा-सा इसको और अच्छे से कर लेते, तो उन्होंने वापस सारी डबिंग पूरी की पूरी स्टार्ट कराई। तो मुझे लगा ओह! चलो अब तो मैं बच गया। उसके बाद फिर जब थर्ड सेशन, फिर बाद में खुद प्रशांत नील सर जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, तो वो बोले कि राइट। नहीं, नहीं मैं भी देखना चाहूँगा। तो फिर वो जब आए उसके बाद जो लंबा खींचा काम, अरे, अरे, वो अरे! काम तो अच्छा खासा लंबा खींच गया और मेरे 15 दिन के कब 2 महीने बैंगलोर में बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। बट Oh बड़ा अरे my मज़ा आया भाई उस चीज़ में। साहब! God. अरे भाई ऐसा है। साहब! हाँ, मतलब मैं बीच-बीच में जाता आता रहा, जो अर्जेंट डबिंग थी मुंबई में तो वो सारी मैं जाके करता था, उसके लिए उन्होंने मुझे राइट। बहुत सँभाला। तुरंत सुबह मेरी फ्लाइट की टिकट करवा देते थे और बोलते थे कि 1-2 दिन में तुम रिटर्न आ जाओ, क्या ऐसा है। बात है! तो तब तक दूसरे क्या कैरेक्टर्स की वो लोग डबिंग कराते थे। करेक्ट, करेक्ट। और सर तो ये लोगों का एक्सपीरियंस प्यार रहा। कैसे मिला? आपको ऐसे आते हैं इंस्टाग्राम पे सचिन सर मुझसे मिलो हाँ, हाँ। या जो भी है? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। अभी क्या, लेकिन क्या अभी बात! सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होता तो क्या बात अ, है! ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। जी, जी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, तो थैंक यू। अब सर मेरा दूसरा सवाल है जो मैं आप ही से शुरू करूँगा। जी, ये सवाल है कि क्योंकि आपने बताया कि आपके 12 साल हो गए, तो जी, अ, ऑब्वियसली आपने जब शुरू किया था तो आपको नहीं पता था पता था कि 90वें साल में या 8वें साल में आपको केजीएफ मिलेगा, 8वें 90 जो भी बिल्कुल, जंक्चर था। बिल्कुल। तो हुँ। एक आर्टिस्ट के लाइफ में पेशेंस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? लाइक क्योंकि हम आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल को कुछ पता ही नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, टू बी जी, जी, वेरी जी, ऑनेस्ट जी। कि बिल्कुल, हमको परसों काम बिल्कुल, मिलेगा या नहीं, कुछ भी नहीं आइडिया। बिल्कुल। तो सर आपकी लाइफ में पेशेंस का क्या इम्पोर्टेंस था और आप क्या बोलेंगे लोगों को कि पेशेंस के बारे में? पेशेंस रखना एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में पेशेंस ना हो तो आगे चल के फिर जो बड़े-बड़े काम आपको मिलने होते हैं, तो वो नहीं मिल पाते, क्योंकि अगर जिसने पेशेंस खो दिए, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो फिर भटक गया। ऐसा है कि अगर मेरी बात कहूँ, तो शुरू-शुरू में मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था कि यार, मतलब जब मैंने शुरुआत की थी काम की 2009-2010 की बात कर रहा राइट। हूँ।
काम मेरा शुरू हो गया था लगभग क्राउड में वगैरह सब में काम करता था उस समय, और बीच बीच में ऐसे लगता था कि यार अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स अपने को कब मिलेंगे, क्या होगा। तो मैं जो डायरेक्टर्स थे, डबिंग डायरेक्टर्स, तो उनसे जाके मिलता था, पर्सनली मैं बात करता था उनसे कि भाई मुझे अच्छे अच्छे कामों के लिए बुलाइए। तो उन्होंने राइट मुझसे एक बात कही थी उस समय कि सचिन, कीप द पेशेंस, आपका परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा ओके और इसके अंदर अपने अंदर ये लाइए, उसके बाद फिर हमको खुद जब लगेगा कि हाँ भाई अब आप कर सकते हो, तो हम आपको खुद इस कैरेक्टर के लिए बुला लेंगे। तो मैंने कहा राइट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए और आई थिंक 2009 में मैंने शुरुआत की थी, और मुझे 2014 में 2014 में मुझे धनुष की एक फिल्म मिली थी जिसका नाम था, मतलब हिंदी में नाम रखा गया था, मेरी ताकत मेरा फैसला पार्ट 2। तो ओके उसके अंदर मुझे एज ए हीरो का काम मिला था, और उससे हाँ पहले तो मैं साउंड एंड विजन में पूरा क्राउड ही करता था। ओके तो जब मेरे डबिंग डायरेक्टर के साथ बात हुई, जो कल्पेश डबिंग डायरेक्टर हैं साउंड एंड विजन में, हाँ तो उन्होंने कहा कि सचिन देख, तूने जब पेशेंस रखे, इतने पेशेंस रखे, तू क्राउड करता चला गया, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करता चला गया, और उसके बाद इतने पेशेंस जब तूने रखे और तू खुद को निहारता चला गया, तो अब कहीं जाके तुझे हम लोग हीरो के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि तू क्या कर बात लेगा। तो अगर आप पूछ रहे हो कि पेशेंस का क्या महत्व है, तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि पेशेंस रखिए। एक्चुअली वो पेशेंस मतलब ऐसा है कि आप सीखते चले जाइए। अगर आप सीखने पर अपना करेक्ट ध्यान दे रहे हो, तो वो पेशेंस जो है वो आपको कंटाला नहीं लगेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरा टाइम बीत रहा है, मेरा टाइम ये होता जा रहा है। पहले खुद राइट के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट लाइए कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि हाँ भाई, अब ये आदमी पूरा लोहा गर्म हो चुका है, अब इसको हम किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट मैं क्या भी मैंने बात है सही क्या जवाब बात दिया होगा। है अरे एब्सोल्युटली सर केका हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि यार आप यू नो यू सो आई नो सो मेनी पीपल हु यू नो जो अपने जर्नी में गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं नहीं हो रहा है यार लाइक और कितनी बार हम भी एक्सपीरियंस करते हैं तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस Patience is everything. Actually, I was always been a singer from my childhood. हम्म Dubbing happened to me very late in my life. इसके पहले मैं जब कोलकाता में थी, एक्चुअली आप मानोगे शायद कि हमारे एक्चुअली मैं मेरे बचपन की बात करूं तो, और मैं जिस जगह से हूँ, आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी स्मॉल टाउन। तो मेरे उतने एक्सपोजर नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि दिस इज एन इंडस्ट्री एंड यू नो पीपल वर्क हियर, पीपल गेट अर्न मनी आउट ऑफ हियर। मुझे कुछ पता नहीं था। So when I came to Kolkata, because my place is not even in Kolkata, my native place is 250 kilometers away from Kolkata. That's called Burnpur, Asansol. So I'm from ओके there. So Kolkata was itself a struggle for me, because that time roads नहीं बने थे, इतना कम्युनिकेशन रेनेसां नहीं आया था, इतना कुछ नहीं हुआ था। तो वो टाइम पे भी मुझे बहुत तो बोलते थे, मैं जब गाना गाने जाती थी, एड्स वैड्स में गाती थी, थोड़े बहुत गाने लगी थी बस, तो कभी कभी ओके बोलते थे ये 2 लाइन यहाँ पे है, मैच करके बोल देगी। आई यूज्ड हाँ टू से यस, हाँ बोल हाँ दूंगी। अच्छा ये एसमीज है, तुझे तो एसमीज बोलना आता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए थे, तो एसमीज बोल हाँ लेती थी मैं, अभी भी बोल पाती हूँ। ये बोल मैच करके बोल लेगी, हाँ ठीक है। एंड they never used to pay me and I didn't know even that I should have charged, and it is वाओ bakaida, it's a करेक्ट profession, I didn't know. करेक्ट तो when I came to Bombay, तो मुझे लगा कि मुझे जानकारी मिलती रही। बाय दैट टाइम आई शिफ्टेड टू बॉम्बे, आई केम टू नो दैट ओके दिस इज अ प्रोफेशन। सो मुझे लगा चलो करते हैं। तो जब मैं कोशिश करना शुरू किया मैंने, पहली बात तो हिंदी लैंग्वेज का कोई काम मिलता ही नहीं था। नहीं नहीं आप बंगाली हो यार, वो बंगला एक्सेंट आ जाता है। आई सेड नो बाबा, बट माय प्लेस इज वेरी क्लोज टू झारखंड। तो मैं आई ग्रू अप स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू राइट नो हियरिंग भोजपुरी एंड मैथिली एंड व्हाट नॉट। सो करेक्ट समझा नहीं पाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बीइंग अ बंगाली, बांग्ला डबिंग के लिए भी मैं किसी एक के पीछे 3 साल घूमी थी, सिर्फ एक वाओ लाइन बांग्ला डब करने के लिए। ओ हो
and everybody used to say like, no, you're a singer, तुम्हें डबिंग करने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, हो सकता है कभी कभी सिंगिंग शायद उतना अच्छा नहीं चले. मैंने बोला नो, बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स द थिंग इज आई लाइक इट, आई लव इट. मुझे बड़ा मजा Right. आता है, इसीलिए आई वांट टू गिव इट अ शॉट कि मुझसे ये हो पाता है कि नहीं. एंड आई रियली लव डूइंग इट. Right. दैट इज व्हाई मुझे ये एक बार देखना है करके कि कैसा लगता है. दैट इज इट. Right. तो rest, you know, and every day is a struggle, is a different struggle. So क्या बात we है all यार। do it. क्या बात है, इट्स सो इंस्पायरिंग कि सचिन सर बोल रहे हैं, आप जो लाइक कैसे किस रूप में पेशेंस आपको जैसे आपने लैंग्वेजेस के लिए दिखाया, जैसे सर क्राउड डब्स में करते गए मैंने भी किया क्राउड, बहुत किया. है ना? क्योंकि वहीं पे मिलता था ना एक लाइन बोलने के लिए. सर एक ऑडिशन Right. ले लो ना, सर एक Right. लाइन बोलने दो ना, सर मैं कर लूंगी, सर एक बार तो देखो, सर एक बार करने दो. हाँ. वो it happens, you know. Right. और जैसे केका जी को बोला जाता था कि भाई आपका बंगाली एक्सेंट आ रहा है, तो मुझे तो मराठी आपका मराठी accent. एक्सेंट आ रहा है. मराठी बहुत जगह सुनने में मिला, इतनी जगह कि मैं बोला ठीक है कभी तो सुधर जाएगा, Oh ठीक है देख लेते हैं. God, oh God, don't tell me. बट आई थिंक इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो डिस्करेज नहीं किया आप लोगों को, वो सुनना और बोला नहीं यार छोड़ यार, ये अपने को नहीं हो रहा, वैसा नहीं हुआ कभी आपको, दैट इज नहीं, ऐसा मेरे को तो लगा चांद है डबिंग इंडस्ट्री छोड़ देते, अपने से होने वाला नहीं है, ऐसा तो बीच बीच में आता भी था. नहीं, मुझे क्या लगता है विशाल, हम लोग बहुत ढीठ भी है. आप जितना बोलोगे नहीं देंगे, नहीं हो पाएगा, हम उतना बोलेंगे अच्छा ठीक है अब तो देख करके ही छोड़ेंगे, तो करके दिखाएंगे. हम ढीठ भी बहुत है मुझे लगता है. I swear. नेहा मैम, व्हाट अबाउट यू? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अबाउट पेशेंस एंड जस्ट ट्रस्टिंग? मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस, आप कभी अपने आप को, शायद मतलब मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, मैं कभी अपने आप को ये नहीं बोलती हूँ कि मैं पेशेंस रख रही हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप से कहते हो कि आप पेशेंस रख रहे हो, आपको लगता है बहुत बड़ा बर्डन लेके चल रहे हो. तो फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन कि टेक इट वन डे एट अ टाइम. ऑल्सो विद मी माई challenge has been, which has only made me better and only taken me in the right and up and above लेके गया है, वो ये है कि I started my voicing career and a family together. So Okay. for me that was like, I was starting out, I was doing crowd dubbing and everything, and then I was about to become a mother. I took thoda sa break, then again I worked for some time, I again took second break and I worked. So for me this entire thing, अगर मैं ये सोचती कि मैं काम कम कर रही हूँ और मुझे जैसे प्रोजेक्ट्स चाहिए नहीं मिल रहे हैं और मैं भी सिर्फ क्राउड ही कर रही हूँ, ये सब मुझे कभी लगा नहीं. फ्रॉम डे वन व्हेन आई found in vision, I always loved being in that environment, और वो joy is something that I used to look forward to every day. And I think Correct. that has not changed even today. तो Correct. वो काम का जो मजा होता है वो अगर आप चेस कर रहे हो तो हाँ, 10 साल बाद हाइंडसाइट में बोल सकते हो कि अरे मैंने बहुत पेशेंस रखा. मैं अपने लिए बोल रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता Right. मेरे लिए ऐसा बहुत वेट का ऐसा वो नहीं था मेरे लिए. और हमें किसी को भी नहीं पता होता है कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. बट इट्स जस्ट दैट बिकॉज यू आर परस्यूइंग दैट जॉय, यू इन द प्रोसेस ऑफ एंजॉयिंग योर जर्नी यू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड someday an Correct. opportunity strikes for which you're ready and you make Right. it, and then the word spreads. You know how word spreads in this industry. आप काम अच्छा करते हो तो लोग चाहते हैं आपके साथ काम करना. If you're an easy person Correct. to work with, then obviously there are other factors also. But I think that grounding really helps, and then yeah, you can look back and talk about it with sweet memories and you can say things like that. But it's the joy basically. So if Yeah, if somebody is absolutely. pursuing it, if somebody is pursuing voicing with the idea of catching a good role very soon, getting contacts, catching a good production house, and doing too many gigs in a short span of time, all that will serve futile if you're not ready. And readiness comes with Correct. practice, and you can only practice if you're enjoying it. So basically it boils down to that. So Correct. yeah, the journey has been long and beautiful, and I could do these, a family and work together because the industry and people are so wonderful. It has just supported me and pushed me higher and above. Yeah, Very true. that's Very about true. it. I think So I think they I think- just made it very easy for me, I would say. करेक्ट. ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप लोग तीनों ने एक ही एस्पेक्ट का जवाब दिया, पर सब अलग अलग पर्सपेक्टिव से आए कि Right. कि बिल्कुल. मदरहुड आया, एक लैंग्वेज रीजनल बैरियर्स आया. मतलब कितना मस्त लग रहा है यार कि मतलब इशू एक ही है पर उसके अलग अलग एक ही चेहरे हो सकते हैं. बिल्कुल, सबने अपना अपना Brilliant. एक्सपीरियंस किया है.
Exactly. क्या बात है, क्या बात. I think this is really insightful already. Barrier, for me, I will just point out one more thing that barrier हाँ जी. मेरे लिए एक और था जिसके लिए मैंने उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया इस बात को when I was in Calcutta. That is, मैं ये बात इस प्लेटफॉर्म में कहना चाहती हूँ. It's very important. Right. I have a problem which is a problem related to speech, which is stammering. I used to stammer Okay. a lot. And Oh. during my school time, my college time, I used to stammer way more than I stammer now. I also stammer now in few places. And Correct. that is negligible. But लेकिन उसको मैंने अपने आप पर काम किया. So ये जो vulnerability होती है ना towards आपका जो सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है बिकॉज स्पीच बोले तू जब गाती है तब तो नहीं होता है, तू जब बात करती है तब क्यों होता है? अभी क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ डिसऑर्डर. एंड हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर मैंने कहा ना कि नहीं था. पेरेंट्स भी इतने ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे. जैसे कि डिसलेक्सिया वगैरह के बारे में हम लोगों को पता चला बहुत बाद में, राइट? अभी वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. बट तब मैं हमारे वहां पे कौन स्पीच थेरेपी क्या होती है कुछ पता भी नहीं था. सो आई हैड टू वर्क ऑन इट. तो डबिंग ऑल्सो हेल्प मी डूइंग दैट. तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये भी चैलेंजेस होते हैं बहुतों के साथ. क्या बात है, क्या बात. इसको भी आपको लांघना पड़ेगा, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा. करेक्ट. मुझे आपकी बातें सुन के ऋतिक रोशन की याद आ गई. He also had the same thing. और आप लोग दोनों ऋतिक रोशन लेवल के फेमस हो, आप और ऋतिक. तो तो लवली. दैट्स एक्चुअली ये लोगों को और भी वो एक पर्सपेक्टिव दे देता है कि यार क्या कुछ हो सकता है. You know? I used to slap myself because of stammering because अगर कोई एक वर्ड अगर मान लीजिए वावल से शुरू हो गया ना, ए ई आ ओ ई, अभी भी होता है. एंड थैंक्स टू ऑल माय इंजीनियर्स दैट दे आर वेरी पेशेंट विथ मी इन सम प्लेसेस. क्योंकि मैं पहले ना बहुत आई यूज्ड टू फील वेरी शाय. यू आर अ वॉइस आर्टिस्ट एंड यू स्टैमर. सो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है सेल्फ एस्टीम का. तो बट एक टाइम मैंने सोचा कि यार इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है. सो लेट्स फेस इट, लेट्स बी ओपन अबाउट इट. तो मैंने बोलना शुरू किया कि ऐसा मेरा होता है. Kika, this wonderful thing you said about that you were tough with yourself. I just want to add a bit here कि self criticism जो होता है हम जैसे भी feel करते हैं, I think it is worse than any other criticism that can come from outside. And I hear so many, I see comments, people reach out to me and I can sense the kind of criticism that they have. I just want to say one thing here कि आप जहाँ पे भी जो भी आर्टिस्ट हो या लाइफ में कुछ भी परस्यू कर रहे हो, I would just say that हम कहाँ से आए हैं वहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक या C पॉइंट तक ही पहुंचेंगे ना. हम A पॉइंट से Z नहीं पहुंच सकते. अगर दूसरे आपको Z या Z1 पे दिख रहे हैं तो उनके माइलस्टोन से अपने आप को कंपेयर करके don't belittle the world that you're coming from. Maybe you came from a place where there was only Hindi medium, so you can't expect that you will come here and you will start doing English work. It will not happen. Of course, it is possible, but it will take some time. So, yeah, I mean, let's learn from Keka to be kind to ourselves. That will serve us and, help us bring out the best. And it's not something that we want to do for ourselves. Because as an artist, you cannot fake the feeling that you have for yourself. It will come in your work. So, this is something very special that you shared, Keka. Thank you. Yeah, my pleasure. I really wanted to point out this thing. That is why, because ये बहुत आम चीज है, होती है लोगों के साथ. मेरे घर में और भी 2 बच्चे हैं जिनके साथ स्टैमरिंग इश्यूज है. तो we deal with it. Right. But I think as artists we are थोड़ा in general self critical, क्योंकि आर्ट बहुत ही वो है ना, वेग है ना, तो पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से हम काफी सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं. बट आई थिंक वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट एंड सोचना पड़ेगा कि नहीं यार.
I want to say something, Vishal. I was just thinking about it that when you were, we were talking and we were discussing what are the kind of things that we would like to touch upon. And I think this tendency of looking at ourselves from the eyes of others, उसको हम कुछ Right. ज़्यादा weightage दे देते हैं, which only kills us. फिर हमको लगता है हमने इतना सारा turmoil क्यों झेला यार? Like we should have been able to get over it sooner. So उसका एक boundary है कि it is only limited to casting. That okay, not fitting the role. That means not fitting the role. Anybody can face that. It is not about us. So yeah, Right. this self criticism goes too long. I think थोड़ा objective Correct. रहने की जरूरत है हमें उसके लिए. Yeah. करेक्ट लवली लवली आई थिंक ये बहुत ही मजेदार सवाल था मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल है ना ओके तो मूविंग ऑन तो सचिन सर आपने बोला था कि आप किस किस तरह के काम हम करते हैं तो मुझे एक पर्सपेक्टिव चाहिए कि यूजुअली किस किस तरह के काम होते हैं वॉइसिंग में और क्या सब कुछ करना होता है या कोई लोग चूजी होना ज्यादा बेटर मानते हैं कि यार नहीं ये मैं ऐसे टाइप का काम नहीं करूंगा वैसे ही करूंगा ये बेटर अप्रोच होता है कि सारे काम लो जो काम आ रहा है उसको उठाओ ताकि व्हाटएवर तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट अप्रोच वो अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो मैं कहूंगा कि ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपने को खुद को ही पता चल जाता है मतलब शुरू शुरू में तो चलो जब आप न्यू आर्टिस्ट होते हो तो ऐसा है कि भाई चलो जो मिला कर लिया जैसे हमारी जब शुरुआत हुई थी 10 साल पहले 12 साल पहले तो हमको तो ऐसा था कि भाई जो काम मिले वो चलो शुरू कर देते हैं नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा और नए नए कैरेक्टर्स कैसे प्ले किए जाते हैं माइक पोजीशन कैसी होती है ये हमको पता नहीं था उस समय तो मतलब इतना बेसिक हम लोगों का कच्चा था कि ऐसा था कि उस समय तो चूजी होने का सवाल ही नहीं उठता था हाँ लेकिन राइट जब फिर बाद में करते 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 एक ऐसा लगने लग गया कि भाई अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ये बजट मुझे नहीं परवड़ रहा है या फिर मैं इसमें ज्यादा सूट नहीं हूँ या कभी कभी अगर ऐसी बात की जाए तो ऐसा भी होता है कि सामने वाले के नेचर के साथ भी अपना नेचर मैच हो कि भाई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ काम करने का मजा आता है कुछ कुछ लोग करेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनके साथ काम करने में उतना अच्छा नहीं लगता है मतलब कभी कभी नेचर का ये सारी चीजें मतलब ये मैं एक अपने करेक्ट पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ और अगर जी चूजी होने की बात की जाए तो यस एक सर्टेन आपकी जब लेवल हो जाती है तो उस समय तो थोड़ा चूजी करेक्ट होना ही चाहिए वरना करेक्ट फिर मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं उस चीज में तो थोड़ा राइट सा राइट चूजी हो जाना चाहिए लेकिन एक लेवल पे पहुंच जाने के बाद करेक्ट ऐसा है कि जब करेक्ट आप एक लेवल पा लो कि भाई अब मुझे ज्यादा लीड काम मिल रहे हैं या मुझे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं राइट तो उस समय फिर बजट को लेके और आपके काम को लेकर फिर आपको सामने वाले को प्यार से बोल देना चाहिए कि भाई मैं इतने में इतना करता हूँ और दूसरी चीज मतलब नहीं मैं ये कैरेक्टर्स अभी करना छोड़ दिया हूँ तो मुझे अभी कोई करेक्ट अच्छा ये रहेगा तो मुझे बुलाइए तो एक आपको खुद ही पता चल जाएगा अपने आप ही लगने लग जाएगा कि हाँ अब मुझे ये काम बंद कर देने चाहिए मुझे ये काम चूज करनी चाहिए मुझे इतना चूजी करेक्ट होना चाहिए ये अपना राइट एक्सपीरियंस ही बता देता करेक्ट करेक्ट है क्या बात है केकव जी आप तो दो लाइक सिंगिंग भी हैं सिंगिंग में भी हैं वॉइसिंग में भी हैं डबिंग में भी है और इन सब में अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हैं तो जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप चूज कैसे करोगे तो आप क्या करते हो व्हाट इज योर अप्रोच If I talk about dubbing, मैं सच बता रही हूँ विशाल, I really have to enjoy my work, whatever I'm doing. मैं राइट सिर्फ काम करने के लिए या सिर्फ वो काम करके पैसा मिलेगा या मतलब ठीक है वो कभी कभी होता है ना जैसे सचिन भाई ने कहा कि पहले पहले करते थे क्योंकि पहले पहले सीखना था अभी राइट जैसे नाउ द जनरेशन आर कमिंग जो लोग न्यू आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में उनके लिए तो बहुत अच्छा है दे हैव लॉट ऑफ पीपल टू गाइड देम हमारे पास उतना गाइडेंस नहीं था तो माइक फेस करने की बहुत जरूरत थी जितना माइक फेस करेंगे उतना सीखेंगे राइट जितनी डांट मिलेगी उतना ज्यादा सीखेंगे तो इसलिए तब चूज करने का ये वक्त नहीं था तो राइट जो मिला वो किए बट या मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं सिर्फ छापने के लिए काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि मतलब आप जस्ट जाओ बोलो आ जाओ कुछ उतना क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है बट मैं क्रिटिकल हो जाती हूँ मुझे परफेक्शन चाहिए तो परफेक्शन चाहिए तो फिर स्टूडियो टाइम फिर लॉट ऑफ थिंग्स सो
इसके लिए वो काम मैं थोड़ा सा एंजॉय नहीं करती हूँ, और बस और कुछ नहीं बाकी। लवली, या लवली। पर आई थिंक एंजॉय, आप जो एंजॉय वाली बात बोल रही थी, जैसे मैं बोल रहा था मैं सबके बारे में थोड़े एनेक्डोट्स बोलूंगा, तो वैसे आपके बारे में जो एनेक्डोट मुझे पता है वो था, मैं आपको पहली बार 3 साल पहले इंडिया वॉइस फेस्ट में, हालांकि मिला नहीं था, आई गॉट टू नो अबाउट यू, और वो या परफॉर्मेंस में आपने जो एंजॉय ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि हमको भी करवाया, बिकॉज आई रिमेम्बर द एनर्जी लेवल शॉट अप। आई वाज मैं नेक्स्ट डे आपको शायद क्यू लैब में मिला आई थिंक, और मैंने जी। आपको बोला कि यार क्या परफॉर्मेंस, और मैं तो मुझे पता, मैं यूजुअली ना पहले शुरुआत में ऐसे बात नहीं कर लेता, आई एम लाइक यार पता नहीं वो सामने वाला कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा वगैरह, बट दैट परफॉर्मेंस वाज सो Oh, इलेक्ट्रीफाइंग। I have started my career with live, Vishal. इट वाज So so live is like for me, मुझे कुछ हो जाता है। मैं कुछ कुछ आ जाता है मेरे में, माता आ जाती है, कुछ तो होता है। तो वो वो एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रीफाइंग ऑडियंस, हाँ, तो वो हो जाता है। और दूसरी बात करेक्ट एक और है कि वोकल कॉर्ड है, और वोकल कॉर्ड को आप यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। तो राइट मैं गाती भी हूँ, वॉइसिंग भी कर रही हूँ, और भी बहुत कुछ करती, कभी कभी सुपरविजन भी करती हूँ। तो राइट, आप थोड़ा सा बचा लेंगे तो हाँ इसके लिए अच्छा है। बेहतर होगा, राइट हाँ, राइट थोड़ा सा बेहतर राइट, होता है। हाँ। करेक्ट, लवली। नेहा मैम, व्हाट अबाउट यू, Yeah, किस I किस तरह think के काम uh, एंड का चूजी, सॉरी, चूजी वक्त क्रिटिकल फैक्टर होता है कि समय कितना है आपके पास और लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और एज एन आर्टिस्ट आप ग्रो कर पा रहे हो कि नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब मेरे पास चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आई ट्राई टू डू प्रोजेक्ट्स विच आर वेरीड एंड डिफरेंट and which is राइट something that will teach, or it is a kind of project that will teach me something or take me into a new space. तो मैं वैसी चीजें करना पसंद करती हूँ। फिर वो ऑब्वियसली टाइम आपके पास उतना ही है, 3 काम आपके पास अवेलेबल है, तो आप देखोगे क्या चीजें फिट हो रही है आपके स्केड्यूल में, दैट आई विल पिक अप एंड अदर्स आई विल एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम। सो दैट इज करेक्ट वॉट माई थिंग इज, एंड आई लाइक टू also have some space in the day for things that feed my work, that feed my life. So वो राइट मेरे लिए बैलेंस बहुत बहुत ज्यादा important है, not because I want to relax or chill, but also because that brings quality in me as a person, and it exposes me to different things. So वो एक space होना day में बहुत important है। तो बस that is my criteria, and whatever can fit the bill I pick up, whatever doesn't I feel that it is not meant for me. But right, and yeah, this happens that's to about it. this, and this approach of yours was even when you started off because you had to I manage did your not house. have this choice. No, no, because I did not have as much work at that point of time. I had a lot of Right, time then. So I would take up right, everything that came my way. I was also हम्म। learning. और जैसा कि केका ने और सचिन ने कहा कि तब उस वक्त का चैलेंज ये था कि सिखाने वाले लोग नहीं थे, लेकिन प्लस ये था कि समय बहुत था और आप ऑन जॉब सीख सकते थे, उसकी एक्सेप्टेंस भी थी, और प्रोजेक्ट्स भी इतने टाइट नहीं होते थे, इतनी टाइट डेडलाइंस नहीं होती थी। आई हैव माई सेल्फ लर्न सो मच ऑन जॉब, नॉट नोइंग व्हाट एम आई गेटिंग इनटू द स्टूडियो फॉर, गेटिंग ऑन द माइक, looking at people, learning and seeing, watching crowd and learning. So that is how I've learned. That was the right, positive then. आज positive ये है कि आपको ready होके आना important है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है। तो if you are ready, you can immediately start working. We know so many people 4-5 सालों में उन लोगों ने कितना सारा काम किया है because they were ready. और अब right. सिखाने वाले हैं, तो both the times have their pros and cons, and you just can't expect based on some other milestone दूसरे space and time का. I think it's very Very easy, true. नॉट सच अ टफ डील। हाँ, क्लाइंट साइड से किसी को ऑफेंड हो सकता है कि आप अवेलेबल नहीं हो किसी टाइम के पे किसी काम के लिए, बट आई थिंक यू Right, जस्ट हैव टू ओवरलुक इट, डस्ट इट ऑफ एंड मूव ऑन। एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर राइट, यू आर ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, आप समय correct, बचा नहीं रहे हो, आप आलस नहीं कर रहे हो, आप अपने काम में ऑनेस्ट हो, यू आर गिविंग द वर्क व्हाट इट टेक्स, आई थिंक यू विल बी फाइन, correct, वर्क विल टेक केयर ऑफ यू। या correct. तो आई थिंक द टेक अवे इज दैट एज अ बिगिनर आप कोशिश करें कि जितना काम ले सकते हैं लीजिए, और जैसे जैसे या आप प्रोग्रेस करते हैं यू जस्ट हैव टू, आपके हिसाब से जो सूट होता है वो आप बिल्कुल कीजिए। आज के बिल्कुल टाइम में तो थोड़ा सा हम ये भी बोल सकते हैं, लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ टाइम एंड सो मच एक्सपीरियंस दैट वी हैव ऑन बोर्ड, लेट्स फोकस ऑन लर्निंग फर्स्ट एंड नॉट हम्म। फोकस ऑन गेटिंग कॉन्टैक्ट्स, बिकॉज उससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे एवरीथिंग इज पब्लिक। आपने कुछ भी काम किया, एवरीथिंग गोज अराउंड, तो ऐसा बहुत कम हो पाएगा कि आपने कोई चीज करी, वो आपने अपने बेस्ट लेवल तक नहीं करी, एंड देन यू विल लूज राइट, आउट अ लॉट ऑफ पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स एंड वर्क दैट यू मे हैव अदरवाइज गॉटन if you have laid low for some time and just focused on learning. So let's take राइट, advantage of what we have today.
Yeah. Right, right, correct. So Neha ma'am, next question I'll start from you only. What what is the biggest misconception that people have about this industry? Like industry या voice artist बोलिए या artist बोलिए कि कुछ तो एक गलत फहमी जो आपको या मजेदार लगता है या क्लियर करना है आपको कि नहीं यार. Yeah. So I would say that it's a very common question ki have you met these big superstars, celebrities that we become उनके projects का जो हम part बनते हैं तो सबको ऐसा लगता है Right. कि आप किन किन से मिले हो. So because of the nature of work is such कि हर काम dubbing का काम isolation में होता है, आप अलग से जाके अपना काम करते हो और आप आ जाते हो. सारी मिक्सिंग प्रोसेसिंग वो सब चीजें बाद में होती है, तो ये सबसे बड़ा Right. मिसकंसेप्शन है और कई बार लोग पूछते नहीं है लेकिन अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हाँ. थोड़ा सा फनी हो जाता है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. या Any funny anecdote that you recollect? या इन लायन किंग ओनली आई लाइक शाहरुख खान से मिले, शाहरुख खान से मिले, शाहरुख खान से मिले. नहीं, मैं शाहरुख खान से नहीं मिली. शाहरुख खान से आप मिलेंगी तो मुझे प्लीज बुलाइएगा. मैं तो आई एम श्योर, बहुत बड़ा आई एम फैन श्योर योर लव फॉर हिम इज वर्ल्ड नोन. It's very evident, no? But you do, I mean you mimic him so well. Thank you. You do, I love it. Vishal. You do. Thank you. Thank you so much. Keka, what about you? क्या misconception आप कुछ funny सा कुछ आपको? विशाल, funny मैं बताती हूँ. During this lockdown only, few of my friends, few of my known people, and after lockdown also, they were like, सोच रहे थे कुछ अभी तो थोड़ा काम ठंडा है तो ये जो डबिंग शबिंग होता है ना वो करके देख लेते हैं क्या होता है. Oh my God! I can't tell you so many people say that. So that says it all, you know. Oh yes. So this misconception is very much out there that Right. dubbing shubbing कभी भी आप कर सकते हैं and it's very and जब आपका कोई काम नहीं है तो you can just give it a shot and see कि you know it's very जाते ही मतलब काम मिल जाएगा, झट से आपको कैरेक्टर करने को मिल जाएंगे. I swear, तो you can understand. अभी कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है misconception के बारे में. इस पे 1 घंटे का हो सकता है हमारा कि मुझे इसने बोला. Oh God, and I used to laugh so much. Right. Oh shit. ये तो सबके साथ हुआ. सचिन भाई आप बताइए. जी भाई, जब केजीएफ का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें जो पहली लाइन थी वायलेंस वायलेंस वायलेंस, हाँ. अब उसमें ऐसा था कि भाई चलो वो पहले टेक किया, टेक करने के बाद फिर बाद में उसकी मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद उस वॉइस के ऊपर जो भी काम किया गया बाद में मिक्सिंग में, तो लोग ऐसे बोलते थे भाई एक बार बोलो ना वो डायलॉग, तो मैं बोल देता था वायलेंस वायलेंस वायलेंस. नहीं वो वैसा मजा नहीं आ रहा, एक बार वापस बोल देना. बोला अरे भाई चल ठीक है ये ले. अच्छा ले भाई चल ठीक है वायलेंस वायलेंस है. अरे यार उसमें मजा नहीं आ रहा, काम करना वो फर्स्ट वाला माँ का डायलॉग बोल देना. मैं उनको बोलता था भाई डबिंग सामने माइक है, माइक के बाद मिक्सिंग होती है, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारा काम होता है, उसके बाद वो आवाज जब आप थिएटर में आपके कानों पर आती है वो आपको अच्छी लगती है. हम जो अभी यहाँ पर बोल रहे कि भाई चलो तूने बोलने के लिए बोल दिया तो मैंने बोल दिया, अब उसके अंदर तू परफेक्शन चाहेगा तो भाई चल स्टूडियो और उसके बाद पोस्ट में पूरा बैठ जा, फिर तुझे पता चलेगा क्या होता है. Oh God. और फिर डेनवर की हंसी तो कम से कम 1000 1200 1500 बार मैंने सबके सामने, मुझे तो ऐसा लगा ये क्या मेरा नेचर ही बन गया. जब देखो अरे सचिन वो हंसा, अरे नहीं सचिन कल जैसा हंसा था वैसा हंसना. अरे यार रोज ये बहुत सारी फनी चीजें मेरे साथ होती थी. ओह शिट, ये तो हाँ यार, आई थिंक ये ब्रिलियंट है. वैसे सुनाई नहीं दे रहा यार. करेक्ट. Sorry guys, I was moving a lot because my battery got drained and I'm just putting it on charge. No problem at all. Also on a थोड़ा सा सीरियस नोट पे एक आई थिंक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी होता है जो आई थिंक हमें मेंशन करना चाहिए कि ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज इट इज कॉल्ड अ वॉइस एक्टिंग और वॉइस ओवर इट इज जस्ट वॉइस. सो आई थिंक वो थोड़ा सा इसीलिए सबको ऐसा लगता है शायद कि आवाज ही तो है, पर एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारा कैरेक्टर वर्क, बहुत सारा वर्क होता है जो हमारे केस में डबिंग या इन सब चीजों में हम ऑन माइक करते हैं स्पॉन्टेनियसली. एक एक्टर तो खुद ही प्रिपेयर करता है, देयर इज कैरेक्टर स्टडी, देयर इज रिसर्च वर्क, कॉन्टेक्चुअल रिसर्च, सो मच वर्क हैपेंस, देन यू ब्रिंग दैट कैरेक्टर लाइव. विद अस
we are on mic, अभी script मिली है, वो ready हो रहा है और आप बस देख के पढ़ते जाते हो. To recreate that kind of thing, it needs a lot of study of characters and thoda sa intelligence and practice that ways. Voice comes Correct. last. Voice is an instrument that helps you bring it out. उससे पहले Correct. का it's all cerebral work, which I think थोड़ा सा बात नहीं होती है जिस बारे में. Very true, बिल्कुल, very true. बिल्कुल। Actually funny, जब मैं नौकरी करता था और मैंने जस्ट क्विट किया था, मैंने पेपर्स डाल दिए थे और तो लोगों को जानना था यार ये वॉइस ओवर है क्या, ये वॉइस एक्टिंग है, तो मुझे पूछते थे कि यार क्या ये वॉइस ओवर. तो मैंने कहा यार वो जो एड वैड में आप सुनते हो वही है. तो वो पूछ रहा था अच्छा तो तुम जब लिखते हो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लिखता. अच्छा तुम लिखते भी नहीं हो, तो बस बोल ही रही हो, तब तो आसान है बे, बोलना ही है, लिखा हुआ भी भाई। तो मैं सोचने लगा, क्योंकि मैं तो अब तक जस्ट पेपर डाला था ना, मैंने कहा हाँ यार इतना ही कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा ये हो गया, कुछ है ही नहीं टैलेंट, मतलब मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब सिर्फ बोल रहा हूँ, कुछ काम ही Exactly. नहीं है. बस ऐसे ही पैसे कमा रहे, कुछ नहीं होने. ऐसे ही पैसे कमा लेते हैं. भाई Oh my God, that's सही brilliant. बात है. लोगों को पता ही नहीं है ना, परफॉर्मेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है हाँ भाई चल हम भी बोल देंगे. Correct. हाँ. Exactly. मैं बात एक मपेट या ह्यूमन एंड पपेट शो में एक कैरेक्टर करती थी. ऑडिशन के टाइम पे ऑडिशन तो कर लिया, बट इट वाज जस्ट लाइक हाँ बोलो कैसे हो, इस तरह से. और जब वो करती थी ना, बैंड बज जाती थी गले की यार. Exactly. 150 लाइन बोलने के बाद मुंह से कुछ निकलता नहीं था. और Yeah. Hi Darpan. Hello sir. हेलो. जल्दी आ गए सर आप. I always say I'm the most हाँ, hated यार. guy because when I come on stream, people like अरे यार ये बंद करवाएगा. और किसी को नहीं चाहिए कि ये डिस्कशन बंद हो. मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर. And I cannot agree more with probably all of the things that you guys have shared, especially towards the end. Things like बोलना ही तो है. तो कल सचिन ने एक अच्छी बात बोली कि लोगों को लगता है कि ये आवाज़ जो सुन रहे हैं और जो टीवी पर देख रहे हैं, तो सचिन इसको लेकर हम सबके साथ ही होता है. कई बार गैदरिंग में होते हैं और किसी नई जगह होते हैं, कोई कहता है ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो लोग बोलते हैं कुछ सुनाओ ना यार. तो मैं उनको कहता हूँ कि यार एक काम करो, कभी आपकी गैदरिंग में कोई डॉक्टर होता है तो आप उसको बोलते हो चलना एक सर्जरी करके दिखाओ ना यार. सर आप अरे सिंगर का come on, दर्द Good one. सोचो. I'll borrow this. So- I'll borrow this. Exactly. Thank you. आप एक ये सिंगर बोलेंगे. का दर्द सोचो सर, सिंगर का दर्द सोचो. वो सिंगर का तो जहां दर्द जाएगा, होता है क्योंकि- अच्छा गा के बताओ, सिंगर अच्छा का गला दर्द खराब है, होता है. अच्छा फिर तो मतलब बहुत नकचड़ी है यार. मतलब सिंगर तो जहां जाएगा उसको गाना ही है. नहीं, और ये मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल. डांसिंग में होता है, ओह गॉड डांस करके दिखा. भाई दिखा ना, भाई दिखा. यार. सबके दर्द हैं, मगर क्योंकि हम what you're saying Vishal is right, since you dance so well and Keka since you sing, I understand absolutely, but क्योंकि हम बाकी 3 लोग प्योर वॉइस वाले बंदे हैं, तो हमारा बायस थोड़ा इस बात को लेकर है. जैसे एक चीज बड़ी रहती है कि अरे यार सुन के लगता नहीं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, हाँ. तो इट्स मतलब लाइक सेइंग कि किसी आदमी को देख के post-production लगता समझ नहीं कि नहीं लॉयर आता है हो, या ना. लगता नहीं देख के कि डॉक्टर हो, तुमको देख के Correct. लगता नहीं कि तुम एप्पल के सीईओ हो. तो उनको समझाना लगता पड़ता है तो कि जब हम माइक पर जाते हैं और जिस तरह से कैमरे के सामने लोग जाते हैं, तो सबसे खूबसूरत अगर शख्स को भी कैमरे के सामने मेकअप करना पड़ता है, राइट. Yeah. क्योंकि इतनी लाइट इतनी Right. हार्श होती है कि सबसे खूबसूरत चेहरे में भी पैचेस दिखते हैं. तो उसी तरह सबसे Right. खूबसूरत आवाज़ों को भी जब ब्रॉडकास्ट के लिए रेडी करना होता है, तो हमको कंप्रेशन यूज़ करना होता है, Right. इक्वलाइजेशन यूज़ करना होता है, ताकि आपकी बिल्कुल. आवाज़ की जो अच्छी क्वालिटी से वो निखर कर आए. पर आज बिल्कुल, तक दुनिया में ऐसा कोई माइक नहीं बनाए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाए जो आपके अंदर एक्सप्रेशन ले आए, अगर आपके पास नहीं है तो. So बिल्कुल, like हाँ. Neha so beautifully said, that it is not the voice, there is so much that goes behind it. And I usually Right. say, when I have these programs or trainings, I say it is not about the voice, it is about the performance of the voice, and which is so important. In fact, मैं जो questions देख रहा था guys, before we culminate this session, लोग बहुत प्यारे प्यारे comments लिख रहे हैं सबसे पहले. So thank you all 4 of you. People are thoroughly enjoying this session. मैं खुद personally I'm getting such amazing insights. I think एक चीज़ I'm sure आप सब agree करेंगे कि इस तरह का मंच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम एक दूसरे से सीखना हमने बंद कर दिया है.
हम कहने को वेटरन्स हैं, कहने को बहुत Very well एक्सपीरियंस said. उभरते Very हुए well said. कलाकार हैं। मुझे हमेशा लगता है कि क्यों ऐसा है कि जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो बडिंग वॉइस आर्टिस्ट है, उन्हीं को सीखना है। मुझे भी आपसे सीखना है, शायद आपको राइट भी हम में से किसी से सीखना चाहिए। सो इंडिया वॉइस फेस्ट जैसा कोई मंच होता है जो आई थिंक एक काम बड़ा अच्छा होता है इसमें कि हम कॉलीग्स एक-दूसरे को सुनते हैं और देयर इज़ सो मच टू Yeah. लर्न नो, सो इट्स अमेजिंग। एंड सबके Yeah. जो वेरिड बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस हैं वो पता चलता है कि यार कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है एंड व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल एंड हाउ यू नो वी आर गुड और बैड और व्हाटएवर आवर सिचुएशन इज वी कैन असेस दैट बेस्ड ऑन दैट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यू नो एक सवाल मैं देख रहा हूँ बहुत रेगुलरली पूछा जा रहा है कि हाउ डू यू गेट रिड ऑफ योर मदर टंग इन्फ्लुएंस? तो अभी जैसे अगर मैं बात करूँ, सचिन आप महाराष्ट्रन हैं, केका आप मूलतः आप बंगाली हैं, है ना? विशाल आपका आपकी आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है? मलयालम Malayalam. आई एम Malayalam. मलयाली मलयालम। व्हाट अबाउट यू नेहा? यस Hindi. हिंदी। For तो me, it's Hindi. हाँ, मेरी भी हिंदी है। मैं हिंदी में सोचता हूँ, भले ही मेरा 70% काम अंग्रेज़ी में होता है, पर मैं सोचता हिंदी में हूँ और हिंदी से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। हिंदी इज़ द लैंग्वेज ऑफ रोमांस फॉर मी, हिंदी और उर्दू। मगर आई एम श्योर आप लोगों की अगर बात करूँ तो ऑल ऑफ यू रिकॉर्ड ब्यूटीफुली इन हिंदी एंड सम ऑफ यू रिकॉर्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जबकि व्हाइल ग्रोइंग अप तो आपको नहीं पता था कि ये काम करेंगे और हम सबके घरों में हमारी वही भाषा जो जिस प्रांत से हमें है और उसका बड़ा गर्व भी होना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र हैं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ स्पीकिंग मराठी। पर अगर आप हिंदी कोई डब कर रहे हैं और वो एक नेशनल ऑडियंस के लिए जा रही है, तो सुनने वालों को नहीं पता चलना चाहिए कि आप कोल्हापुर से हैं या पुणे से हैं। उनको तो एक एकदम न्यूट्रल हिंदी आनी चाहिए। तो आप लोगों ने, अगर मैं सचिन आपसे कहूँ संक्षेप में, ब्रीफ में मुझे बताएं, हाउ डिड यू गेट ओवर योर दिस इन्फ्लुएंस ऑफ मराठी व्हेन यू स्पीक हिंदी? हम्म, मतलब अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो देखिए मेरा मराठी एक्सेंट बहुत आता था, लेकिन फिर ऐसा हो गया कि धीरे धीरे जब डबिंग करते 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 बहुत सारे डबिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि भाई तेरी जो हिंदी है इसके अंदर मराठी टच बहुत ज्यादा आता है, तो तुझे पर्सनली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो तेरा सबसे पहले तो डिक्शन सुधार के आना, और उसके लिए तो एक काम कर, तू हिंदी जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ा कर, और किताबें पढ़ने के बाद फिर बाद में मोबाइल में ऐसे रिकॉर्ड करना, वो लाइंस रिकॉर्ड करना और सुनना खुद ही कि भाई तेरा कितना मराठी एक्सेंट उसमें से गायब हुआ है और कितना हिंदी तेरा उसमें ये हुआ है। तो ऐसे करते करते काफी वक्त बीत गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गया। फिर रात रात को जब मैं डबिंग से घर पे निकल जाता था तो घर पे बैठ के प्रैक्टिस करता था कि भाई चलो अभी अपने डिक्शन पर काम कर लेते हैं। फिर धीरे 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 सुधारता चला गया, और लोगों को अपने आप पता चलने लग गया कि भाई हाँ, इसका भी मराठी एक्सेंट जो है वो कम हो गया है। और फिर मुझे वंडरफुल। बाद में अच्छे अच्छे काम थोड़े से ज्यादा मिलने लग गए, ये हो गया था। वंडरफुल सचिन। जी। यू नो सचिन, मैं ये जवाब जानता हूँ और मैं हाँ। कई बार ये लोगों से कहता हूँ, मगर जब आप लोग ये जवाब देंगे ना, तो जो देखने वाले सैकड़ों हजारों लोग हैं, तब उनके जी माथे में ये बात आएगी। क्योंकि ये मैं बोल बोल जी के जी। थक गया हूँ कि ये जो भाषा पे काम, भाषा पर काम करना एक अफेयर या वन नाइट स्टैंड नहीं है। ये टिंडर का की डेट नहीं है। भाषा पे काम करना एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। लॉन्ग यू टर्म हैव टू गेट रिलेशनशिप। मैरिड टू दैट लैंग्वेज। आपको, Yeah. जैसा सचिन ने कहा, उनकी दो बातें उन्होंने हाईलाइट की। एक तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की और दूसरा उन्होंने बहुत वक्त दिया। तो आजकल मैं देखता हूँ कई बार ना लोगों के पास प्रैक्टिस करने की तबीयत है, ना वक्त देने का मिजाज है। तो दोनों ही चीजें नहीं है और हम एवरीथिंग नाउ एंड टुडे। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसको 8-9 महीने लगते ही हैं। आपको जल्दी है तो 4 महीने में नहीं होगा ना, डजंट वर्क दैट वे। तो उसी तरह भाषा पर काम करना भी, अगर आप जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस इन्फ्लुएंस, बंगाली केका आपसे अगर मैं जानूं संक्षेप में, अगेन, हाउ डिड व्हाट डिड यू डू टू वर्क ऑन योर हिंदी? सर मैं पढ़ाई बंगाली मीडियम से ही की थी, बट अमेजिंग। ओके। मैं जिस जगह से हूँ वहाँ तो हिंदी बहुत बोली जाती है, बिकॉज इट्स वेरी एंड ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अप्रोच ऑफ झारखंड, लाइक स्टार्ट ऑफ झारखंड। मेरे घर से 40 मिनट्स जाएंगे तो वो धनबाद आ जाएगा। तो मेरी कभी भी एक्सेंटेड हिंदी नहीं थी, कभी भी नहीं अच्छा। थी। ओके। लेकिन हाँ, बीइंग फ्रॉम द बंगाली मीडियम, वेडनेसडे बोलती थी मैं सर,
मुझे बहुत देर तक पता नहीं था कि इट इज नॉट वेडनेसडे, इट इज वेंसडे। तो एग्जैजरेशन बोलना नहीं आता था मुझे, और भी बहुत सारी ऐसी जो प्रोनाउंसिएशंस है नहीं आते थे। बिल्कुल। लेकिन मैं उर्दू लैंग्वेज की मुरीद रही हूँ। मैं गजलें गाती रहती थी बचपन से। आई वुड पॉइंट आउट दैट सिंगिंग हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई वाज ऑलवेज बीन अ सिंगर। क्योंकि दोहे, भजन, गजलें जब गाते हैं आप, और मुझे बड़ा मतलब परफेक्शनिस्ट आप कह सकते हैं, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना अच्छा लगता था। कविता बोलती थी, बंगला में ही बोलती थी, लेकिन कविताएं बोलती थी और पापा सिखाते थे। कभी मैंने अल्ले बाबल्ले अल्ले ऐसे कभी बात ही नहीं किया। पापा यूज्ड टू ऑलवेज से साफ बात करो, तो वो था। लेकिन वही उर्दू सीखते सीखते, गजलें सीखते सीखते, आई गाना थिंक गाते दैट्स अ गाते वेरी नाइस वो, पॉइंट। या ये वो बहुत अच्छा पॉइंट है वो केका, वो क्योंकि हो गया। ये कई बार मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी इस बारे में जिक्र करता हूँ कई बार कि गज़लें सुना करो, उनके उनके मायने इंटरनेट पे मिल जाते हैं। एक तो जो लेयर्स होती हैं, जो सबटेक्स्ट होता है, वो समझ में आता है। पोएट्री है फाइनली, गज़ल पोएट्री ही है, कविताएँ सर ही हैं। अभी तो फिर भी इंटरनेट है हमारे पास। सर मैं हाँ, जब उस वक़्त तो इंटरनेट भी नहीं स्कूल की बात करूं तो मैं टिफिन टाइम में, टिफिन खाते वक्त बैठ के, थैंकफुली हम मैं जो स्कूल में पढ़ती थी वो सरकारी स्कूल था। सर साल के 21 रुपए लगते थे। वैसे स्कूल में पढ़ी हूं मैं, और तीन तीन मीडियम हुआ करते थे, हिंदी, उर्दू एंड बांग्ला। तो मैं बांग्ला मीडियम से थी, लेकिन थैंकफुली उर्दू मीडियम के लोग भी, हम लोग सब बैठ के टिफिन खाते थे। तो मैं बाकायदा डायरी मेंटेन करती थी, हर एक गजलें लिखा करती थी, और हर एक शब्द का मीनिंग मैं बोलती थी किताबें लेके आओ और मुझे जानना है कि ये इसका क्या मीनिंग है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एकदम मतलब क्लास साल सिक्स मत बताना केका, साल सिक्स और सेवन क्लास मत नहीं बताना। ये इंटरनेट पे लोग जो है ना, कौन ये बहुत जल्दी नहीं नहीं, आई मैथ कर एम लेते वेरी हैं। प्राउड अबाउट माय एज। सो क्लास सिक्स 5 6 से मैंने शुरू कर दिया था ये करना, क्योंकि मुझे हाँ, गजलें मतलब बहुत पसंद 2000 थी। दो गाइस 2005 2006 में क्लास 6 में इन्होंने ये सब करने की शुरुआत की थी। नहीं और नहीं नहीं नहीं। मुद्दे की बात ये है, आई थिंक केका जो आपने बोला उसका मेरे लिए हाईलाइट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, that you are very आई fond एम of wanting to know about the language. So this is another very important learning. जो देख रहे हैं लिख लो, ये लाखों करोड़ों की बातें सर, हैं। मुझे तो ऐसा लगता है और शौक कुछ होना चाहिए। लैंग्वेजेस मुझे बोलना आता था तो और अच्छा होता था। हाँ, मतलब बाकी आई बाकियों को भी काम लव करने दो ना केका, लैंग्वेजेस। बाकियों को भी काम गाना करने दो। गाने के लिए सर, गाना गाने के लिए आई लव डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिंगिंग इन No, डिफरेंट no, I लैंग्वेजेस, एंड obviously I understand, and इट्स सो that's मच फन। wonderful. Yeah, so the point here is that develop a fondness for learning languages. I think अगर आपको या शौक होगा या किसी चीज का, इस काम को एक शौक की Right. बहुत तरह शौक है मुझे। शुरू कीजिए। व्यवसाय की तरह मत शुरू कीजिए। शौक व्यवसाय या बन सकता है, पर शुरुआत बिल्कुल। व्यवसाय की तरह मत कीजिए। विशाल, अगर आपसे Right. पूछूं संक्षेप में अगेन, डिड यू हैव अ Right. Malayali twang in your Hindi earlier, or did you not have that? सो सर फनीली मैं हिंदी में बोलता, बचपन में मैं तमिल बोलता था क्योंकि मैं नानी के साथ पला बड़ा हूँ, तो माय मॉम इज अ तमिलियन। तो बट देन व्हेन आई ग्रू अप माय कजिन्स यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज दे वर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। तो मुझे बड़ा वो लगता था कि यार ये इंग्लिश बात करें, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय इंग्लिश। सो नाउ इफ यू आस्क मी हाउ इन व्हाट लैंग्वेज डू आई थिंक इन इंग्लिश। पर जब मैंने डबिंग की शुरुआत की, तो हम खेल रहे थे, बॉम्बे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मेरे दोस्त महाराष्ट्रन्स हैं, साउथ इंडियंस हैं। तो तो वी डिडंट हैव द लैंग्वेज, वी डिडंट हैव द राइट सिमेंटिक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो मेरे को भूख लगता था, मेरे को बारिश होता था, मेरे को कभी बारिश हुई, भूख लगी, ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे। और भूख भूख तो लगी नहीं, मुझे भूख लगती थी, भूख तो लगती नहीं थी। तो बिकॉज देयर इज अगेन दैट साउथ इंडियन फ्लेवर टू इट। तो मुझे याद है वन ऑफ माय स्वीटेस्ट डबिंग डायरेक्टर्स, शी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, शी यूज्ड टू से विश अबे मद्रासी भूख नहीं भूख। तो आई एम लाइक सॉरी मैम, once more you know. So I think the most important thing is कि discourage मत हो जाना, you know. राइट। कि अरे यार ये नहीं आता, मैं इंग्लिश ही करता हूँ, लेट मी स्टिक टू इंग्लिश। वो नहीं करना, लाइक वर्क ऑन इट यार। Correct. क्या है ये, मतलब इट्स जस्ट बेसिकली, अगर किसी ने बचपन से हिंदी में बात किया है तो वो आपका वो टाइम चला गया है, तो यू हैव टू पुट दैट मेनी आवर्स और मैन आवर्स और व्हाटएवर यू कॉल इट। सो वो Absolutely. करो, यू विल रीच समवेयर। इट्स स्टिल, आई एम स्टिल लर्निंग। मैंने एक हफ्ते पहले ये किया था, मेरा बैग कहाँ है, यू नो, I still have that
gender का thing, but then I don't stop learning. I Same, keep same. asking people ये Yeah. masculine है feminine है, you know, that way. So Same. I still learn. No, that's amazing. That's amazing. But Vishal, आपने बोला कि you know when शुरुआत में you had a problem with कभी-कभी gender वगैरह समझ में नहीं आता था. आप तो आगे निकल आए, आप तो ठीक हो गए हैं, आप तो फर्स्ट क्लास हो गए हैं. पर मैं तो अभी भी रेडियो पर सुनता हूँ. पर लास्ट वीक 10 दिन पहले जब वो कुछ इंडिया को कौन सा मैच हारी थी, इंडिया की टीम ने कोई मैच हारी थी ना, इंडिया की टीम Yeah. क्रिकेट में मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता. बांग्लादेश वाला. तो मैं आखिरी गाड़ी में वाला. बैठा और आई हियर दिस अमेजिंग वॉइस सेइंग जिंदगी में हार और जीत तो चलता रहता है. Yeah. Yeah, we do जिंदगी hear में it. हार at और least. जीत तो Yeah. चलता रहता है, ब्रॉडकास्ट ऑन Right. रेडियो. तो Right. ये हम इस गफलत में, इस गलतफहमी में नहीं रहें कि क्योंकि हम हमारी आवाज़ ब्रॉडकास्ट हो रही है तो हम सही भाषा ही बात कर रहे हैं. कई बार सुनने वाले को भी नहीं पता, बोलने वाले को भी नहीं पता, तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा हो जाता है. बट ऑन दिस नोट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू दैट फ्राइडे को, शुक्रवार को, वी हैव एन अमेजिंग सेशन on this very topic. It's a Hindi masterclass with Nupur Shukla and it's called फिर नहीं भाई फिर होता है. ये मैंने नाम रखा I फनीली swear. और मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा ये गलती लोग करते हैं आज भी. फिर बोलते हैं Right. फिर की जगह Yeah. तो फ फ भ Right. भ. तो आप लोग जो देख रहे हैं शुक्रवार को शाम को 6 बजे, डोंट मिस दिस सेशन क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं. Friday को we have this language Hindi language masterclass and Saturday we have the great Asif Ali Beg with a wonderful session Wow. on English and Love him. voice and speaking Lovely. skills. Lovely. So please, it is going to be an absolutely I am joining in fantastic, as a student. Please, Both. I Hey, think me all of too. us should do that all the time. It is amazing, no? It is absolutely amazing. Neha, आप Amazing. तो हिंदी भाषी हैं. Sorry, Neha, before I continue, guys, इसके बाद का जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है. समथिंग दैट आई बीन वांटिंग टू हैव एट इंडिया वॉइस फेस्ट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स. फाइनली इस साल हो रहा है. इट्स कॉल्ड द क्राउड वॉइस स्पेशल, क्राउड डबिंग स्पेशल. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका सहभाग और सहयोग और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. और राजश्री शर्मा, मीना नाहटा, रोहित प्रधान, रेणु शारदा, ये सब ऑलरेडी बैक एंड स्टूडियो में हमारे वेट कर रहे हैं. एंड आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमारा ये सेशन लंबा चल गया. बट प्लीज़ अलाउ अस सम टाइम क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा ऑर्गेनिकली अच्छा चल रहा है. सो एवरीवन प्लीज़ अकोमोडेट. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द 4 पैनलिस्ट्स ऑफ द नेक्स्ट सेशन हु आर वाचिंग मी एंड प्रोबेबली कर्सिंग मी कि यार ख़त्म ही नहीं कर रहा है. तो प्लीज़ 5-7 मिनट और रुक जाओ और फिर बड़ा मज़ा आएगा. आई एम श्योर यू आर ऑल्सो एंजॉइंग दिस. सो ऑन दैट नोट, नेहा टेल मी, आप तो हिंदी भाषी हैं, हम दोनों हिंदी भाषी हैं, Yes. तो Yeah. हिंदी को लेकर आपको तो कभी दिक्कत नहीं हुई होगी. तो क्या पर मेरा एक अंग्रेजी को लेकर experience इज इट है समथिंग जो- दैट यू हैव टू हाँ. वर्क ऑन? Absolutely. Good that you asked me. और इतना सारा मुझे समय मिल गया तो मैंने सोच लिया कि मैं छोटे उसमें कैसे बोलूंगी अपनी बात. I would just say to learn, listen, and to change, act. Now, when Sachin also said that मैं सुनता था अपने आप को, this is all his way of listening and knowing the right sounds. मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ. 10 साल पहले मैं एक स्टूडियो में अंधेरी में ही डब करने के लिए पहुंची. सीख रही थी और मुझे एड था वो एड और इट वाज समथिंग डिजिटल, आई डोंट रिमेंबर. सो इट वाज एन IVR and I had to speak a lot of stuff in English. मैं स्टूडियो में गई और माइक पर हूँ. 1-2 बार मुझे टोका गया and I was asked to leave the studio because the sound and the English was not coming as it was required. The way it was handled was very rude. I was very disheartened. But from that point onwards, it shook me because मैं ठीक ठाक काम कर रही थी और ये पहला कुछ बहुत ही भयानक सा मेरे साथ हुआ था where I was asked to leave the studio in the middle of the recording. The client was there and the recordist was there. एंड मुझसे हमेशा मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैं कंसल्ट करती थी, मुझे कहा कि ठीक है ना, तुम्हारी हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी पे काम करो, ऐसी चीज़ में क्यों काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं आती है, जो तुम्हारे लिए नेचुरल नहीं है. बट आई फेल्ट दैट लैंग्वेज ही तो है ना, सीखी जा सकती है. बचपन से भी तो सीख के ही करते हैं, कोई सीख के तो आता नहीं है. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पीपल, गुड पीपल अराउंड अस हु चेंज्ड दैट. एंड आई देन अंडरस्टूड दैट कोई भी भाषा सीखने के लिए आपको उस भाषा के साउंड्स पता होने चाहिए. अगर हम उन साउंड्स को लाइक अ थ्योरी समझ लें, हिंदी के साउंड्स मराठी के साउंड से अलग होते हैं. हिंदी में झ होता है या ज भी होता है, लेकिन मराठी में वो कई बार सिर्फ झ ही सुनाई देता है. तो हम अपनी भाषा के साउंड्स को लेके इतने यूज्ड टू होते हैं कि हम दूसरी भाषा के साउंड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. और दूसरी बात, हियर मी, या
और जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें सबको समझना चाहिए कि हमारा जितना भी स्पीच होता है वो सारी हमारी मसल्स से और हमारे ऑर्गन्स से रूल होता है। तो अगर हम अपनी मसल्स को दूसरे नए तरीके के साउंड्स बोलने के लिए ट्रेन कर सकें, स्पेसिफिकली वावल्स, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें, तो हम अपनी किसी भी भाषा के साउंड्स को ऑथेंटिक बना सकते हैं और फिर जब हम उनको भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑथेंटिक साउंड करते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच को मसल और लर्निंग और थ्योरी के हिसाब से समझे तो हम सब किसी भी भाषा को लर्न कर सकते हैं। एंड इंडियंस के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारी टंग बहुत फ्लेक्सिबल होती है, हम बहुत तरह के साउंड्स बोल सकते हैं बिकॉज हमारी भाषाएं बहुत रिच हैं। तो किसी को भी अगर ये लगता है कि वो किसी एक सर्टेन बैकग्राउंड से है और वो एक दूसरी लैंग्वेज नहीं बोल सकता, तो इस मिसकंसेप्शन को ड्रॉप कीजिए, क्योंकि ये सारा आपके ब्रेन का गेम है। अगर आप अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे, सुनेंगे और एक्ट करेंगे, यू कैन डू इट। सो nothing stopping you. And I'm able to work internationally now. I'm working with international voice artists, I'm working on audiobooks, and they call me because they like the language and the global accent that they are able to get, which would not have happened if I just started believing कि ये तो मेरे से होगा नहीं. So if I can do it, like anybody can do it. Yeah. Absolutely, Neha. Could not agree more. And obviously, the best way to learn a language is to listen. क्योंकि जब हम when we are born और जब 1-2 साल के होते हैं, जब हम बोलना सीखते हैं, तब हम कोई कोर्स तो नहीं करते हैं, तब हम हमारे आसपास के माहौल में, हमारे परिवेश में जो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर हम अब्जॉर्ब करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उस उम्र में हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो बहुत जल्दी सब कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी कहते हैं कि भाषा जितनी जल्दी सीखी जाए, अलग-अलग भाषाएँ, उतना अच्छा है। पर वक्त के साथ कोई उम्र की कोई बंदिश नहीं है, आप किसी भी उम्र में आप भाषाएँ सीख सकते हैं। तो ये कठिन एक पथ है, इट्स अ टफ रोड, और इसका कोई ईज़ी आंसर नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कितना भी आप पूछ लें हमसे, मगर इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। वर्षों की मेहनत है, कठिन परिश्रम है, और खुद को झोंकना पड़ता है इस भाषा के की आग में, और तब कर निकलना पड़ता है, तब जाके आपकी भाषा बेहतर होती है, शब्द साफ निकलते हैं। और आई थिंक हमारे सामने जो चारों ये इतने अच्छे वेटरन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट बैठे हैं, ये इसका प्रमाण है कि इनमें से ज़्यादातर अलग-अलग भाषाओं से उपजे हैं, और आज हिंदी में भी उतना ही काम कर रहे हैं। माइंड यू, मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ, हम हिंदी की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हिंदी एक इम्पॉर्टेंट भाषा है। हम हिंदी को एज़ अ रेफ़रेंस पॉइंट यूज़ कर रहे हैं कि आप सब मल्टीपल लैंग्वेजेज़ से आए हैं और हम एक कॉमन भाषा की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली आई एम एक्सट्रीमली प्राउड of every language that we speak, and in fact I always encourage people कि अपने प्रांत की, अपने राज्य की, अपनी मातृभाषा या जो भी आपकी भाषा है, घर की भाषा है, उस पर फ़ख्र कीजिए और हमेशा उस पर काम कीजिए। और बट एट द सेम टाइम आप जिस भाषा में काम कर रहे हैं वो सही बोलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वी इंस्पायर्ड पीपल हैं, वो कह रहे हैं, शख्स का नाम नहीं पता, कह रहे हैं 11 बजे तक चलने दो सर। ये अलग ही कुछ, इन्होंने अलग ही कुछ किया है आज। तो भाई That's the beauty तुमने of जो India Voice तुमने Fest. That's the मुझे beauty. कहना है भाई, तुमने जो डैश किया है वो हमको भी चाहिए। समझने वाले समझ गए। और दूसरी बात, किसी ने लिखा है कि रिजल्ट कब आएंगे, तो किसी ने जवाब दिया भाई रिजल्ट के लिए देख रहे हो क्या? तो रिजल्ट अगर आपका मतलब टैलेंट हंट के रिजल्ट का है, तो आज से हर अगले दिन हम जो क्वालिफाइंग एंट्रीज हैं उनको प्ले करेंगे और हमारी जूरी उनको जज करेगी। और 11 तारीख को अगर आप ग्रैंड फिनाले में आएंगे तो 11 तारीख को ही अनाउंस होंगे टॉप 10 फाइनलिस्ट, अगर आप टैलेंट हंट की बात कर रहे हैं तो। क्या बात करें मुझे नहीं पता, बट हाँ। और people are enjoying this conversation a lot. I can see a lot of people. Swati ji is there. Swati ji says very well said, Neha. Hello. And thank you, Hello, Swati ji, for your Swati love. In ji. fact, Hello, Swati ji is moderating a panel, I think tomorrow or the day after, I'm not sure. Hello, She's Swati. moderating a lovely panel with script writers and translators. Wow. So the whole endeavor of India Voice Fest is not to limit itself to voice artists, but all the stakeholders, including sound engineers, translators, dubbing directors, and audio producers, studio owners. So great. So guys, this was such a wonderful, ये तो मुझे इतनी मार पड़ने वाली है अगले पैनल वालों से, बट यार आप लोगों के लिए वो भी खा लूंगा। मगर Thank you. एक बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को वायलेंस बहुत पसंद है, Thank you, sir. तो Oh. जाते जाते एक वायलेंट सा कोई डायलॉग हो जाए सचिन की आवाज में। Come Please, on. So yes. everyone, ladies and gentlemen, Yes. Sachin Gole or Yash in the house. Thanks. Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me.
I can't avoid. सर ये था Woohoo! और कुछ क्या क्या बात बात है Awesome. सचिन Awesome. Thank सचिन you. people love it. lovely We can't help lovely it. और जाते जाते जी। मैंने सुना कुछ वक्त पहले कि हम में से एक है जो शाहरुख खान की आवाज बहुत अच्छी, Come on, Vishal. तो मैंने Come सोचा on. क्यों Oh, ना हम Vishal bhai, कि शाहरुख खान Come तो पता on, नहीं कब बोलेंगे Vishal. इंडिया वॉइस फेस्ट के बारे में. Why This don't has Vishal, to why don't happen. you speak to us in Shahrukh's voice and speak something about India Voice Fest? Let's hear it. Vishal Menon in the house. मैं तो बस ऐसे के उसके लाइंस बोल देता हूँ पर ओके लेट मी ट्राई. दर्पण सर एक सेकंड पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया वॉइस फेस्ट जो मंच है, आई मीन इट्स सो ब्रिलियंट. आई मीन बहुत मजा आता है यार. लाइक आई जस्ट इट्स सो इंसाइटफुल. और मैंने जो कुछ भी सीखा है वो तो सीखा ही है, लेकिन आप लोग से मैं कितना कुछ सीख लेता हूँ यार. बहुत इट्स I mean, I cannot tell you. It's brilliant. It's brilliant. Thank you, Darpan sir. I mean, it's superb. Really, thank you so much for this munch that you've created. I'm right. Yeah. Thank you. Oh my God, ये तो you really did munch the dialogues very well. But amazing, Thank guys. you. Thank you so much, Vishal, Sachin, Neha, and Thank you, Keka. sir. It was such a Thank fun you. session. It was the most beautiful Thank part was ऐसा लगा you. कि just a bunch of friends talking, having fun. And I'm looking forward to see all of you on the 11th. Time पे आ जाना 4 बजे से. और Yay. बिल्कुल Yes, sir. please be there and we're going to have a great time. So I'll see you all on the 11th. Thank you once again from all of us at India Voice Fest. और अब आप लोग तो बाय बोल दोगे, इधर मेरे को बहुत मार पड़ने वाली है. Goodbye. सर हम Thank भी you आ so जाएंगे. much, Darpan. It Bye. was lovely. Lovely Thank you, seeing, sir. lovely chatting with Thank you you, all. guys. Thank you, Thank Darpan. you. Thank you, Darpan. Thank you. Thank you. Bye-bye. हाँ जी, अब देखिए मैं अकेला हूँ. अब कोई बचाने वाला नहीं है मुझे, क्योंकि वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 30 मिनट्स बिहाइंड स्केड्यूल. हमको 7 बजे हमारा अगला सेशन शुरू करना था, 7:30 बज गए हैं. तो मैं अब बिल्कुल वक्त नहीं गवाऊंगा. एंड आई एम रेडी टू फेस द फायरिंग स्क्वाड, आवर नेक्स्ट 4 पैनलिस्ट्स. बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू get Anand to play a quick 20-second video of the next session, and then I'm going to come back with our panelists for the next session, the crowd dubbing special. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is India Voice Fest 2022, and we are about to begin the much anticipated session, the crowd dubbing special. ये मेरे बड़े दिल के करीब है ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक, और मैं अरसे से इंतजार में था कि हम कब इंडिया वॉइस फेस्ट में क्राउड डबिंग, द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ डबिंग के बारे में बात करेंगे. आप क्राउड डबिंग कहिए या फिर जैसा कि हम कहना चाहेंगे एम्बियंट वॉइसेस कहिए. और ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कुछ ही क्षणों में हम शुरू करेंगे इंडिया वॉइस फेस्ट 2022, produced and organized by Sugar Mediaz, main sponsor Sound and Vision Studios, associate sponsor Audio Magic, proud supporters the Arc Audio, C Sharp Recording Studio, Skylink Freight and Forwarders Private Limited, and Pedagaskar Spa. I am Darrpan Mehta, and I am supremely excited to welcome on screen the first panelist, my very dear friend, someone I really respect a lot, Rajeshri Sharma. Hello, namaskar. Hi, Darpan. राजश्री, आई सॉ यू बैकस्टेज. आप ऐसे कर रहे थे, मैंने कहा ये तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा है कि आप लोग इतना नाराज होगे, क्योंकि आधा घंटा we've literally मैं इसलिए कर रही थी कि इतना अच्छा सेशन आपका चला है पिछला, जो आप कोई बंद नहीं करना चाह रहा था. I was praying to God कि हमारा इससे बढ़िया हो जाए सेशन. शुरू हो जाए, भगवान शुरू करा दो. भगवान शुरू करा दो. आई गॉट दैट. शुरू होगा तो Lovely. कहीं पहुंचेंगे.
I know. Rajshri, thank you so much. And I'm sure you'll agree with me कि ये बड़ा important topic है और I'm very excited कि हम आप लोग क्या बातें करेंगे इसके बारे में और Rajshri Sharma, as all of you know, is a thorough, a veteran, stalwart voice artist. I would consider that you're first a voice artist and then the entrepreneur, the dubbing director, or the dubbing producer that you are. Rajshri and Tarun, her very, very charming, very soft spoken, very shy, very socially recluse, very hard to get. Tarun Sharma, if he's around, I want to say hi to him. I'm sure he'll run away. He's not around. He's not around. I'm in front of the camera. Rajshri and Tarun are this very, very beautiful couple. You fall in love with them the moment you meet them. They're very sweet, and they run Audio Magic, which is one of the leading audio production companies, especially in the content localization space. Some of the biggest projects in the country today are done by Audio Magic, and as you can see, this affable, charming, always laughing girl, lady, she runs that place, and people love working with Audio Magic. And thank you, Rajshri. Thank you for joining us. Thank you for always supporting India Voice Fest and also for this session. Always, always. And thank you, Darpan, for, calling out the crowd dubbing aspect, which has never been touched upon, जो बहुत ज़्यादा important है. I'm so glad that I'm going to be moderating this session. मैं सबसे बात करूंगी इस बारे में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. So I'm really thankful, India Voice Fest, Darpan, और आपने ये जो conceive किया ये session, this was much needed. Absolutely, absolutely, Rashri. I'm looking forward to a fantastic discussion. I'm going to call on screen the second panelist for this session, my very dear friend, someone जिनसे मैं मोहब्बत भी बहुत करता हूँ, उनकी टांग भी बहुत खींचता हूँ. Someone I really pull her leg so much. The one and only, the veteran voice artist, someone that I really look up to, Meena Nahta. Hi. Hi Darpan. Hi Rajeshri. मीना नाहटा guys, मीना नाहटा एक नाम नहीं है. मीना नाहटा is an institution. मैं जब इंडस्ट्री में आया था, she's gonna hate me for this, but मैं जब इंडस्ट्री में आया था, मीना नाहटा was a हम next name panelist को कि मतलब बुलाएं? she was like a name कि कभी आप उनको मिल पाओगे कि नहीं. She was that name. और दर्पण झूठ ना बोले, ये दर्पण सिर्फ झूठ बोलता है. even today, Meena Nahta is such a stalwart. She is the voice behind some of the most iconic characters over the last many decades, and still she manages to look not a day above 25. And she's always busy. She's always working. My joke with Meena is दो तरह के लोग होते हैं, एक जो बहुत काम करते हैं, एक जो बहुत मजे करते हैं. क्योंकि दुनिया का ये उसूल है कि संतुलन बने रहना चाहिए. तो मीना जो है पहले टाइप की है, मैं दूसरे टाइप का हूँ. तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया का संतुलन बनाए रख रहे हैं. So please, everyone, thank us. Bow down to us. Absolutely. I am always getting inspired by Darpan. And one question which I always ask whenever I meet him is, तुम कैसे कर लेते हो Darpan? कैसे कर लेते हो तुम? How does he do this and so seamlessly India Voice Fest? देखो मैं बताता हूँ कैसे करता हूँ. No. अब मेरी बारी बात करने की. He's got properties all over the world. He goes on trips. जैसे हम यहाँ से नुक्कड़ पर जाते हैं सब्जी खरीदने. He goes to buy property all over the world. And in the middle of the sea also, he's doing voicing. In his hotel room, he's doing voicing. When he's buying and he's signing the agreement papers of his property, he'll say, "Ek minute," and he's doing voicing. How? कैसे कर लेते हो दर्पण? Answer me. देखो मैं क्या करता हूँ. मैं दो चीजें करता हूँ. आपका पैसा मैं संभालता हूँ. और दूसरा बस आपके चरणों की धूल मैं माथे पे लगा लेता हूँ. बस निहाल हो जाता हूँ. So ये है मीना नाहटा everyone. And अब थोड़ा सा इनका औपचारिक इनके काम का विवरण हो जाए. और Meena Nahta, again, she's a stalwart for more than many decades now, and she's been the voice of behind ads for brands like Pantene. She's been the voice of hundreds and thousands of episodes of as the narrator's voice for Discovery, National Geographic, History TV, audiobooks. I think her list, the repertoire of her characters on OTT series for Netflix and Amazon Prime is endless. She's been a channel voice earlier for Z, Sony, and
She also has been the audio description voice. That's a very important segment, guys. Audio description voice for shows like Sacred Games, Four More Shots Please, Suryavanshi, and such movies and shows. And yeah, and obviously movies like KGF, Chandramukhi, she has been the voice for lead characters there. So that's Meena Nata for you. And more than anything else, she's the most sporting person ever. That's why I can afford to pull her leg, and we have this little banter going on all the time. Don't take us seriously. हमसे मजाक कर रहे थे. ये जो कह रहे हैं हर जगह प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है, कुछ शहर ऐसे भी हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है. तो she's not saying the truth. Yes, So so you इसी have to बात travel a पर little more after this, इसी बात after पर India Voice Fest. let's let's call on the screen the next panelist. I'm going to call upon Rohit Pradhan. Hello, hi. Rohit Pradhan. Rohit is a dear friend, someone I know from almost 2 decades now. And Rohit is a fantastic sound designer, very popular on Twitter. So you should follow him on Twitter. Yes, the same Twitter, Elon Musk wala. He's still there. So you should follow him there. And Rohit runs Mixbox Studios in Thane. And he's a fantastic sound designer. He's worked for I didn't know this earlier, that he's got a post-graduation from the University of Westminster in London in audio production. And he's the recipient of Filmfare Award for Achievement in Sound Design for his work in the Marathi film Reggae. And he's also an audio consultant. He advocates best practices for studio setups. That is something that I know because I regularly watch his Twitter feed, and he regularly talks about good practices for studios. And when I told him about this session for crowd dubbing, I think he was the first person that I spoke to, and he was supremely excited. He said that if there is one session that I want to be a part of at India Voice Fest, it is about crowd dubbing. He works with voices all the time, and I think his perspective as a recordist, as a sound engineer, as a sound designer is going to be very important. So, Rohit, thank you for being a part of India Voice Fest. Thank you for inviting me here. Thank you so much. Lovely, lovely. And I'm going to now call upon the last panelist on this session, the very, very charming, the always happy, gregarious, vivacious Renu Sharda, also known as the Grateful Chica on Instagram. Hello. ये रेणु शारदा का ये कौन सा, ये क्या अवतार है आज? ये तो संस्कारी अवतार. ऐसा क्या कर दिया इंडिया वॉइस फेस्ट ने? Parvati avatar. What is this Parvati avatar? See, festive है ना, fest है ना. So it's my Fantastic. festival. Lovely, Absolutely. lovely. Renu, guys, Renu is an absolute sweetheart. She is a fantastic voice artist, and she started off as a dubbing director, by the way, with Sound and Vision. And she's been a voice for many years. She is a Punjabi, as you can understand, because she is always laughing, always happy, and she's always gregarious. So she's a Punjabi, born in Bombay, raised in Gujarat, and she's been associated with the industry for more than 12 years now, and blah 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 blah. And oh, she's lent her voice for big projects like Deadpool 2, Scoob, House of Cards, Flying Jet, and the list is long. And the interesting thing about Renu is that Renu has been, like I said, a dubbing director as well. So I think that the fact that she has been a dubbing director and she is also a voice artist puts her in a very special spot when it comes to this topic. So I'm sure she'll be able to give us a very objective perspective from her earlier time as a director working with voices and today being one herself. And I'm going to be backstage and very excitedly going to watch the entire panel. And now I hand it over to Rajashri to take it forward. I'll see you guys on the other side. Bye-bye. See you. Bye. See you soon. Thank you. Thank you so much, Darrpan. Welcome everyone to this hot topic Hi. today. Thank you. About Thank you. dubbing. Thank you. Thank you, Rajashri. Thank you. So they say, दोस्तों imagine a situation where you enter a fish market. आप film देख रहे हैं, fish market का scene चल रहा है and it's silent. कुछ सुनाई नहीं दे रहा. सिर्फ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और मेन एक्टर एक्ट्रेस आ गए, अपना काम करके चले गए. और इमेजिन अ थिएटर जहाँ पर कुछ फुसफुसाती आवाजें नहीं आ रही हैं, ये आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं आपको, ऐसा कोई सीन चल रहा हो, या कोई ऐसा सीन चल रहा हो, कोई शादी जहाँ पे आवाज ही ना हो, कोई पार्टी जिसमें गॉसिप्स ना सुनाई दे रही हैं, तो कैसा होगा? This is what crowd dubbing, ambient sounds is all about. कि हाँ, ये जो आवाजें हैं जो पीछे से थोड़ा बहुत आपको सुनाई देगा, साइलेंट एयरपोर्ट इमेजिन कीजिए कि कैसा होगा. आवाज तो होगी ना, आप भीड़ भड़के वाली जगह पर जाएंगे,
आवाजें तो आपको सुनाई देंगी, तभी तो वो माहौल बनेगा, वो समा बनेगा। तो दिस इज व्हाट क्राउड डबिंग इज ऑल अबाउट। जब सिनेमा में या सीरियल्स में या किसी डॉक्यूमेंट्री में या फिर इवन छोटे एड्स के लिए आपको उस तरह का समा बांधना है, तब आपको क्राउड डबिंग, इन आवाजों की जरूरत पड़ती है, जहां पर इकट्ठा लोग आते हैं एक माइक पे, वो 3-4 लोग जब साथ में बोलते हैं, उसका जो समा बनता है, जो आवाजें आती हैं, उसे हम कहते हैं एम्बियंट साउंड्स या क्राउड डबिंग। तो जब ये फिल्म का, सीरीज का, एड का इतना जरूरी हिस्सा है, तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि कोई न्यू कमर आए तो चलो तुम क्राउड से शुरू करो। तो यानी इस तरह का है, सो इम्पोर्टेंट एंड सडनली इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये क्या चीज है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। एंड ये जो आज हमारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैनलिस्ट हैं, अमेजिंग पीपल अराउंड हियर, मैं इनसे शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मीना जी से पूछना चाहूंगी। मीना जी, दे से 2 इज कंपनी, 3 इज क्राउड। तो क्या यही Well said, very very well said. क्या यहीं You से know, your शुरुआत हो गई कि भाई ये सिर्फ क्राउड चल रहा है? तो ये चक्कर क्या है? हाउ डिड, आई मीन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद, क्या आपने ऐसे शुरुआत की थी? हाउ डिड इट, आपने कैसे शुरुआत की और आपका क्या इसमें नजरिया है? Okay, okay. Now, I started with ads, with ad films, lending my voice for ad films. Then I did FM radio and I did animation, Disney animation. Now, while I was doing these things, I was very fortunate to have started with ads and all, you know. So while I was doing these things, animation, Disney ke, Mickey Mouse, Chip, I was Chip in Mickey and Friends. So while I was doing these, I used to meet so many artists. So 1 or 2 artists asked me that तुम crowd करोगी क्या? I said, क्या मतलब? So they said, कल free हो या कुछ recording है? I said, नहीं, कल तो मैं free हूँ. This was my initial days, but I had already done a lot of ads and all, ads and animation and FM radio. I had one regular weekly program on FM. So I said, क्या मतलब इसका? So they said, तुम free हो कल पूरा दिन तो आ जाओ. I said, ठीक है, because I was very curious to know what is crowd. So they said, crowd dubbing करेंगे, आ जाओ. I went over there, and what I saw was there are 4 to 5 male artists and 4 to 5 female artists. It was some Hindi film, Indian Hindi film, and उसका crowd हमें करना था. And I was like blank. I said, पता नहीं क्या करना है, मुझे कुछ बोलेंगे बोलने के लिए, देखा जाएगा. But what I saw over there, I found that it is a wonderful, wonderful learning experience. You learn the ABCD of dubbings, recordings over there, how to stand in front of the mic, how to speak your lines, throw away all your inhibitions, leave them behind, and to be punctual. That is one very important aspect of crowd dubbings. They tell you to reach at 10, you will have to reach at 10 because the other artists are depending on you also. You all are going to dub or perform in a group, so they cannot start till all are there. They will not start. It is wrong. So you learn punctuality. You learn to how do you say, community, matlab, so many people, you work together, so you gain confidence, you know how to work with the others and in sync with what they are saying, and you also get to learn from them who are performing. I was a newcomer to crowd. I didn't know kya karna hai. So I was looking at them. I used to look at them, and then, like one of them, she used to nudge me and say, bol, aise bol, aise bol. So I learned it, and I learned so many things from there, which I didn't know when I was doing ad films. Ad films का क्या है? You do 1 line or 2 lines. Ads में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, and you come back. Right. Yes. So you manage to do. There are 20 takes, 30 takes. You manage to give out your best. But crowd में there are, I don't know how to express it. There are no lines also. There will be no script. Most of the times there's no script for crowd. They'll just give you a situation. Yeah. So it is hilarious also. They'll just tell you, the director and the sound engineer will just tell you that अभी ना एक market का scene है, हाँ, तो उसका कर लेते हैं. That is all. So you go over there and you just
you just wonder what to do. So then you'll see that your person all the females are standing on one mic, near one mic, and all the males will be standing on another mic. Generally 2 mics are there. So when you see the others, they'll just say that, oh, हाँ ये हम ऐसे करते हैं, तुम कैसे करती हो? So you just start answering them. You just start speaking to them. Sometimes it is that way. So you get to learn all this. So this is crowd dubbing. And what else did you ask me, Rajeshri? So you've experienced already. You were a part of I this. have done 3 or 4 films, just 3 or 4 films, but I learned a lot over there. Absolutely, yes. So I'd also like to ask Renu now about this. आप जब डायरेक्शन कर रहे थे, उस समय आपने डेफिनेटली क्राउड सेशंस कंडक्ट किए होंगे, डायरेक्ट किए होंगे, लोगों को बुलाया होगा. तो उसका आपका अनुभव कैसा? You had newcomers come into the session. So there's a lot here because I was learning also and I was interning at the same time. And I think I've learned from the best, like people like Kalpesh Parekh. He's a brilliant director. Shubhrato Ghosh, who is, I think he's an HOD in Sony now. They were so good. And when I would watch them conduct crowd dub sessions, they would be having so much fun, and I think that as a director especially, it is very important that all of us are having a good time as well, because crowd dub sessions last for hours, at times maybe 12 hours even. So that energy has to be there throughout. And so yeah, and also I think the artists that I worked with back then were again really amazing, like Bakli ji, Aditya Senior, Aditya Junior, Nilufar, Pallavi Jadhav, Feroz, Sachin Gole, and yeah, the likes. At times we would have a few You have so many names who started with this. Yes. And they're doing so well now. Yes. So it's always something to talk about. Yeah. And so in crowd dub, what happens is we also get few one-liners dubbed or one scene characters dubbed. It's not just ambient voices. So for those kind of characters, we would like somebody who is a little experienced, who knows what they're doing in front of the mic, because you can't be teaching everything to everybody. Right. So the scope of having new voices in every crowd session isn't much. Like you can maybe call 1 or 2 new voices if it's a crowd of 12 people. So yeah, new voices will take time. Again, it depends on their confidence level as well, their willingness to learn. वो जो willingness to learn है वो बहुत important होती है किसी भी field में actually. Yes. And unless you're interested, जैसे पिछले सेशन में सब बात कर रहे थे कि बस टाइम है, कुछ नहीं चल रहा है तो डबिंग ट्राई कर लेते हैं, अगर वैसा एटीट्यूड लेके आते हैं तो आप चाहकर भी उन्हें नहीं सिखा पाओगे, आप चाहकर भी उन्हें ग्रूम नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. और ऐसा भी हुआ होगा ना, इसने ये लाइन बहुत अच्छी बोली तो वो छोटा सा रोल जो है अगले सीरीज में हम इनको दे देते हैं. ये तो हुआ होगा डेफिनेटली हुआ है, बिल्कुल हुआ है. कई बार ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर होता है जो एंड में आता है जिसकी एक लाइन होती है, देन इन द नेक्स्ट पार्ट यू कम टू नो दैट इट्स अ बिग कैरेक्टर, इट्स लाइक अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर, so at times if the person has dubbed really well, they get that part. So yeah. Yes, so it's something to look forward to, guys. कि अगर आपको कहता है आप अभी नए आए हैं और आप क्राउड डबिंग से शुरुआत कर लीजिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अरे यार ये क्या बोल दिया. आपको इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है कि क्या बात है, चलो हम ग्रुप में रिकॉर्ड करेंगे, हम वहां से काफी सारी चीजें सीखेंगे. आपका नेटवर्क भी बनता है, बाय द वे. यू विल नो कि कहाँ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस को आप अप्रोच कर सकते हो. सो यू हैव टू टेक दिस पॉजिटिवली कि हाँ जी हम ये काम करेंगे. एंड जैसे रेनू राइटली सेड कि कभी वन लाइनर्स आते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, तो इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन पीस पास ऑन करना है, तो तब अगर आपको माइक के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि आप आइए, राहुल आप उठ के आइए या सचिन आप उठ के आइए और आप ये लाइन बोल दीजिए, तब आप वो लाइन सही तरीके से और विद प्रॉपर एक्सप्रेशन फटाफट बोल देते हैं, तो डायरेक्टर विल बी कन्विंस्ड कि भाई हाँ, इनको अब हम आगे बड़े रोल के लिए यूज कर सकते हैं. बिकॉज फ्रॉम अ प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये भी सोचिए कि आप जब
कहीं कोई चीज नहीं खरीदते हैं तो आप 10 सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तो एक प्रोडक्शन भी जब या डायरेक्टर सोच रहा है या कास्टिंग डायरेक्टर ये सोच रहा है कि हम आपको कास्ट करें या नहीं करें, तो ये एक तरह का ट्रायल सेशन हो जाता है कि भाई हाँ बहुत बढ़िया, इनको तो आता ही है, जैसा मैंने बोला था इन्होंने बोल दिया था। तो रियली अमेजिंग, वेरी गुड। और हम इनको आगे अगले बड़े रोल्स में कास्ट करेंगे। तो ये इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, आई से। विल यू एग्री एवरीवन? Absolutely. And like you Uh, said, Rajshri ji, that network banta hai. For me personally, after I started dubbing full time, I did जी crowd dubs for a very long time, like maybe for 2 or 3 ओके years. And हाँ that is when slowly and gradually people started recommending my names in different studios or for different projects. कि यस अच्छा ये ना शायद रेनू अच्छा कर लेगी, उसको बुला लो, वो अच्छा करती है, and all that. You know, it's like word of mouth. I didn't even राइट have राइट to ask बिल्कुल people कि please मुझे ना studios के number दो या whatever. It just राइट started flowing. So ग्रेट again, that willingness to learn and the passion for the craft has to be there. It has to be there. I Rajashri, agree, I agree. I feel, Rohit, yeah, yeah, I I feel, wanted to ask today, about the other side, Rohit, कि आप yes, उस I'm तरफ coming to that. बैठकर जब Yes, but more importantly, what points we have put forward now, I feel today it is very important for every artist, every voice artist to be an actor, because there's so much language dubbing happening. There's so many audiobooks, podcasts happening. I feel crowd dubbing is where they can start getting trained as an actor also. So when they come to the final stage of performing solo, they might be well trained, or at least 50% trained in acting skills, because they're luckily I have worked on projects where there have been elaborate crowds, like 100 people to 80 people, 50 people. So it yeah, and exactly. I wanted to ask you कि yeah, उसमें what was your experience like, technically how did you handle it? कि हम तो yes, जनरली देखते हैं we एक माइक दे दिया मेल्स को, एक फीमेल्स को दे yeah, दिया, but when there is a large group, तब आप yes. कैसे उसको हैंडल करते हैं? We'll take a case study here. The film is Thakre the film, which was a biopic on Bal Thakre. So ideally, he always had crowds in front of him, and huge crowds. Yes, So when I saw yes, the yes. first edit, I said that we need to have a elaborate and enormous crowd dub to do this. And eventually, looking at the sound palette that was in front of me, I figured out that we need at least 100 artists. Oh Now, my God. when it came to 100 artists, and we had to do the crowd dub in two languages, Hindi and Marathi, because the film was being going to be released in two different languages. So every slogan had to be written in Hindi, and every slogan had to be written in Marathi. So we had to take a crowd, we had to select 100 artists who would do both the languages. We couldn't अच्छा, separate that. So that was one thing. Secondly, then the next challenge was figuring out where we will do this. So the only place we can do this is Yashraj. There is no other sound stage in Mumbai which can accommodate 100 artists at one. 100 people And together. yeah, 100 people together. Yes, exactly. Then my challenge was time constraint. As Meena ji just said, that it teaches you punctuality. So my production had told me that we have Yashraj for 2 days, और हमें ये पूरा crowd करना है. And so what I did was, so the crowd director that time was the veteran artist Uday Sabnis. So Oh, Uday ji and me got into the studio, and we did a pilot track for all the crowd places. Wherever there was crowd, wherever there was slogan, we kind of did a pilot track. So he went in the dub room, and he just did his solo voice ki, for example, Jai Maharashtra. So he just recorded that pilot track, so that when we went to Yashraj, we had a pilot track of crowd ki yahan karna hai. Because only then, only if I was organized, I could organize 100 people. Otherwise, it is impossible. absolutely. Yes, So yes. once that pilot track was in place, then we did a mock rehearsal for 30 minutes with 100 artists. In the meantime, I had gone the earlier night to do the miking, because uh, one rule is, more number of artists, you cannot double the track. आप
4 मेल 4 फीमेल में आप डीटी कर सकते हो. आप राइट आप 100 आर्टिस्ट के साथ डीटी नहीं कर सकते. यू हैव टू और माइक, यू उसकी नीड टू बात ही कुछ और है, उस एनर्जी की यस बात ही कुछ और है, तो 100 एग्जैक्टली. लोग साथ में कुछ बोलेंगे. Yes. So you need to have multiple mics there. You cannot ask them to do a DT. They will not. It is not technically possible, and it will phase. So ideally, then, so I did the miking. We so we recorded that crowd in surround sound. So there was a 5.1 microphone. There were almost 4 boundary microphones. There was a decatry which was in front of the hall and back at the back of the hall. So we were recording. Almost 20 tracks together. Oh my God. So that was the amount of microphone placement that we had done all across the hall, so that we don't miss out on anything. We don't miss out on the energy. We don't feel the need to do a DT, because Right. with that, so that was how we actually orchestrated the whole thing, and it was a great experience. We managed to do everything in 2 days. There was nothing that we left out, and all thanks to Uday sir, because he's such a veteran artist and he's such a Yes, senior guy. yes, yes. He was at the forefront of maintaining discipline, maintaining everything in the recording hall. So that way, we managed to do that with organization, because I feel 50% of the crowd dubbing responsibility is also on the sound design team. 50% is on the Absolutely. artist and the supervisor team. 50%, because today with tech specs, today with language dubs, today with international deliveries, you need to be all the more careful of how are you recording crowd. You cannot just put people in the room and tell them to do a murmur. Today, murmur doesn't work. You need to give each one lines, or the artist, like our panelist said, the artist have to imagine lines. Right. एक So yeah, I हब mean, भी होता था, पता है हमारे टाइम पे. आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल अ टर्म yes, कि या yes, फिर हब yes. चाहिए, हब. That is the term they use in UK. UK, the term for crowd dubbing is hubbub artist, or wala. Hollywood uses Wala. the term wala, वाला या WALLA. Yeah, Wala. because according to Hollywood, if you say wala 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 in continuous thing, it sounds like something is murmuring. So that's why. So yeah, इंटरेस्टिंग. that's why it is called wala. Yes, yes. And I also remember कि crowd कहते ही लोगों का चेहरा उतर जाता था कि क्या डबिंग करवा रहे हो crowd. और I अगर don't know why. नया जब शब्द I आया don't था know. वाला, तो किसी को समझ में नहीं आता था, तो वाला करना है, चलो वाला करना है, वाला करना है. ये Netflix. भी हो गया था थोड़ा सा. Yes. So मीना जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि a lot of people they start with crowd dubbing, then they move on to do major roles, फिर वो दोबारा इस तरफ नहीं आते. एंड कई ऐसे भी लोग हैं जो इसी को पसंद करते हैं, इसी में Yes. उनको मजा आता है और Yes. इसी को Yes. करते ही रहते हैं एंड इन्हें कुछ और नहीं करना है, ऐसा भी है. Yes. 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 तो Yes. मुझे ना Absolutely. touch Very upon true. that aspect Very true. कि ये हाँ You know, crowd dubbing is very time consuming. Generally shift system hota hai usme, so it will be 10 to 6 or beyond or whatever. So whether you have too many dialogues or too much work or no, you have to be present throughout the shift. There is no way you can go out, you can leave. So you have to be present. So if you have time, if you have that much time to give, then you can take part in crowd. Okay, that is one constraint. What happens is, once a person has learned the ropes and has moved to bigger things, moved to bigger characters, bigger projects, then one cannot give that much time for crowd. You cannot give a whole shift because you are doing maybe 3 to 4 recordings in a day. So how Right, can you do right. crowd? How can you give 10 hours or 9 hours to crowd? You cannot do that. हाँ, because So फिर that आपको happens. प्रोड्यूसर्स बुलाने भी लग जाते हैं ना, आपको मेन रोल देके Yeah. बुलाने भी लग जाते हैं, तो Yes, समय ही नहीं yes. So रहता. then Yeah. then that person will not do crowd. But Right, yes, I right. have seen people who are doing crowd since 20 years. And I failed to understand. Once I asked the dubbing director, I said, kya baat hai? I know this person, I'm seeing this person doing
crowd dubbings for 20 years. This person is a good artist. In fact, most of them are really good artists. So why do they do crowds? Why don't they go to a higher space, do character dubbings? So the reply that I got from the dubbing director was that, Meena, they are very happy. They are very content doing this. There is no stress involved in this because there are no dialogues. There is no, rejection. Hoga nahi. 99.99% of the time, there's no rejection because whatever you speak in front of the mic in a crowd dubbing, at the end in the film or the show, you will not, there is no clarity. You will not hear what the crowd artist has spoken. It'll be too low, too whisperish. So itna kuch impact nahi hone wala hai. So you're stress free when you're doing crowd. And Right. I call it, the most important thing is it is a picnic. So people who like picnic, and it is a paid picnic. So you're just going there, thoda bahut kar rahe ho, hasi mazak, you're meeting so many people, you're gossiping, thoda bahut mic ke samne you're performing, and you're enjoying yourself. There is no stress. But And in when a we lot do, of cases, it's paid at the end of the session also. ये भी तो होता है ना? yeah, cash mil Tell jata me. mostly. पहले होता Yes. था, Yes. अब नहीं And होता. when we do characters or when we do shows or when we do, bigger characters, some stress is involved. However much you are a veteran, or since how many years you're doing that, thoda sa to deliver, to live up to expectations, wo hai, thoda bahut hota hai. So that stress is there, which is not there. I believe that stress is not there when you're doing crowd. So maybe for that reason, people are doing it for 20 years. And of course, cash mil jata hai usi sham ko, which So we that I get think, maybe after 1 year. yes, हमारा तो लंबा लंबा एक cycle चलता है. But also, Renu, what do you think? People who moved on, जो बड़े बड़े roles करने लगे हैं, like if people, अगर आपने भी शुरुआत की हो, for example, crowd recording से, फिर आप अच्छे मेजर रोल्स कर रहे हैं, फिर अचानक आपको एक दिन कॉल आता है कि आर यू अवेलेबल फॉर अ क्राउड सेशन, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप मुड़कर जाना चाहेंगी, या आप ऐसे लोगों को जानती हैं जो दोनों चीजें करते हैं? Oh yes, yes. I know quite a few people जो अभी भी दोनों चीजें काफी हद तक मैनेज कर लेते हैं. So what Correct. happens is, Okay. in my past experience as well, when I started doing ads in Punjabi and Gujarati, तो ads आया करती थी. अब ads हाँ. के लिए आप मना नहीं कर पाते हो, because that's quick money. And like Meena ji said, एक दो lines Yeah. होती हैं, तो ज़्यादा काम भी नहीं होता. So I would tell the Right. coordinator or the studio कि देखो भाई, like I would communicate very clearly कि मेरे को ads का डब आया है, like I have to go for 3 Right. films. So either you adjust, let me go and I'll come back, or if you can call somebody, please do that. Like I wouldn't like your work getting affected because of me going away. So Right. Right. most Right. cases they would be, see again, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हो ना एक पॉइंट के बाद, उनको पता है कि अगर Right. ये आर्टिस्ट उनके सेशन में है, बहुत स्मूथली काम हो जाएगा, है ना? तो हाँ, I'll at one agree. I'll point, agree. Yes. yeah, so at one Yes. point I had reached that stage and they would happily agree कि ठीक है तुम जाके आओ, तो वैसे मैनेज हो Right. जाता था. But after a point ऐसा भी हो जाता है, like for me what had started happening is कि in most crowd sessions, the male artists would have a lot more work to do. Right. In big films, like I'm sure in films like Thakre and Mohenjo-daro, Ben-Hur, all these war kind of films, where the Right. men have to do all those big fight sequences and stuff like that, and we female artists would just keep sitting. उसमें मैं कभी कभी Right. इतना बोर हो जाती थी ना कि मेरे से जितना बेस होता था मैं उसमें जाके कुछ एक रिएक्शन दे देती थी बीच में, because I would get bored of sitting in one corner. like यार मैं काम करना है, मुझसे काम करवाओ please. so I know. तो मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यार I'm just sitting there half of the time and I wouldn't feel productive enough. और बिल्कुल. मेरे को ऐसा लगता था यार ये क्या बस बैठ के मैं बस थोड़े से पैसे लेके जा रही हूँ. I don't want to do this anymore. I would rather give that time and energy to other things. Yes. So Yes. yeah, Absolutely. but I don't think I would mind going back.
I've told this to Kalpesh that if you get me that old team for at least one project, you know, all those artists, मैं बिना पैसे लिए crowd करने आ जाऊंगी तेरे लिए सच में, you know, like that team. मजा भी तो आता है ना इसमें, मजा भी तो आता है, सब Exactly, साथ जैसा में मीना होते जी ने हैं. बोला, Yes, it's a picnic, paid picnic, yes, but ये yes, paid yes, picnic yes. करने के लिए तैयार हूँ. हाँ, I because feel I that, remember, yeah, I feel that, you know, there has to be some sort of organization from the supervisor and the sound designer, so that, you yes, know, this time what she was saying, the time wasting thing doesn't happen. Also, what she said was, yes, there were in 100 crowd artists, there were 20 females. So what we did was we timed them in such a way that they don't yeah, sit. We got them at a point where, because they were in selected scenes, so we got them at a point where they finish their work and they can leave, and then the males can continue or towards the tail end of the day. So we got it, we thought of all these things that, अरे यार हम सुबह से बुलाएंगे तो then, you know, they will be just sitting and they would not be That's doing nice. anything. Not So everybody thinks this way. Not everybody thinks this way. so, Yeah. so, yeah. so the Really nice. sound team and the supervisor team should get onto a table before, you know, you make the calls and you put the team together and see how everyone is going to be in a little comfortable situation, because you have 20 people in a room. It Right. tends to get a little overwhelming at times, you know, the many studios switch off the AC. So nowadays I've started selecting studios which keep the AC on Thank when you we are so doing much crowd. for doing that. So because, you know, at the end of the day everyone needs to be comfortable, you know, Right. so nowadays we are selecting studios where the AC is kept on, they have a centralized AC, so artists don't feel you know, tired by the end of lunch, or you know, Or exactly. claustrophobic. Like, ये yeah, छोटी like छोटी चीजें. people don't understand this. Yeah, It is because very इतने सारे लोग basic साथ कि में. Yes. इवन एक अकेला आर्टिस्ट भी जब होता है, अगर आप एसी ऑन रखते हो ना बहुत देर तक, देयर इज नो एयर सर्कुलेशन हैपनिंग, you know, so it does get claustrophobic, Right. it gets suffocating. So AC cooling से ज्यादा ना उस air circulation के लिए important होता है, you know. Only studios would understand Right. that, like quite a few Yeah. studios who still don't have ACs, or they have to, you know, switch it off when they're recording. So yeah. Understood. So Rohit, I'd like to ask you this. आप काफी सारा साउंड डिजाइन का काम करते हैं, ओरिजिनल फिल्म्स का काफी सारा काम करते हैं, जिसमें ये चीजें डिसाइड होती हैं कि यहाँ क्राउड होगा, इतने लोग होंगे, उतने लोग आएंगे, मेल्स, Absolutely. फीमेल्स, चैंटिंग वगैरह. तो ऐसा भी कुछ होता है कि आपके पास कुछ ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड साउंड्स होते हैं जो आप यूज कर लेते हैं कि भाई मार्केट सीन है तो मैं ये लगाऊंगा, या हर बार लाइव रिकॉर्ड ही होता है ये? The problem comes when it is language specific or region specific. Like if there's a Rajasthan market, I cannot use a library. I need to get it done. But if it's a Mumbai market, I definitely then will save the time and energy and cost on bringing in, you know, unless, you know, then I want to get into specifics of name calling. Like I don't know, this is a creative call, but I've done this and it works. That many times instead of murmuring, I prefer name calling. अरे रोहित थोड़ा यहाँ से पानी लेके आ. Madam, so you know, when you put names to in an apartment scene or in a market scene, it suddenly gets a little personalized. You know, you the audience gets into the narrative rather than just saying a line. So wherever I can use the ambience, I will definitely use an ambience. But when I want to get it customized, or when I want to add a narrative to it, or when I want to add maybe a, another story to it, or a language specific, then I will definitely use a crowd. I will definitely use original crowd. Okay, great, yeah. So there's always, मतलब ये तो कभी खत्म होने ही नहीं वाला है, ये तो सदा चलता Yeah. रहेगा. Absolutely. ये Absolutely. इनकी जरूरत पड़ती रहेगी डेफिनेटली. इनफैक्ट शायद ज्यादा जरूरत पड़े क्योंकि इतनी सारी भाषाओं में अब फिल्म्स बनने शुरू हो गए. जनता And बड़ी today the हो गई है. We are like what? How many of us are we? 800 million? I don't know. तो जितने लोग बढ़ गए हैं, भीड़ भी उतनी ज्यादा दिखेगी अब. इतनी ज्यादा. यस. So I feel that tech spec कोविड के today. दौर में था ना, शूट कम लोगों में हो रहा था तो बहुत कम लोग दिख रहे थे Yeah. फिल्मों में.
Yeah. अब it's come back to अब दिख normal. रहा है, There's अब no भरा shooting भरा bubble दिख रहा taking है. place. अब model की shooting चल रही है. So crowd is back Huge on. फिर crowds. से. Yes. हमने वो दौर देखा ना जब लोगों ने घरों में शूटिंग की. So there was the story was it was related to a very small family कि एक घर में हमने शूट कर लिया. फिर एक यहाँ छोटा सा दिखा दिया, एक सीक्वेंस होटल का दिखा दिया. तो वो Correct. कोविड के दौरान हुआ, अब तो सब कुछ हट गया है. So now huge crowds of people are back कि भाई बड़े-बड़े सेट लगाओ, बहुत सारे लोगों को बुलाओ. Exactly. Yeah. Sanjay Leela Bhansali and the likes are very happy again. Absolutely. तो ऐसा कुछ विशेष एक्सपीरियंस है आपका मीना जी क्राउड डबिंग के वक्त, या कुछ आपने सुना हो, या ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ जो आप हमें बताना चाहें? Yeah, I would say I learned a lot from crowd dubbings. I'll tell you a couple of instances. One is जो males के fight scenes होते हैं, I used to be fascinated to see them, the crowd people, the crowd artists doing the fight scenes. You know, there'll be a hero, there'll be a villain, but there'll be at least 20 other people in the fight scene. Hero अपनी dubbing करेगा, जो भी डिशुम 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 है, the hero will come and do it whenever. The villain will do his. And बाकी जो दूसरे 20 लोग हैं, the crowd artists do that. So it used to be fascinating to watch them, you know, वहाँ screen पर एक डिशुम and you're the artist, oh, you know, they used to do it so well. I used to feel that अरे ये crowd artist ही वहाँ screen पर है and he's performing so perfect कि जब एक घूसा पड़ा है, how he has to react, you know, it's different from जब घूसा मार रहे हैं. So that presence of mind, because the fight scene goes on, it's not that एक किया and रुक गए, जैसे कि normal recordings में होता है, you do one line and you can stop and then do the next line. But in fight sequences, it goes on for quite a long time. Stops होते हैं, but it goes on for quite a long time. So it's the presence of mind and the attentiveness of the artist to be able to give the proper reaction at the proper time. It is a fraction of a second, and they manage to do it in sync. That is a beautiful thing which I learned. Another thing is मैं अपनी थोड़ी सी तारीफ करूंगी इसमें. When I was doing a crowd, the scene was of a street scene था, road का. So we all were just told कि ये एक रोड का सीन है, तो जरा कुछ कर देना. You know, ठेले लगे हुए, food stalls आ गए, तो कोई खा रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसे कुछ भी आपस में बात कर सकते हो. And since there's no script, you can say anything, because finally it will not be so audible. I mean, at least उस जमाने में ऐसा होता था. So there was one pani puri stall. So while I just saw it and I just did, भैया बहुत तीखा है, इस बार थोड़ा मीठा डालना. I just said it, you know, जैसे हम पानी पूरी खाने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, वैसा मैंने कर दिया. After we finished that scene, the sound engineer, he came in and he said that, अच्छा वो किसने किया था आप में से, that पानी पूरी बहुत तीखा है, इस बार मीठा करना. I said I. He said, अरे that जो किया था ना, that was superb. I was so happy. So it is, you also learn to be creative. You get scope to be creative because there's no line. You're forming your own lines, your own expressions, and then when you get appreciation, you feel, oh, you've learned something. So this is my experience. Yes. Amazing. ये तो है. You have to be really creative and imaginative, innovative भी. चलो अच्छा, इस सीन में क्या बोलेंगे, वहाँ क्या बोलेंगे. Generally कई बार मैं लोगों को देखती हूँ, एक लाइन बोल के फिर रुक जाते हैं, फिर 4 सेकंड बाद दूसरी लाइन बोलते हैं. ऐसा नहीं होता है. So आपके तो कई अनगिनत एक्सपीरियंसेस हुए होंगे रेनू इस बारे में. तो बहुत सारे फनी इंसिडेंट या ऐसा कुछ हुआ है? Oh yes, definitely. So जैसे बोलते हैं ना कि क्राउड में लाइंस मैटर नहीं करती, कुछ भी बोल दो. I don't think it's actually true like every time. Because कई बार अगर आपकी, जैसे मीना जी ने कहा कि उन्होंने किया तो उन्हें इतना अच्छा लगा. So मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि I've just said something randomly, जैसे शादी का सीन है तो हर कोई साड़ी की तारीफ कर रहा है, मेहंदी की तारीफ कर रहा है, ये वो दूल्हा दुल्हन कितने अच्छे लग रहे हैं. एंड आई एम लाइक, ये न्यूडल्स अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब दिल्ली की शादी दिखा रहे हैं तो न्यूडल्स बोलते हैं वहाँ पे, तो न्यूडल्स अच्छे से लग रहे हैं ना. तो इंजीनियर ने या डायरेक्टर ने सुन लिया, लाइक ये किसने बोला था, लाइक अच्छा इसने बोला था, हाँ उस लड़की को माइक पे लाओ. तो वो अलग से वो लाइन बुलवा के हाईलाइट इट अ लिटिल, यू नो.
And I remember, Right. I think Sonam Kapoor की एक फिल्म है Dolly something where she's playing a con, I guess, and उसमें ट्रेन का सीक्वेंस था where I just suggested that ट्रेन में गाना भी कई बार गाते हैं ना, you know those beggars who sing and ask for money. So I was like, can we try something like that? So we're like, okay. So I started singing शिरडी वाले साईं बाबा in those वो जो ट्रेन वाली टाइप की आवाजें होती है ना, वैसे something like हो जाए शिरडी थोड़ा सा हो जाए वाले साईं बाबा आया है तेरे Wow. दर पे सवारी. Okay. तो हमने Superb. एक टेक वैसे पूरा कर लिया, ठीक है. Everybody's trying to control their laughter because you know it was hilarious. Then they said, अच्छा एक काम करते हैं, अब उसमें उनको फॉली भी डालना था, ठीक है. तो दे लाइक आप ना एक ऐसे रुमाल या कुछ पकड़ लो और जो बाकी के लोग हैं ना आप इसे घूमते घूमते गाओ और जो बाकी के लोग हैं उसमें एक सिक्के डालते जाओ. मैंने कहा अच्छा ये फॉली भी करवा रहे हैं अब हमसे. So we did another take where I'm actually taking money from everybody, and you know what? I kept that money for myself. I don't know because पता भी नहीं था ना किसने कितना दिया है. तो रिटर्न कैसे करोगे आप? So like हाँ ये मेरा आज का बोनस है, साईं बाबा का आशीर्वाद है ये मेरे लिए. So yeah, and also ना क्राउड में एक और बहुत प्यारी चीज होती है, आप दूसरों से देख के डेफिनेटली बहुत कुछ सीखते हो. Absolutely. मेरे एक्सपीरियंस में आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जानते हो, समझते हो कि ओके दिस इज माय फोर्टे, ओके आई कैन पुश माय सेल्फ टू दिस लिमिट. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा लगता था कि मैं हंस तो आराम से लूंगी माइक पे, मतलब हंस तो लूंगी मैं, बट माइक पे मैं रो नहीं पाऊंगी शायद. हाउ विल आई क्राई, यू नो, हाउ विल इट साउंड रियल? I will not be able to cry. Then I remember this one time, Guludi Urmila Chatterjee, she's a very experienced senior artist, as we all know her, and she told me, she's like Kujju. She calls me Kujju because I'm a Punjabi, you know, raised in Gujarat, so she calls me Kujju. So like हंसने और रोने में ना एक बारीक सा फर्क है. If you can crack that, if you can laugh well, you can definitely cry well as well. And I was like, okay, let me try it. So next time एक crowd up हो रहा था और उसमें एक morgue का scene था, ठीक है. And I was like, okay, I'm going to try something. So I went in like one far corner. I wasn't right in front of the mic. आपको वो समझ भी होनी चाहिए because मैंने जो करने की सोची थी, अगर वो मैं mic के एकदम सामने खड़े रह के करती तो बहुत ही गंदा take हो जाता. So I went in like one far corner and I started howling. You know, like जिससे मेरा सब कुछ लुट गया है. You know, a major part of my life has been taken away because it's a morgue and somebody must have just seen a dead body of, I don't know, a family member or someone really dear, and how she would express her pain through crying. It is not just, you know, ऐसे नहीं होता है. There has to be that, आपको फील करना पड़ता है. You know, you have to put yourself to that kind of an experience. And when I did that, we all got the team inside. They were like, this was a brilliant take, you know, because there were different layers. Like I'm sure this crying added a different texture, different layer to the whole take, you know. So I learned that about myself, you know, I can cry, I can do it. Yeah, And yes, you know, this has to, yeah, you Absolutely. some area which you probably wouldn't have explored if you were doing solo dubs. वो yes. मौका Correct. यहीं अरे पर आपको, मिला कि हम हाँ, कोने और में crowd जाके हम में- चिल्लाएं. हाँ, नहीं मिलता वैसा. और Yes. उसके बाद फिर रियल, मतलब जो छोटे छोटे मेन कैरेक्टर्स भी मिलते थे उसमें भी आई वुड बी कॉन्फिडेंट कि ये तो मैं कर लूंगी. Right. अदरवाइज मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं ये- होता शायद. यस, ये एक्चुअली इमोशंस वाला जो होता है ना, ये कई आर्टिस्टों को मैंने देखा है. जब आपको कोई चिल्ला रहा है या कोई रो रहा है या कोई जोर से हंस रहा है, तो वैसे ही तो हंसना है. ये थोड़ी माइक पे हो आप तो ऐसे करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं और- होगा. Definitely not. और पता है लाइक ऐसा बॉम्ब एक्सप्लोजन हो रहा है और कुछ लड़कियां ऐसे चिल्लाती हैं जैसे मतलब and I'm like, इससे ज्यादा जोर से तो कॉकरोच दिखने पे चिल्लाएगी, ठीक है, या बम फटा है. You know, so you have to give that crack in your voice. And I think I owe a lot for all of this also to Mona Di. She's been a brilliant mentor to me, and obviously the team at Sound and Vision back then.
who constantly kept guiding me, and obviously the other senior artists जिनको देख देख कर मैं सीखी हूँ, you know. And आप दूसरा कंटेंट देखकर भी सीखते हो. राजश्री जी गायब हो गई हैं, हमारे So मॉडरेटर we'll continue talking. We'll continue talking. Yes. I feel that, you know, for effort tracks, I have a small trick in my bag which I carry a resistance band. So many new artists, as you said, that, you know, they are not good with putting out effort tracks. I mean, you know, hello. Yeah. Is so what I do is I carry a resistance band, and this any artist can do. So when you just scream, it will be a very unnatural scream. But when you pull the resistance band and scream, it will be a very natural scream on the microphone. The one So that you- we use for physiotherapy is wo wala. Yes. So that is Oh, yoga, always in yoga. my bag when I But- do crowd conference. But Rohit, that's the beauty of actual artists. हमने ये सारी चीजें बिना in We don't Exactly. use props. We don't Absolutely. use We use props. our body, We like Meena ji yeah. said, we use our This- imagination. yes. Yeah. Exactly. You know? This is for that is only for new artists हाँ. who have maybe come for the first time First. and they don't know, you know, how to give a effort track. कैसे चिल्लाना है, कैसे रोना है, like you just said. Then you know that is a workaround. तो That कैसे रोने का कैसे वॉक अराउंड है, जैसे चिमटी काट दो उसमें से जाके. थप्पड़ मार दो. रोने का तो अभी तो रोना ही पड़ेगा ना उनको. जोर But से रोना tension ही नहीं. पड़ेगा और फिर Just आगे just बढ़ो. put them under some शायद pressure. रो देगी. Put them under some pressure. They'll automatically start crying. हाँ, Tell them you won't get your money. But there's- पैसा नहीं मिलेगा आज. They'll start crying. रोना चिल्लाना उसकी बात हो गई, बट व्हाट अबाउट सिंग. जब रोहित, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब चैंट्स होते हैं जैसे जिंदाबाद जिंदाबाद ये वाले जब शुरू हो जाते हैं, तो उसको हाँ. सिंक में आप कैसे करते हैं? यानी एक हम जब फिल्म देखते हैं तो हमें तो सब एक साथ ही सुनाई दे रहा है, बट हमें पता है Exactly. कि उसको एक साथ बुलवाने में कितनी तकलीफ होती है. So there's a workaround. So it depends on how it is shot. So if the Zindabad is the principal photography comes into action here. That if there's a master shot, you actually can do away without syncing it. If just one of the artists sings, if the first in the row, if we can bring them to sync, you know, just one of them, then everything else, the audience will not go into if the 10th one was in sync or not. Just one or two. So again, it depends on how it has been shot. If it is a close up, then they will have to sync. No, but If it is specifically a- for recording आप कैसे करेंगे? जैसे आप 1 2 3 काउंट देते हैं, अब बोलिए, वो कैसे एक Yes. साथ सबका कैसे सुनाई देता है? Yes. So earlier, there used to be markers on the screen. So there used to be 1, 2, and 3, and then you start. Normally, now what I do is I put that. I told you about the pilot track. In that pilot track only, I have a 1, 2, 3, and you go. Normally, and today with the technology that we have, syncing is not a problem. To be very honest with you, syncing is not a problem. In a couple of takes, they will come to a point where they will sync. Yeah, because it's like about 10 or 20 people अगर एक साथ बोलेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही साथ शुरू करें बोलना. पहले कोई दो Absolutely. लोग शुरू करते हैं, फिर दूसरे ज्वाइन करते हैं, ऐसा होता है ना? One or two rehearsals, and I think everyone will come into that whole thing of, you know, I recently did a series, Dahan, which is on Hotstar. So that for that we required crowd artists to do zombies. So that was something हमने very zombie के लिए कभी different. नहीं किया. हाँ, ये रह गई एक चीज. Okay. हाँ, So sorry. no one had a reference. So we had a trainer who trained them in zombie voices, and you know, I really hats off to everyone in the crowd. There were new faces. There were some seasoned crowd artists. Everyone, you know, the whole afternoon they were doing just zombie voices. And if you just look at the series and take that layer out now, or try to mute it in your head, you will know that, oh wow, this is something which, this is such a beautiful creation. This is so much hard work that has gone into creating this small things which was not possible if there was no crowd team. You know, there is no machine that can recreate a zombie walking on a street. No, there is no sound effect laboratory which can do that. It is only a good crowd team. Only a good crowd team can do that. So
this is the technical aspect. Do you think, Meena ji, we should start labeling them differently? कुछ हमें अच्छा दूसरा नाम सोचना चाहिए crowd dubbing का, जो सब लोग crowd dubbing बोलते हैं, अब वो Paid बदनाम हो pictures. चुका I है, don't मुझे know. ऐसा लगता है, क्यों पता नहीं बदनाम? क्यों. I don't know पता क्यों नहीं Exactly. क्यों. badnaam. See, there is Absolutely. one detergent which has tagline दाग अच्छे हैं. I say the same thing for crowd dubbing. Crowd dubbing अच्छा है. Right. Crowd dubbing बहुत अच्छा है. It is a Absolutely. wonderful platform where newcomers can come in and learn things, because it's a mixed crowd where there are seniors, where there are experienced people, and there'll be some newcomers. So for newcomers, it is a wonderful wonderful entry, wonderful step to learn. So crowd dubbing क्यों बुरा है? I don't know. I don't look down upon Absolutely. crowd dubbing. There is no film which can do without crowd. You know, Absolutely. I can't remember. I was just thinking yesterday, is there any film? I could just think of one Hindi film, Kaun, you know, Urmila Matondkar. Yes. I think that film may not have had crowd because it was entire film was about her, and shayad do teen, I don't remember now, I've seen it years back. So shayad that film may not have had crowd. But other than that, there is no film which जिसमें ना हो ये. whether इंडिया में और हॉलीवुड में जिसमें क्राउड ना हुआ हो. Crowd is an integral part of a film. So crowd dubbing is an integral part of dubbing. Absolutely. It's one wonderful thing जहाँ कुछ ना बोल के भी you are saying and performing. It is very difficult to perform where there are no lines. There is Yes. no nothing. It's actually like blind dubbing. कुछ नहीं है वहां पर. शायद आप सुनाई नहीं देंगे. That is the beauty of it. That you're delivering for something which is actually almost non-existent. अभी एक street scene. कोई lady pass हो रही है walking with her child, and you just think, you must say that अरे बेटा थोड़ा side में चलो. You know, these things are Makes so a small, difference. but they are so important and so Makes a beautiful. difference. They बिल्कुल. make a film. Absolutely. You know, all sorts. Absolutely. It takes I all so sorts agree. of characters to make a Yes. film. From Absolutely. a food lover's point of view, I look at crowd as salt in food. अगर क्या खाने बात. में नमक नहीं होगा, आप कितने ही मसाले बढ़िया डाल लो, बढ़िया इंग्रेडिएंट्स यूज कर लो, बिल्कुल नमक बिल्कुल. के बिना स्वाद Well said. नहीं आएगा. Yes, absolutely. Yes, और इसके कुछ absolutely. फायदे भी तो हैं रेनू, जब लोग शुरुआत Exactly. करते हैं इसके फायदे हैं कि at the end of the day you get paid sometimes immediately, या इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता जितना रेगुलर आर्टिस्ट को करना पड़ता है. And also And you know, when you're a income हो जाती है. newcomer, Rajeshri, I'll just interrupt you. When you're Yeah. a newcomer, you don't know how to stand in front of the mic, how to Yes. speak your lines, where to look. You know, at that time, you don't know that you have to keep your face a little stiff. And at the same time, your expressions, like people tell me, my God, your eyebrows go so high when you talk. But then my face will be stiff because I know I have to speak into the mic. थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वो ब्लो आएगा, you know, level नहीं मिल रहा है, ये सब आ जाएगा. So you Right. learn all these things in crowd. You know where to stand. They'll explain to you well, which after a certain point people don't have time. Sound engineers may not have time to tell you, yeah, ये words में blow आता है, तो you have to, tilt your face a little. You get to learn all these when you're seeing others, when you're observing, provided Absolutely. you're a good observer and a good learner. Right. You have to be these two. Absolutely. The You have to willingness. have that passion And to that there learn. was something very nice which even I like to share, because I have also been, believe it or not, part of one of the crowd dubbing sessions. और उसमें ये Oh. था, yes, बिल्कुल. They called, they asked कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर मूवी में हमें इंग्लिश वाला चाहिए, तो आप क्राउड डबिंग में शामिल होंगे क्या? तो मैं said हाँ बिल्कुल शामिल होंगे. It was done at Aradhana and it was for the movie Sur, जिसमें I Okay. also participated wow. in a crowd dubbing session. Yes, Nice. for the whole day. Nice और movie. उसमें मेरा बोनस एक मिला मुझे कि वहाँ पर जो लेडीज थी वो मेहंदी लगा रही थी. Can you believe it? Wow. अपने फ्री टाइम में Yes, वो बैठी थी एक चेयर पे और वहाँ पर लोग जाके लड़कियां जाके मेहंदी लगवा रही थी, तो मैं भी लगवा के आई थी. Wow. that was real She bonus was one icing of on the the cake. मतलब she was an artist, वो भी क्राउड डब करने ही आई थी. बट जैसे मेल्स का चल रहा है तो ये लोग चले गए अंदर वहीं पर कोने में और फटाफट लगवा लिया. मैंने कहा ये हो क्या रहा है? मैं पास जाके मैंने देखा, मैंने कहा तो मेहंदी लगाई जा रही है, फटाफट हाथ आगे कर लो. बहुत अच्छा टाइम पास.
सरकारी दफ्तर में सीरियल्स में दिखाता ना, मटर निकाल रहे, स्वेटर बुन रहे। So yes, यानी ये कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप सोच भी नहीं सकते। सोचा ही नहीं था कि कभी रिकॉर्डिंग करते हुए मेहंदी लगेगी हाथ में और स्टूडियो में बैठे होंगे और ये चीज चल रही होगी। So it's छोटी छोटी चीजें, ये एक्सपीरियंसेस जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। Absolutely. दिस इज वन थिंग आई से कि न्यूकमर्स आते हैं तो हम भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत लोग आके पूछते हैं, तो हम कहते हैं क्राउड से शुरू कर लो। अब तो लोग खुद भी बोलने लग गए, वो जान गए कि ये क्या चीज है, तो कहते हैं हमें क्राउड में बुला लीजिए, 1-2 लाइन के लिए बुला लीजिए। फिर उसमें जब कुछ प्रोमिनेंट लाइंस डब होती हैं तो पता चलता है कि अरे हाँ, जैसे रेनू राइटली सेड, ये किसकी आवाज है, जरा सामने आइए आप, तो पता चलता है ओ इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, इसकी आवाज ऐसी सुनाई देती है और ये बोल भी लेता है ठीक से, तो चलो इसको मार्क करो, वी कैन ट्राई हिम फॉर बिगर रोल्स। क्योंकि इवेंचुअली सबको करना है, कुछ ना कुछ मेजर रोल करना है, दे वांट देयर नेम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, सब इसी के लिए आते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग टू बी लुक डाउन अपॉन कि ये क्राउड डबिंग कुछ बहुत ही बुरी चीज है, ये क्या चीज है, इसमें लोग इकट्ठा जाते हैं, चिल्लाते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं है, उनकी भी लिस्ट बनती है। I swear, those people, oh my god, मुझे तो बहुत खुंदक आती थी उन लोगों पे। आई I नो, would वो सब actually- खड़े रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और फिर ऐसा लगता है आप क्यों आए हो जब हाँ, आपको and बोलना I ही used to नहीं। be like a teacher's pet, जाके मैम तो डबे नहीं कर रही, कब से खड़ी है, बस बैठी है, क्या है वो, जब भी हम चिल्लाने का टेक करते हैं तो बस वैसे मुंह ऐसे कर लेती, पर आवाज नहीं आ रही है उसकी। आवाज नहीं आ रही है। And I'm sure ये लंच के बाद के सेशन में ज्यादा होता है जब लोग थक पहले जाते भी हैं। कुछ लड़कियां नहीं, because they want to save their voice or what, I don't know, but they wouldn't। and उससे क्या फर्क पड़ता है ना, जैसे अगर रिक्वायरमेंट है 5 लोगों की चिल्लाने की, अगर 4 लोग चिल्ला रहे हैं, I guess Rohit will understand this, the power reduces। It's gone. Yeah, you yeah, know? absolutely. तो या तो आपको रीटेक देना पड़ता है, या फिर उन 4 बाकी के 4 लोगों को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, राइट, unfair। पांचवे का कवर करो, राइट, हाँ, which is really unfair। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। True. और ये so when you're I recording in yeah, no, please continue, Rohit. Yeah, I feel that this can be solved with planning and organization. Again, if you can sit with the supervisor, and if the sound designer and the supervisor are in sync and they know what they're doing, and they know that we need to call artists, only artists who will be performing, and we need to select a good section of artists, be it new, somewhat experienced and good experience, then that planning will only help. Because wherever I have walked into crowd sessions unplanned, I know it has been a disaster. It is chaotic, yeah, and where I have not spoken, or I have not been introduced to the supervisor, or I have not been able to tell them the brief of the film. I have myself experienced complete chaotic disasters. Like everything has been scrapped. पूरे 2 दिन का काम स्क्रैप भी हुआ है. I have been into those situations, and over the years I've figured out a ecosystem, I may call it, or maybe a way of working, that I make it a point to first make that pilot. Secondly, speak to the supervisor and show him or her the film. भाई ये हम कर रहे हैं. This is where I need these specific crowds, and many times I also speak to the VFX supervisor. Now, why VFX supervisor? There are times when I see the final movie with the VFX, 500 के 5000 हो जाते हैं, या Oh my God, many हाँ. times 100 के 1 lakh हो जाते हैं, and now you have just called 20 people. So ideally, my whole calculation is, if on screen you are going to show 50,000 people, I at least need 50 people in the studio. Absolutely, तभी वो मजा आएगा. Otherwise, the impact will be completely as good as किया ही नहीं है crowd. To be very honest with you, हाँ, I mean, कितना भी you DT कर लो आप, वो नहीं आता है, वो इफेक्ट आता ही नहीं है. Right. Again, DT with so many people technically doesn't work. To be very frank with you, technically it phases and cancels. So ideally, have more people so that you don't have to do DT. Like okay, for people who don't know DT, here हम DT बोल रहे हैं. DT का मतलब है double track. हम उसी चीज का दोबारा करते हैं, उसको कहते हैं double track. Yeah, please continue. Yeah, so many times what happens is, if there are 4 people, these people can do a DT. ये DT ये हो सकता है.
But if there is a crowd of 50 people or more than 10 or 20 people, I highly recommend do not get into the unless you're doing in a very cramped up studio where you can only accommodate 5 people. Okay, then it's a different story. But otherwise, with too many voices, because with DT, if it is not matched, if everyone doesn't have a headphone or a playback, it will never be a good DT. It will always be unusable. So and that also tires of the artist. So what I do is I reduce the number of artists. So what I'll do is 2 males and 2 females, and I'll get them DT to do certain sections of the crowd where I need like the proper impact. I will have the crowd do like, okay, you give more energy. This is what I tell them कि एक ही बार करो पर पूरे एनर्जी के साथ करो, तो वो it will work then. Right. So that's how I look at it. What is the Rajesh shortest? ji, हाँ जी sorry, बोलिए. sorry. No, I please, just remember one point. Yeah. I don't know अब अगर ये लागू होता है, but पहले कई साल पहले जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट डीटी, हाउ दे डुप्लीकेट एंड ऑल दैट. सो उस जमाने में कई साल पहले जब मैंने क्राउड डबिंग किया था, दैट टाइम दे यूज्ड टू टेक वन टेक, कि आप एक टेक, ये पार्टी सीन चल रहा है, एक टेक कर लो. आफ्टर दैट दे यूज्ड टू से चलो अभी सेकंड टेक करेंगे. मतलब क्या? मतलब कि आपने सपोज मैंने एक लाइन बोली है फर्स्ट टेक में, एंड आई वाज लाइक से माय ओन एज, सो आई विल से दैट अरे पार्टी में बहुत मजा आ रहा है ना, तू कल आएगी क्या, हम कल वहां जाएंगे शॉपिंग के लिए, ऐसा कुछ मैंने बोला है. अभी सेकंड टेक करना है, दैट मीन्स यू हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. यू कैन नॉट स्पीक इन अ सिमिलर, यू आर परफॉर्मिंग अनदर पर्सन नाउ. जो Right. आपने ऑलरेडी किसी लेडी का कर लिया है, अब आप किसी और लेडी का करेंगे, तो वो आप कैसे करेंगे? यू हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, यू हैव टू Right. चेंज योर वॉइस. नहीं तो लगेगा अरे ये आवाज ये भी निकाल रही है सेम आवाज भी और वो बोल भी रही है, सेम वो भी आवाज. बोल रही तो है. you learn to modulate also. So then second you find some little maybe an older or a younger person, and you put in a little bass and अरे बेटा मुझे जरा समोसा दे दो. You could do that. So you learn to modulate also. You learn to modulate your voice Absolutely. through these things. Absolutely. Yes, So well well said. said, Meena ji. Yes, definitely. Yes, yes. Also, I'd like to ask this to Renu कि have you met with a situation जहाँ पर आपको अभी realize हुआ कि भाई crowd कराना है और लोग हैं नहीं और आपको अभी हाँ, करना है वो, तो अब आप क्या ये करेंगे? होता है. जैसे 2 लोग हैं, तो पता चला आप ही हैं और कोई और है और अभी ये This is करना what है. lockdown was. This is what lockdown was. I think Rohit is in a current recent experience situation. But yeah, ऐसा होता है, especially at times new prints आते हैं जब भी किसी फिल्म के या सीरीज के, they send you कि okay this is a new print now, and उसमें कुछ scenes होते हैं added, तो भी एक आध अगर सीन है, छोटा सा सीन है, तो you don't, it's like यार अभी इसके लिए crowd and urgent कैसे बुलाएं? है. हाँ, तो it's like अच्छा स्टूडियो में जो है किचन स्टाफ या जो भी है सबको लेकर आते हैं, एंड सबसे Okay. कुछ ना कुछ तो करवा लेंगे, लाइक हो जाएगा. सो अगर मैनेजेबल होता है, लाइक इफ इट्स अ स्मॉल बेसिक सा सीन तो ठीक है, बट यस अगेन लाइक इफ इट्स लाइक अ फाइट सीन और समथिंग, देन यू हैव टू कॉल पीपल, देन देयर इज नो ऑप्शन. yes. फिर आप ढूंढते हो भाई कोई तो आसपास हो, या ठीक है लेट आ जाओ या व्हाटएवर, लेट्स स्टे बैक एंड लेट्स फिनिश इट, स्टफ लाइक दैट. Okay, Rajeshri, yeah. just continue. After this point, I'll say something. नहीं बोलिए Finish ना कर लो, प्लीज. finish. I was just thinking, तुमने मुझसे पहले पूछा कि people look down upon crowd dubbing. Why? I have not understood who says this. Why they say so? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आज I think I can say with confidence that जितने आर्टिस्ट हैं अपनी जितने वॉइसिंग आर्टिस्ट हैं, and those who are involved in dubbings, चाहे फिल्मों के, चाहे साउथ की फिल्म, चाहे हॉलीवुड फिल्म, चाहे आजकल तो आई डोंट नो टर्की एंड कहाँ की फिल्म्स एंड शोज डब हो रही हैं. तो जितने वॉइसेस हम इस फील्ड में हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्राउड डबिंग किया है. आई डोंट नो, डू यू थिंक किसी कोई आर्टिस्ट है जिन्होंने क्राउड नहीं किया होगा? I don't know, मीना जी. I will say कई लोग होंगे जिन्होंने क्राउड डबिंग जैसे तुमने कहा तुमने भी एक किया है, एक फिल्म की है तुमने भी, मैंने 3-4 की है. some must have done more, some must have done less, but I think, and we have all
हम बाय गॉड्स ग्रेस हम क्राउड डबिंग के अलावा क्राउड डबिंग के बाद हमने अपना मुकाम हासिल किया है. We've reached places, we've done a lot of good work. So how can you look back and say that this is not a good field, or look down upon crowd dubbing? Why is anybody doing So that? I Nobody think should do that. I think somewhere I know a reason behind this. It could be a reason. जो ओरिजिनल फिल्म्स हैं जैसे बॉलीवुड स्पेशली उनका डबिंग का बजट नहीं होता है, क्राउड का तो बिल्कुल ही बजट नहीं होता है, ठीक है. एंड देन द एट टाइम्स द कोऑर्डिनेटर्स दैट दे हायर फॉर sourcing artists, what they do is it is really sad, but they will get, maybe if there is a crowd of 30 people, they will get 5 experienced artists, like good artists, and the others will be, might be their students, or I don't know, just people they met at a party, and or people like जिन्होंने उनको कॉल कर लिया कि हाँ हमें ट्राई करना है, kind of a thing. तो उससे क्या होता है ना, वो जो क्वालिटी ऑफ पीपल वर्किंग देयर in that session, that kind of gets affected, and that affects the product as well, to some extent. That is one of the things. The second thing is obviously इतना आप टाइम और एफर्ट डाल रहे हो, बट उसके रिटर्न में आपको जो पेमेंट मिलती है देखा जाए तो इट इज प्रीटी लेस, लाइक शिफ्ट वाइज भी जो पेमेंट होती है फॉर क्राउड डब्स, like it is, we all know that it isn't as much as I would make if I dub for a character for 5 hours in a studio, obviously, ना. Yes. मतलब 1 घंटे में भी शायद मैं उससे ज्यादा कमा लूं जितना मैं Right, but 8 I'd घंटे still crowd say dub it is. करके कमाऊं. Yes, But it's a बिल्कुल, learning but experience. yes, very much. Also, It is a जो stepping newcomers हैं, stone. उनके लिए एक सस्टेनेबल इनकम भी तो है, Yes. कि आप एक शिफ्ट में भी काम कर रहे हो, अगर आधी शिफ्ट में कर रहे हो या पूरी शिफ्ट कर रहे हो, तो यू आर पेड अ डिसेंट अमाउंट फॉर द एंटायर शिफ्ट, फॉर द एंटायर डे. एंड आपका रेज्यूमे बनता है दैट आपने Correct, इस like, फिल्म को हाँ, डब वो किया, तो- इस फिल्म में Yes. यू कैन And आजकल तो luckily production houses are really kind that they've started giving, lot of them have started giving our names in the credits, important. especially crowd Yes. Very artists. important. So Yes. that's a brilliant change that is happening. Huge plus point. Yeah. Yes. Yes. So हाँ, मतलब there is scope, there is hope, and हाँ, आप वहाँ से निकलोगे बन के तो. I बिल्कुल, feel I have a point here. I feel let's go back in time when maybe Meena ji was doing the crowd. That time it was just the artists. It was artists who were doing crowd. कहीं से तो देयर वाज ये नो आ गया. टेक्नोलॉजी, देयर वाज नो Yeah, टेक्नोलॉजी. Also, there were what I mean to say, there were dubbing artists who were doing crowd. Renu, no offense here, but even I have been into this situation where the production head says कि हमारे office boys बुला के हम लोग crowd कर लेंगे. And many times I've been the one to put my foot down. I said no, because what that does is that starts a narrative that ये तो कोई भी कर लेगा. Right. ये तो हम हमारे चाय वालों को भी बुला के ये कर सकते. Okay, in a do or die situation, once in a while, okay, Once in ठीक a है, while. जब एक आर्टिस्ट को आपने बुला लिया. That is what I was talking about. Like I Yeah. obviously हर project में नहीं किया है वैसा. Exactly. But it's like urgent delivery है and basic सब Absolutely. है तो Once in a while, but that narrative needs to be not to be encouraged, because there are productions who say हमारा office staff कर लेगा crowd, आप मत बुलाइए artist को. Oh, is it? Right. Yes, which is and I'm saying this openly on this platform because we need to put this out that no, this cannot be done that way. There are artists who will do it. We will give it to a crowd supervisor. We will see to it that a group of artists is coming to the studio and doing it. It will never be हमारे ऑफिस के बंदे, हमारे प्रोडक्शन के बंदे. आप सेट पे तो ऑफिस के बंदों को नहीं बुलाते ना एक्टिंग के लिए. Right. So I think I'm putting this out because this is also a narrative. This is also a way out for a lot of productions, and I feel we as artists, we as established artists, we as coordinators, we should put our foot down that no, this we will not allow this. We will call in a new artist. हम एक नए आर्टिस्ट को बुलाएंगे. हम एक आर्टिस्ट को ही एक आर्टिस्ट से ही ये करवाएंगे.
And I Agreed. feel Yeah, this is a earlier, nice message. yeah, Very nice absolutely, message. this has to go out, because there is this narrative which is getting popular, that ये तो कोई भी कर सकता है, ये हाँ तो, वो but डबिंग then, ओवरऑल डबिंग के लिए भी बहुत लोग लाइक आई एम yeah, श्योर मीना जी गेट्स कॉल्स और राजश्री मैम आल्सो गेट्स कॉल्स एट टाइम्स कि अच्छा हमको ये एक दो लाइंस है प्रोमो के लिए करनी है, देन यू कोट अ बजट और व्हाटएवर एंड देन लाइक अरे आपको दो लाइनें ही तो बोलनी है उसके लिए इतना बजट, एंड देन यू कम टू नो दे टेल यू कि हमने ऑफिस में ही किसी से करवा ली, करवा you know, दिया, like for yes, an yes. IPR or that yeah, that तो narrative needs to go, that that is a narrative that needs to be taken care, and because we all are artists, everyone in this frame is an artist, and when there's someone who just says that, okay, ye to, this can be done by my office boys, three girls and three boys will come from my office and do it, I feel that needs to stop completely. It is a professional job. Let us put a professional tag on to every crowd artist's name, so that he and she also feels, oh wow, I'm a professional, and yeah. Yes, let them just go out and have a good time. And if those absolutely. No, office there are girls and office boys are brilliant, no, I'll ask them to become artists. क्या काम कर रहे हो यार, artist बनो तुम यार. Actually, each artist should be proud of themselves, proud of their work. If they Absolutely. themselves feel कि crowd dubbing, is lowly and all that, तो फिर दूसरा कैसे आपको इज्जत देगा? Exactly, it's It about True, is true, you effort. who have to appreciate your art, appreciate your talent, and true, absolutely. have confidence in yourself that you're doing a good job. You're doing a wonderful job. जैसे Absolutely. राजश्री जी आपने सस्टेनेबिलिटी की आई थिंक बात की थी ना कि आपकी एक सस्टेनेबल इनकम हो जाती है. आई right, रिमेम्बर व्हेन right. आई हैड स्टार्टेड डबिंग फुल टाइम, ऑल आई यूज्ड टू डू वाज क्राउड डब्स. तो इनिशियली जैसे हफ्ते की एक आ गई, दो आ गई, फिर धीरे धीरे आई रिमेम्बर दिस वन मंथ आई हैड वन क्राउड डब every day of the month. So 30 days I did crowd. And I was like, wow, इस महीने रोज crowd किया है मैंने. And I was so happy about it कि मैंने crowd रोज किया है, you know. When I look back at that, I'm like, dude, मतलब तू रोज crowd करके खुश रहती थी. Simpler times. So do you ever want to go back to those days कि हाँ भाई वो दिन दोबारा आ जाए? At times I feel like, but like I said, I would prefer that team also, no, कि, you know, like I would like to do it with people who are passionate about the craft, who don't just come कि कुछ नहीं है तो चलो चलते हैं, you know. So Absolutely. most of the So, yeah. times when we हम भी अगर बुलाते हैं तो हम किसी एक को पूछ लेते हैं कि तो वो सामने से पूछ लेते हैं कि कितने लोग चाहिए आपको. So हाँ. 3 से 2 या 3 लोग चाहिए, so दिल से अच्छा मैं बोल दूं इनको भी मैं ले आऊंगी हाँ, 2 लोग या हाँ, मैं 3. हाँ. तो वो अपने अपने फ्रेंड्स को या ऐसे किसी रेगुलर जिनके साथ काम करते हैं उनको ले आते हैं काम करने के लिए. Correct. उसमें ये होता है कि वो आपसी बातें भी करते रहते हैं. तो इस तरफ जब Gossiping, I'm sure gossiping भी हो रोमिंग जाती लवी है. जब हम सुनते हैं तो कई ऐसी चीजें सुनने को मिलती है. अच्छा, ओह अच्छा. तो इसकी लाइफ में ये चल रहा है. अच्छा कल रात को इन्होंने बहुत पार्टी की, ओहो तभी इतने क्लिप्स आ रहे हैं. अच्छा. So that is something very amazing about crowd dubbing sessions. The energy, the vibration. अगर आप स्टूडियो Absolutely. में भी जाओ जोर जोर के ठहाके और लंच के वक्त तो ऐसा लगता है कि भाई ये कोई महफिल. कोई पार्टी, हाँ कोई महफिल जम रही है या कुछ ऐसा हो रहा So है कि हम भाई ये भी थोड़ा सा. आई रिमेम्बर क्राउड में जब भी लंच ब्रेक होता था या नाश्ता ब्रेक होता था शाम का, तो हम बोलते थे चलो भाई जो मेन काम करने आए वो कर लेते हैं, खा लेते हैं. That's why I called it a paid picnic. Picnic है total. सुबह नाश्ता, फिर थोड़ा सा काम कर लो हंसी मजाक में, then lunch time, फिर उसके बाद थोड़ा सा men will go out to smoke and all that, फिर थोड़ा सा काम कर लो, फिर snacks आएंगे, समोसा वमोसा चाय कॉफी. It's a paid picnic. Paid picnic. बिल्कुल बिल्कुल. और बातें जो एंडलेस बातें हैं Gossiping, वो बातें कभी खत्म नहीं होती. gossiping and मस्ती मजाक, that is another thing. So any advice to the newcomers जो अगर अब जिन्होंने हमारा ये डिस्कशन सुना है और जो सोच रहे हैं कि अब हम क्राउड डबिंग से शुरुआत करेंगे कि चलो हम इससे शुरू करेंगे, तो एनीथिंग फॉर देम. मीना जी आप शुरू कीजिए, कुछ आप कहना चाहें. हाँ, मैं ये कहूँगी दैट ये बहुत अच्छी फील्ड है. वो पैशन होना चाहिए, वो लव होना चाहिए, वो
आग होनी चाहिए सीखने के लिए, एंड डोंट लुक डाउन अपॉन इट, डोंट लुक डाउन अपॉन इट, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आप आइए इसमें. मैं इतना भी कह सकती हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल हु आर रनिंग क्लासेस, यू नो, सिखाते हैं आर्टिस्टों को, दे रन क्लासेस, सब कुछ सही है, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, बट crowd dubbing is like hands-on training. You know, Absolutely. you're there, you're in front of the mic, in front of the screen. जो आपने सीखा है वो सब अब लागू हो जाएगा. You will is practical knowledge. It's practical. You know, you're applying whatever you've learned in your classes, in your Absolutely. course, and doing it now. You're getting an opportunity to stand in front of the mic, जो easily नहीं मिलता है. People बिल्कुल. time pada hai, you know, if they want to call veteran artists, they can call veteran artists and get the work done, but they are allowing you to come and use this as a platform to learn. आप उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्टि रखो, that, and don't run after money कि मुझे पैसा उसी दिन मिलेगा, मुझे कितना पैसा मिलेगा. No, you're come here to become an artist, learn the ropes, learn your art, then think about money. Money will follow. कोई भी field हो, money तो आएगा ही. Allow money to follow you. Don't run after money. Allow money to run after you. I feel that way. And crowd dubbing, दाग अच्छे हैं, crowd dubbing भी बहुत अच्छा है. So well said. Wow, well said. क्या बात है. Absolutely. अब what about you, रेनू? आप क्या कहना चाहेंगे सबको? So मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के दम पे कहूँगी कि क्राउड डब हेल्प मी बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. इट so being a Punjabi, I was used to speaking on a very high pitch because मैं stereotype नहीं करना चाहती हूँ, but in most of the Punjabi households we are used to listening to our elders at a very high pitch, and that is what we start doing ourselves as well. So it is through crowd dubs that I started understanding कि okay मुझे अपनी pitch को control करना है. Though I was told by somebody earlier, but मुझे समझ नहीं आता था. तो जब मैं क्राउड डब्स करने लगी तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ओके अपने को पिच थोड़ा यू नो नॉर्मलाइज करना है, बहुत ऊंची पिच पे बात करना है. एक वो चीज़ समझ में आई. सेकेंडली इट हेल्प्ड मी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस टू होल न्यू लेवल. I remember Pati Ayar had sent me for an audition very initially to Empire. That was my first ever audition. And I was so nervous. It was for sure in the city. And like I was trembling, I was sweating. और वो एम्पायर के दरवाजे इतने मोटे, वो मुझसे ना खुले. And I was like, oh God, where am I, you know? And like I just wanted to run away from there. I was so scared and nervous. But crowd dub helped me build that confidence in myself that even if I would go to new studios and there would be all strangers around me, I would be confident enough to perform in front of the mic. I would know what I'm doing. So crowd dub definitely helped me with that as well. And obviously जैसे आपने भी बोला networking तो है ही, and it has actually a lot more benefits. Like I can go on and on about crowd dub, seriously. But yeah, maybe you can start with this. But having directed a session, do you have something to say about that aspect as well? Yes, as a director, I think it is very important to be prepared along with your engineer, like Rohit also said, to know कि आपको कहाँ crowd चाहिए, किस type का crowd किस scene में चाहिए. हाँ, और आप कैसे plan करते हो. Like I think mostly people do this कि पहले आप lines ले लेते हो, छोटे dialogues ले लेते हो, then आप वाला लेते हो, murmurs and all, and then you keep the screams and loud reactions and all for the end, ताकि आर्टिस्ट की एनर्जी ड्रेन भी ना हो और उनकी आवाज भी अफेक्ट ना हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर होमवर्क एंड ऑल्सो टू कॉल द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द जॉब, you know, because that will not only make it easier and smoother for everybody, but also the output will be good. तो रेशियो न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट का आपको बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर 20 आर्टिस्ट आपको चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 नए और 10 एक्सपीरियंस को बुलाओ. नहीं, आप 5 नए आर्टिस्ट को बुला लो, 15 एक्सपीरियंस को बुलाओ. Yes. तो इस तरह से they'll get trained in the process. Yes. What about you, Rohit? आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, I mean,
something what the Brits taught me was always carry your visiting card. You know, new artists can benefit from this, that they go to a studio, they go to different studios for crowd dubbing. They just have to leave their card or a demo that I am a solo artist also, I am doing this also. So for one thing, yeah, networking, but networking at the right places in the right way. So I feel that, you know, budding artists can take this as an opportunity to just give their card or maybe a CD or a pen drive, or you know, send their samples over on the mail to the studio. So when they visit the studio, they unknowingly, a door is opening for them, unknowingly. It is not that मैं crowd करने जा रहा हूँ यार, क्या हो सकता है, but unknowingly a door of opportunities is opening for them, and if they look at it from that point of view, they will never ever look down on this whole thing, that we won't be discussing that. So one thing is that. Secondly, you know, looking at seniors and looking at seasoned artists and observing them will teach them a zillion things. I mean, you know, if as an engineer I was in a session where Meena ji was performing, I will learn 100 new things from her as an artist. So if Right. there's a new artist who is in the studio, I think there's so much to just observe and absorb from seniors. That is second, and I think third is just giving your uh, art, or you know, your talent a opportunity again. You know, many artists, you know, they restrict themselves, you know, in the beginning, that I will not do this because this is something they've already made conclusions. But if you give your art an opportunity, I think there's a lot to gain. So I mean, this is what it is. I would like to add something Also, from an artist point of yeah, view, that yes, we learn what to do yeah, from others. We also learn what not to do in a crowd dub session. That Absolutely. is also equally important. Like I know Absolutely. certain experienced artists who will keep the phone on ringer mode during crowd dubs, and it is very irritating, especially during takes where the guys are, you know, yelling, screaming, and this person's phone rings, and they will also start speaking, you know, and be very unapologetic about it. So I learned कि ये नहीं करना है, ये नहीं उनको करना। हमेशा साइलेंट पे रखना है. आप थोड़ी देर बाद, मे बी 1-1.5 घंटे बाद, या जब आपके ब्रेक से आप जाके चेक कर लो फोन किसी का है तो कॉल बैक कर लो, यू नो. एंड कोई और टेक कर रहा है तो बीच में खुसफुस नहीं करना है. थोड़ी देर के लिए, यू नो, अपने अंदर की गॉसिप क्वीन को कंट्रोल कर लो, चुप कर लो, टेक होने के बाद कर लेना जो भी है. सो these things, they are very basic, but at times people don't realize that. Also one very important thing in crowd dubs, especially क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि इतने सारे लोग होते हैं, AC ऑन रखना पड़ता है. Some people's bodies, they start feeling cold. So in crowd dubs, if you're going, you must carry a shawl or a jacket and a pair of socks. yes, Because yes. AC off नहीं कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता, you know. So as artists, please carry your jackets, shawls, socks, whatever keeps you warm. कंबल दोहर जो लेकर जाना लेके जाओ, but AC off नहीं होगा. You know, Renu, I'll add one more thing. आप जी. क्राउड डबिंग जब करते हैं, आप एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सीख जाते हैं, बिकॉज इन दैट वन रूम दे में बी यू नो एटलीस्ट 7-8 लोग होंगे ही. तो जो 2-4 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी बैठे हैं. यू नो, समटाइम्स यू गो आउट, आप डबिंग रूम से, डबिंग स्वीट से बाहर निकल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहीं पर बैठे हैं. तो you learn to control yourself and you know not, it is like कहते हैं ना, breathe भी मत करना, because तो breathing की भी आवाज माइक पकड़ लेगी. if you're, अगर आप पीछे बैठे हैं just observing or just sitting there, आप नॉर्मल में हम ना ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं, नो, आपस में जब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बट वहां पर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके अलावा सारे लोग एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू लर्न, दैट जब आप डबिंग रूम में हैं, यू डोंट, यू एक्चुअली आप ब्रीदिंग भी बंद कर दीजिए उस समय. यू नो, यू लर्न टू कंट्रोल योर ब्रेथ, योर वट एवर हल्के फुल्के साउंड, बॉडी मूवमेंट. यू नो, आप हिलेंगे भी तो थोड़ा सा आवाज आती है, आप यू नो थोड़ा सा अच्छे से बैठेंगे तो वो सोफे की आवाज आ जाएगी. तो यू लर्न, आप सीखते हैं हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी. Correct. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप नहीं सीख पाते अदरवाइज. एंड जब आप अपना कैरेक्टर डब करने जाएंगे, व्हेन यू आर डूइंग
solo, Solo. this helps you a lot because आपने already सीखा हुआ है when you have done crowd dubbing that जब तक आप take दे रहे हैं, जब तक आप perform कर रहे हैं, आप हिलेंगे भी नहीं, भले मक्खी तो होती ही नहीं है, but आपका बाल इधर आ गया, but you will not even think of removing your hair, शायद उससे आवाज आ जाए थोड़ा सा movement से, तो आप ये सब सीख जाते हैं क्राउड डबिंग के दौरान. और एक बहुत अच्छी चीज है क्राउड डबिंग की जो हम में से किसी ने नहीं बोली, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपके बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं क्राउड डब, बिकॉज डबिंग में अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स, क्योंकि आप हाय हेलो होता है या वेटिंग पीरियड है तो आपने थोड़ी बहुत बातें कर ली, कभी कभार हैंग आउट कर लिया अदर देन crowd dubs, I mean other than your dubs, but yeah, in crowd dubs you get that time together and at times those bonds kind of are really cherishable. Absolutely. So, and Absolutely. I think that human aspect is very important. True. दर्पण आके वापस चला गया. Lovely. We can see Darpan here already. मुझे ना मीना जी जब पता है, मीना जी जब बोल रही थी ना कि दर्पण प्रॉपर्टी पेपर साइन कर रहा है तो डब कर रहा है, या कर रहा है तो डब कर रहा है, तो मुझे कॉफी विद करण का वो रणवीर सिंह और अक्षय कुमार वाला एक पता है एपिसोड था जिसमें अक्षय कुमार इज लाइक क्या किसी का मुंडन हो रहा है मैं नाच रहा हूँ, कोई मर रहा है मैं नाच रहा हूँ, मुझे वो सीन याद आ गया. अरे यू डोंट नो, तुमने सुना नहीं है, इसकी शादी हुई, शादी से ये सीधा स्टूडियो गया. फेरों से he went straight to the studio and he says कि पूरी रात में रिकॉर्डिंग कर रहा था. दर्पण is another level. In the middle of the sea he manages to dub. He is like इसको सीखना पड़ेगा. He dubs on airports and all also, no? पता नहीं, ये टेक्नोलॉजिकली टू टेक savvy है वो. तो while बाकी लोग नहीं है, मीना जी हम रोहित को हमारा विजिटिंग कार्ड बोल के दे देते हैं. आप तो मतलब Send it to me. There's always scope for more work. Yeah. और रोहित मैं तो थाने में Likewise. रहती हूँ यार, मेरी एक कजिन रहती है गावण बाग में. Please come. Please come, and we have some really good food at the studio. Rajeshri is back. Rajeshri is back with a bang. attempt कर दिया यार, मतलब Nice food. Internet is behaving very funny, so मैंने Yes, So we made the most of it. Internet is also very funny. तो तब तक हमने there कार्ड्स is. एक्सचेंज कर लिए. He's back. My internet is absolutely fine. मैं आया फिर I saw that यार I'm डर के तीन लेडीज को देख spoiling the party, so I went back. Because you guys seem to be having, not just you guys, everyone who's watching seems to be having such fun कि I didn't have the heart to jut in, and I was like मैं आऊँगा फिर लोग सुनाएं, चार बात सुनाएंगे. पर यही होता है ना, ये होता है because people are दर्पण झूठ ना बोले, ये enjoying. दर्पण सिर्फ I'm झूठ like बोलता this है. bearer of bad news कि यार बंद करो. I'm the cop. I'm the bad cop. I'm the cop who comes at 10 o'clock and says कि music बंद करो, अभी हो गया. Not at all. I'll beg to differ. In fact, मैं सोच रही थी कि when will Darpan come, क्योंकि ये इतना अच्छा चल रहा था. मैंने कहा अच्छा चलते हुए खत्म हो जाए, कहीं बोरिंग बातें हम ना करें. I think जैसे व्यूअर चैनल बदलने लगे, उस मकाम पे ना आ जाए कहीं हम. मेरा I तो think जो what is पिछला वाला amazing- सेशन चल रहा था उसमें भी ये था कि यार हमें भी इसी में शामिल कर लो यार, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं. I know. ये सब बातें अच्छा करेंगे. रेनू, हुआ था ऐसा पिछली बार हुआ था, एक सेशन चल रहा था, बहुत लेट चल रहा था, तो और अगले वाले ना वेट कर रहे थे, मैंने उनको भी ऐड कर लिया स्ट्रीम में, मैंने कहा सब आ जाओ. सही है. हमने बड़े मजे की बातें की. क्या बात. Nice. So That guys, is what- amazing यार, that you know, मैं hats क्या off to बताऊं, Darpan, बस ना, he does it क्या ही so बताऊं, शब्द कम seamlessly. पड़ रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे कमेंट्स some people are writing कि ये पहली बार हमें इस टॉपिक के बारे में पता चला. ये बहुत अच्छा कर्म है क्योंकि इस तरह की जानकारी right from the horse's mouth, as they say, people who have been involved in this craft for so long, and such amazing, mature, very, very intelligent insights. It has been so beautiful, and I must speak about Meena, क्योंकि मीना को अग्री कराने में मुझे 4 साल लगे हैं for me to get her to agree to come on camera. And from day one, I told her that you are going to be a rock star on camera, but she never. अरे अब खुद पे विश्वास नहीं है तो मुझ पे तो रखा करो यार. दर्पण झूठ ना बोले, बट ये दर्पण सिर्फ झूठ बोलता है. What to do? नहीं, I agree with Darpan
sorry, no, I agree with him on Oh this. God, you Like guys, कोई your thank cutie you so pie much. नहीं and है. your Thank you jewelry, so and you're much. looking so radiant. Thank you for all your good words, all of you. Thank you so much. Thank you. And ये lot तो of क्या होता है ना, wisdom, मीना Meena ji, lot of मीना wisdom. एंड मीना कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ रॉयल्टी बाय द वे, सो इनके यहाँ पर Oh, क्या होता है, ऐसे खुश होते हैं ना तो ऐसे अपना हार निकाल के ऐसा फेंक देते हैं, तो मेरे को ऐसा दे दो, निकाल के फेंक दो मेरे ऊपर, ये ऐसे मोतियों की माला, बड़े लोग हैं, खुश होते हैं तो ऐसे अंगूठी निकाल के दे देते हैं, प्रॉपर्टी, दर्पण को प्रॉपर्टी देना कोई। तो प्रॉपर्टी दे दो मुझे यार। दर्पण हम ये सेशन उनके घर पे करेंगे, तो हम ही होंगे, हम उनके घर पे Beautiful करेंगे, house. और जब हाँ, वो Beautiful house. चीजें फेंका करेंगे तो हम पकड़ा thank करेंगे. you. Thank you so much. Thank you so much. Most welcome. More than welcome. And we'll have a crowd dubbing session के जैसा food and ये panel discussion साथ में. You know, थोड़ी देर खाना खाएंगे, फिर panel discussion, फिर break करेंगे, Wow. समोसे खाएंगे, फिर panel discussion. Wow. ये I'll India treat Voice you all के to अलावा भी Rajasthani sessions food. कर देंगे हम। Oh, Sorry, है ना? wow. Rajasthani food is a promise. वो Oh, नहीं यार, lovely. I'm मजा just आ गया, back यू नो, from आज हम लोग Rajasthan, in fact. तकरीबन एक I'm just घंटा, back यू from नो, ये Rajasthan. oh, अच्छा, Yes, अच्छा. ये yes. Which ट्रेन जो part? है Even एक घंटा Darpan देरी is से from चल रही है Rajasthan. आज, पर Darpan is इसके from यात्री उधर. बड़े मजे से इस यू नो डिले को एंजॉय कर रहे हैं, एंड विच इज़ अमेजिंग, सो इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली वंडरफुल गाइज। एंड कमाल की बात ये, जैसे आप लोग एक रोहित नहीं जानते हैं सबको, आप लोग रोहित को नहीं जानते हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा जब रविवार को सब मिलेंगे, एंड विल Right. पुट real faces outside the screen, and it'll be wonderful. So I'm really Yes. looking forward to that. And it Same has here. been such a glorious evening. इतना लोगों ने thoroughly enjoy किया। हम लोग भी यहाँ पर स्टूडियो में यही बात कर रहे थे कि कोई बंदिश नहीं थी वक्त की, तो इतना मजा आया कि ठीक है यार, 15-20 मिनट यहाँ वहाँ, बट ये कहाँ मौके मिलते हैं इस तरह की बातें करने के, सब अपनी बातें इतनी करने के यू लिए. नो फास्ट लाइफ में है, so it's amazing that we could do this. And look at the comments and the compliments that people are showering on all of you, which is so amazing, and I'm so thankful. It's actually a privilege that I have my good offices with such people कि मेरे बोलने पर आप लोग, you know, all of you agree to participate in this endeavor. हम comments पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अच्छा, okay. अब फोन पे आपको नहीं समझ में आएगा, जो लैपटॉप पे है उनको दिखेगा राइट साइड में स्क्रीन के आपके। Oh, yes. Oh, मैंने ये हमारे अभी ना नहीं एक किया था. हमारे एक व्यूअर हैं, बहुत यू नो काफी, ही इज आर्डेंट फॉलोअर ऑफ इंडिया वॉइस फेस्ट एंड शुगर मीडियाज। हिज नेम इज जुबिन जलक, वो बेचारा बहुत देर से इंतजार कर रहा है। आई थिंक ही वाज देयर। जुबिन, इफ यू आर देयर, से हाय ना, बिकॉज उन्होंने ना मुझे फेसबुक पर एक बहुत अच्छी कुछ लाइनें लिखी हैं और बहुत रिक्वेस्ट किया कि अगर मैं इसे पढ़ दूं। बहुत प्यारी लाइनें हैं, और स्पेशली इसलिए क्योंकि आप लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की इतनी जद्दोजहद होती है, इतना संघर्ष होता है, और शुरुआत करते हैं एक ग्रुप में डबिंग करके बहुत लोगों के साथ में, और अपनी पहचान उस भीड़ में अपनी पहचान बनाते हैं, बड़ा संघर्ष रहता है। यू नो, ऑल थिंग्स असाइड, ऑन अ सीरियस नोट, ये आसान काम नहीं है, और हम समझते हैं क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं उसी ज़मीन से शुरुआत की है, बिकॉज ऑल ऑफ अस कम, हम सब उस जगह से आते हैं जिसका नाम मेहनत है। तो मुझे लगा ये जुबिन ने जो ये लाइनें भेजी हैं, आई एम श्योर उनकी लिखी हुई नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं, और ये मैंने देखी है नेट पर, बट दैट डजंट मैटर। जुबिन, आपने भेजी है, सो मैं ये पढ़ना चाहूँगा, और बहुत अच्छा लिखा है कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करता है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तो कुछ अलग करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। और इन्होंने एंड में लिखा है कि अगर काबिल होना चाहता है वॉइस इंडस्ट्री में, तो इंडिया वॉइस फेस्ट है ना। पर इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि हम एक बहुत छोटा सा जरिया है, बहुत छोटा सा मंच है, इतना बड़ा मत बनाइए। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका दृढ़ संकल्प, और आपकी कंसिस्टेंसी in doing what you do is what is going to lead to success. ये जो लोग बैठे हैं सामने, ये इतने you know दिग्गज लोग, ये ऐसे दिग्गज नहीं बने, इन सब की संघर्ष की कहानी। और आज हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की, क्राउड डबिंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट किसी फोरम पर इस टॉपिक पर आज तक बात नहीं हुई है, एंड इट इज सच अ पिटी। इतना महत्वपूर्ण काम है ये। वहाँ पर आप जब आप क्राउड में डब करते हो, ये जो भी नाम ले लें, एम्बियंट वॉइसेस कह लें, ग्रुप डबिंग कह लें, बट मायने इसके ये हैं कि आपको एक भीड़ में अपनी पहचान बनानी होती है, और आपको अपने अभिमान को तो छोड़ना ही पड़ता है,
कई बार अपने स्वाभिमान को भी ताक पर रखना पड़ता है और धीरे-धीरे आपको इस भीड़ में अपनी आवाज़ को पुरज़ोर सुनाना पड़ता है लोगों को और कितनी सारी चीज़ें होती है, बड़ा संघर्ष का काम है। बट जो लोग इस आग से तप कर निकलते हैं, या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, या फिर वो खरा सोना बनकर निकलते हैं। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग जिन्होंने शुरुआत में बिल्कुल क्राउड डबिंग की है, आपके सामने है कि भस्म तो हुए नहीं हैं, बट खरा सोना बन के निकले हैं। So my only request is that please respect the fact that these guys are here to talk about, and they are talking in such glowing terms about this aspect of the craft. But yes, there can be a debate. I'm glad that we did have a debate, a very healthy debate. और बहुत बातें हो सकती हैं कि इसको आपको क्या नाम देना चाहिए. You should not look down upon it. और ये कोई एक दिन में चेंज नहीं होगा माहौल. ये हवा धीरे-धीरे बदलेगी. एक-एक करके लोगों का नज़रिया बदलना बिल्कुल ज़रूरी है और आगे जाके होगा। बट हमने कहीं न कहीं, मुझे लगता है, एक चिंगारी जो है वो छेड़ दी है और एक Absolutely. यही चिंगारी आगे जाके लौ बनेगी और एक it will transform into something magnificent is what we can hope for in our lifetime, if we can expect the same kind of dignity that the Western countries accord to incidental or ambient voices and treat them absolutely with the respect that they so deserve. I think if we can reach that in this lifetime, it will be a great achievement, no? Absolutely. Yes. Yes, sir. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड वी ऑल डेफिनेटली वी हैव Very टू well स्टार्ट said. रिस्पेक्टिंग. जो लोग नहीं करते प्लीज अभी से चेंज कर लीजिए. वेल सेड दैट. Bilkul, bilkul. Thank you, everyone, and it has been a Thank you. beautiful evening. Thank you for sparing your very precious time. We still have one more segment to go. ये जो टैलेंट हंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी जो क्वालिफाइंग राउंड की एंट्रीज हैं, वो आज से हम हर रोज कुछ एंट्रीज प्ले आउट करेंगे और हमारी जूरी है जो ऑलरेडी इनको जज कर रही है, ताकि हम ग्रैंड फिनाले के दिन जो टॉप 10 फाइनलिस्ट हैं वो स्टेज पर परफॉर्म करें. सो वील मूव ऑन टू दैट. एंड रोहित, रेनू, Rajshri and Meena, thank you so much. I really Thank appreciate you. this, and I'm looking Thank forward to you. meet you all on the Thank you, 11th Darpan. in your red 11th. carpet look, and we will rock it, not just Yes. the grand finale, but also the party. And with It our is going to bills, be a huh? fantastic We are day sending and night. red carpet look ka bills to you. We all. The glam team. है ना? The glam team, absolutely. And the large-hearted Darpan will, बड़े दिल वाला है. ये तो दे देगा, सब bills अदा कर देगा. I am sure, See, thank absolutely. you. As Thank you. always. Absolutely. Thank Thank you. you. Thank you. Thank Bye bye. you. Bye guys. Bye. Thank you. Bye Thank bye. you for having us Bye, on this everyone. Thank panel you. discussion. Thank you. Hello everyone, good evening once again. You're watching India Voice Fest 2022, जहां आवाजें फिर मिलेंगी. This event is produced and organized by Sugar Mediaz, conceived and curated by yours truly. I'm Darpan. Our main sponsors are Sound and Vision Studios, associate sponsors Audio Magic, proud supporters C Sharp Recording Studio, Pune and Mumbai, the Arc Audio, and Skylink Freight Forwarders Private Limited, and Petagaskar Spa. And we are now going to begin the qualifying round के कुछ वीडियोस का प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट ऑन इंडिया वॉइस फेस्ट. हमें बहुत खूब सारी एंट्रीज आई हैं और हमारी टीम ने उन एंट्रीज को स्कैन किया है और मोस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एंट्रीज आर गोइंग टू बी प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. और आप लोग ज़रूर ये देखिएगा, स्केड्यूल में देखिएगा किस दिन टैलेंट हंट के वीडियोस प्ले आउट हो रहे हैं. और
यू नेवर नो, शायद उनमें से एक वीडियो आपका भी हो। और अगर आपने ऑलरेडी ग्रैंड फिनाले का टिकट बुक किया है, और अगर आपने टैलेंट हंट में भी पार्ट लिया है, और अगर आप टॉप 10 में सिलेक्ट हो जाते हैं, देन यू विल गेट टू परफॉर्म लाइव on the 11th of December at Rangshada. The segment will be hosted by your very own favorite veteran voice artist and rock star Rajesh Kawa. So इस वक्त I am going to take your leave for today and I will see you tomorrow at 6 p.m. आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि टैलेंट हंट जहां पर हम नए उभरते हुए कलाकारों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसकी जो एंट्रीज हैं वो अब प्ले आउट होंगी। और कल का स्केड्यूल आपने अभी देख ही लिया है। और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। वी आर @India Voice Fest एवरीवेयर। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं। अगर आप इसे शुगर मीडियाज या इंडिया वॉइस फेस्ट के यूट्यूब चैनल या हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो उस पेज को फॉलो कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको आने वाले दिन के सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड हैव अ लवली इवनिंग और नाइट। और अगर आप लोगों ने खाना वगैरह नहीं खाया है, तो खाना खाते खाते देख लीजिए, बिकॉज ये जो टैलेंट हंट की एंट्रीज हैं, इनमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। यू जस्ट सिट बैक, एंजॉय and enjoy these videos. So I'll see you tomorrow. Till then, take care of yourself. This is India Voice Fest 2022. आवाजें फिर मिलेंगी। This is not a Macron. This is the French head of state. This is just a macaroon, and this doesn't look like it tastes great. Behold, the dazzling macaron. A dessert so elegant that's only been accomplished with a precision that's Parisian. An Indian chef then picked them up from the windy streets of fair Paris. She smuggled home the sweetie pies in an empty pot belly. Her mission was a simple one: your dessert dreams to satiate. That when your dreadful day is done, there's a bit of Paris on your plate to make sure when you're overtaxed from fighting monsters in your head, the beast will bring you cookie crumbs they find underneath the bed. When you're doleful and you're so fed up from the cloud of gloom over your head, there's Le 15 patisserie to make sure that you are just fed. दुनिया के भविष्य का शहर अपने शहरी वातावरण में निहित है। दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या शहरों में बसती है और ये बढ़ती ही जा रही है। इस तेजी से बढ़ते प्रवास की वजह से संभावनाएं तो बढ़ रही है, साथ ही परेशानियां भी बढ़ रही है। आज के शहरों को कैसे विकसित कर ऐसा बनाया जाए जहां हम अपना कल देखते हैं। दुनिया के लगातार बढ़ते शहरों में स्थायी प्रबंधनीय मानव रिक्त स्थान बनाना दुनिया भर में सरकारों के सामने एक चुनौती है, और इस चुनौती की जटिलता को सिंगापुर आवास और विकास बोर्ड से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। ये संस्था सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक में लगभग 80% निवासी घरों के लिए रहने की जगह बनाती है। प्रीत तो हमने भी आपसे की थी मोहन, किंतु क्यों ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ना होकर आपकी प्रेयसी होते तो अच्छा होता। पति पत्नी का रिश्ता चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, संसार तो प्रेयसी को ही याद करता है। जब गौरी के संग शंकर, सीता के संग राम सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे कृष्ण कहाए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, यही निवेदन है तुमसे, इतिहास में हो ये सुधार। राधे कृष्ण के साथ रुक्मिणी कृष्ण करो स्वीकार। आहन नींद से जागकर जीवी जीवी करते हुए भागता है। शिव का आहन की आवाज सुनकर रुकती है। आहन तुतलाते हुए, अब तो जा ले ओ जीवी, उसका हाथ पकड़कर किस करता है।
वो क्या है ना, जो मामा का लाडला है वो मामी का लाडला तो होगा ही। अरे रे, अभी नहीं, तब जब ये दोनों साथ होंगे। बाहर सावन की घनघोर वर्षा हो रही थी और कक्ष के भीतर बैठकर भी कोई भीग रहा था। वह थी मीराबाई, जो भीग रही थी कृष्ण प्रेम में। प्रेम के इस अतिरेक में डूबी मीरा उठाती हैं पत्र, उठाती हैं कलम, किंतु पतिया कैसे लिखूं, लिखी ना जाए। तू मुझे मारने वाला है ये विश्वास दिलाकर मैंने उसी के हाथों तेरा मृत्यु कांड लिखवा दिया। राजमाता, मूर्ख माता। Accept pain, know pain, feel pain. Those who do not know pain will never understand true peace. I cannot forget the pain that Yahiko suffered. And now this world shall know pain. Almighty push! पर उस महालिंगम के साथ शॉपिंग पर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बलू ये उठा, बलू देखो कितना क्यूट है। मैं तो पागल हो जाता हूँ खुशी के मारे। कितना सुहाना दिन है शॉपिंग के लिए मिस महालिंगम। चले? ए उस तरह की ब्लेन, तेरी जिया ने मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका खिलाड़ी टीवी पर। और अब अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि स्टेज पर आने वाले हैं एक दमदार, भारी भरकम वॉइस परफॉर्मर। लेकिन अरे, ये कौन आ गया? हाय आंटी, हाय अंकल, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम विनी है। मेरे अंकल मिस्टर स्क्रूज मैकडक बहुत कंजूस है। क्या आप मुझे कैंडी खरीदने में मदद करेंगे प्लीज? ओ वेंडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूँ लॉन्च पैड, आप सबका फेवरेट पायलट। और मिलिए मेरे को पायलट से। अरे भिड़ो, क्या बोलता रहता है? स्माइल क्यों करो तुम? इन सब का सड़ेला थोबड़ा देखा है क्या? चिरकुट। जी हाँ भाइयों और बहनों, सही पहचाना, मैं हूँ क्लीशे वाली आवाज, जिसे आपने पुराने जमाने के एड्स में जरूर सुना होगा। और अब एक कमर्शियल ब्रेक। Losing your mind to pollution and office politics? New Tuna White Complete Mind Wash, enriched with pure tuna essence. It deep cleanses your skin and mind to reveal how fair and gullible you are. कभी सर से शुरू मत करो, सर जो है चकरा जाता है। मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करोगे, और तुमने वही किया जो मैंने सोचा था। तुमने 5 लोगों को मरने दिया, और फिर तुमने अपनी जगह डेंट को लेने दी। मेरे जैसे शख्स के लिए भी ये बहुत गुरूर है। माफिया तुम्हारा खात्मा करना चाहती है ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। चलो अपने घर चले, जहां थक कर सोने पर सुकून की नींद आए, जहां हर लम्हा यादगार हो जाए। चलो अपने घर चलें। फाइंडिंग हार्ड टू सेल और बाय प्रॉपर्टी? तो आज ही कांटेक्ट करें प्रॉपर्टी हंट और अपने सपनों के घर को अपना बनाएं।
प्रॉपर्टी हंट। बहुत सुना है इस शहर के बारे में, अखबार से लेके कलाकार तक चर्चों से घिरा ये शहर। यहां उम्मीद के साथ ठोकर मुफ्त में मिलती है। यहां सपने पूरे हो ना हो, जीना जरूर सीख जाते हैं। इन हजारों उम्मीदों को महसूस करने हम भी निकल पड़े हैं, सपनों की नगरी बंबई की तरफ। कभी सोता नहीं ये शहर, ना सपनों को हमारे सोने देता है कभी। ठहरने का वक्त नहीं है इस शहर के पास, पर मरीन लाइन पर सैकड़ों जिंदगियां थमी होती है। Want a facial like glow? New Lakme Fruitalicious Sheet Mask. Tear it, wear it. With the goodness of 100% real fruit extracts, it gives your skin a fruit facial like glow in only 15 minutes. Get a fruit facial like glow with Lakme Sheet Mask. Lakme, reinvent. वो कौन है जिसको खेलना पसंद, जिसकी इमेजिनेशन है एकदम सुपर? मजे का दूसरा नाम है क्या? पेश है एक नई फ्रेंड, एक बिल्कुल नए शो में। शुरू हो रहा है कल दोपहर 12 बजे डिज्नी जूनियर पर। I had been hoping to get away by 5 so that she could be at the farm in time for dinner. She tried not to show her true feelings when at 4:37 her deputy, Phil Haskins, presented her with a complex 12-page document that required the signature of a director before it could be sent out to the client. Haskins didn't hesitate to remind her that they had lost 2 similar contracts that week. It was always the same on a Friday. The phones would go quiet in the middle of the afternoon, and then, just as she thought she could slip away, an authorization would land on her desk. Gabrielle Chanel were a star. She would have been at the heart of a constellation of artists. कल मैंने शॉपक्लूज की दिवाली सेल पे शॉपिंग की। इतने कम में, 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 इतने कम में कि क्या बताऊं। पेश है शॉपक्लूज दिवाली सेल, इतना सब कुछ इतने कम में। टिंग से लेके टोंग, डिंग से लेके डोंग, इतने कम में ऑन shopclues.com। वो कौन है जिसको खेलना पसंद, जिसकी इमेजिनेशन है एकदम सुपर? मजे का दूसरा नाम है क्या? पेश है एक नई फ्रेंड, ब्लूई, एक बिल्कुल नए शो में। शुरू हो रहा है कल दोपहर 12 बजे डिज्नी जूनियर पर। Hey guys, buckle up for a new episode of Gold Spotters, the one and only podcast made to teach rising artists like you how to pave your way in the modern music industry. Whether you're a singer, songwriter, rapper, producer, or influencer, you're sure to pick up tidbits of actionable advice when you listen to Gold Spotters. Today, backed by popular demand, we are going to play another round of our infamous game. Which clip would you skip? Do you remember having authentic Italian pizza in Naples? The puffy charred crust, the excess flour on your fingertips, the smell of tomato slices and mozzarella, the sumptuous texture that melted in your mouth. Do you remember having pizza in Naples? No? Make memories for your senses. Travel.
विद्वान गुरु थे। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। शिक्षा के साथ साथ आश्रम में घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी व अन्य कलाएं भी सिखाई जाती थीं। गुरुजी अब वृद्ध हो चुके थे। प्रिय आवेदक, इंडसइंड बैंक की ओर से आपका अभिनंदन। आपकी लोन एप्लीकेशन के संदर्भ में आपने इन बीमा प्रोडक्ट्स को चुना है। अपनी सहमति देने के लिए 1 दबाएं। In e-commerce, you have 3 main goals: sell your products, delight your customer, and have them come back over and over again. देश की मिट्टी की खुशबू कुछ अलग ही होती है। जब दूरियां कम हो जाती हैं, तो अपनों से मिलने की खुशी एक अलग सा एहसास दिलाती है। सफर कभी मीलों का नहीं, 2 दिलों के बीच का होता है। और हम सफर जब कोई अपना हो, तो दूरियां भी नजदीकियां बन जाती हैं। एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स। पहाड़ सदा से ही सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की तो हर एक टेकरी और शिखर पर ऋषि मुनियों और देवी देवताओं का वास रहा है। इसलिए देश विदेश से तीर्थयात्री यहाँ खींचे चले आते हैं। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass stood beautiful flowers like stars. कल हल्की हल्की बारिश थी, कल सर्द हवा का रक्स भी था, कल फूल भी निखरे निखरे थे, कल उनमें आपका अक्स भी था, कल बादल काले गहरे थे, कल चांद पे लाखों पहरे थे, कुछ टुकड़े आपकी यादों के बड़ी देर से दिल में ठहरे थे, कल बातें उलझी उलझी थी और कल तक ये ना सुलझी थी, कल याद बहुत तुम आए थे, कल याद बहुत तुम आए थे। अरे हमको भी तो आता है पोएट्री रेसिटेशन, सुनेंगे क्या? ये हमारा शेर है। बदतमीज, चादर की कमीज, लोहे का पजामा, बंदर तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, कुत्ता तेरा यार, आम का अचार, आजा मेरे यार। चलिए मिलता हूँ आप सबसे, तैयार रहना। Hi, my name is Shweta Kulkarni and I'm a voiceover artist and sharing my small video of voiceovers. Bani, haven't slept? Still up? Hi, yaar. Oh, can't sleep. Someone seems to be in love. Not in love, babes. On periods. Oh, okay. So try Whisper Bindas Nights, na? It's 75% longer and wider at the back. So, no leakage, no worries. Sleep Bindas with Whisper Bindas Nights. Tap on the banner to know more. व्यावसायिक गरज आणि वैयक्तिक आवश्यकता सर्व अडचणीच्या वेळेस मदतीला येणारा खरा मित्र बँक ऑफ महाराष्ट्र घेऊन आले आहेत कर्ज मिळवण्याचा एक सहज सोपा मार्ग महा गोल्ड लोन मिळवा सोने तारण कर्ज आता 7.5% व्याजदरात सोपे दस्तऐवजीकरण केश कल्याणम हर्बल हेयर ऑयल है ना केश कल्याणम हर्बल हेयर ऑयल है ना जिसके यूज से मात्र 1 हफ्ते में बालों की झड़ने की समस्या से छुटकारा पाओ और सिर्फ 3 हफ्तों में ही नए बाल उगना शुरू हो जाए केश कल्याणम हर्बल हेयर ऑयल अब बालों से जुड़ी हर समस्या को कहें बाय बाय। Hey, wow, bravo! इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, माँ कसम जोरदार ठोकर ताली यार। मैं भी मुंबई जाऊंगा इंडिया वॉइस पे 2022 में। नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ओ
माफ करना, बड़ा बच्चन बोल रहा हूँ। और एबीसी न्यूज में आप देख रहे हैं मुंबई में होने वाले इंडिया वॉइस फेस्ट 2022 का धमाका। ओए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं मैडम जी? एक टिकट नहीं मिलेगा तो क्या मैं इंडिया वॉइस फेस्ट नहीं जाऊंगा? मैडम जी, मैंने टिकट खरीद ली है, मैं भी जाऊंगा। तारा इंडिया जाएगा वॉइस फेस्ट में। भैया 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 भैया, मैं भी जाऊंगा। ओगी ने कर दिया भोगी, अच्छा है, मजा नहीं आया, कच्चा है। चलने दो चलने दो चलने दो, इंडिया वॉइस फेस्ट 2022 है। अब देखे भाई, आपको भी आना है, मेरे को भी आना है। अब भिड़ो इंडिया वॉइस फेस्ट 2022। छत्तीसगढ़ तैयार है कला, संस्कृति एवं लोक खेलों के महापर्व छत्तीसगढ़िया ओलंपिक एवं राज्य युवा महोत्सव 2023 के लिए युवा जोश, उत्साह एवं विविध सांस्कृतिक कलाओं का होगा महासंगम। 12 से 14 जनवरी 2023, स्थान साइंस कॉलेज ग्राउंड, रायपुर, छत्तीसगढ़। नव वर्ष में नव उत्साह, युवा उमंग के संग गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। सर हम सोच रहे हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं सर? हम एक टीटी है यहाँ पे और क्रिकेटर नहीं बन पा रहे हैं। ऐसा क्या नहीं है सर, हमें मन नहीं लग रहा है। कभी कभी तो मन कर रहा है सर सब छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आता है। माँ अरे माँ, तुझे पता है आज मैं स्कूल से आया माँ, फिर अपने दोस्तों के साथ होमवर्क किया और मैम ने मुझे बहुत मारा क्योंकि सब आंसर गलत था माँ। मुझे पता ही नहीं मुझे क्या हो गया माँ, और एक लड़की से भी मुझे प्यार हो गया था। आओ धक्के टिक कर दूंगा, उस आगे के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। आओ, उसने मेरा गेम नष्ट कर दिया, मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। आओ पारू, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, बट मैं कभी बोल नहीं पाता हूँ तुमसे। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे बारे में मैं बहुत सोचता हूँ और कभी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुमसे प्यार कोई होगा ही नहीं यार। आई लव यू सो मच, तुम ना बहुत ही क्यूट लड़की हो। पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमें ये बात कब पता चली? आज, कल, परसों नहीं, बरसों। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ हैं। अकेले हो यहाँ? इतने घने जंगल में तुम कैसे आए? तुम नहीं जानते तुम क्या हो, मैं जानती हूँ तुम क्या हो। बेचारी नन्ही सी जान, महफूज रखूंगी मैं तुम्हें। अपना डर छोड़ दो, विश्वास करो मेरा। नमस्ते दीदी, मेरा नाम ना लल्ली है और मैं आपको बता दूं मुझे बैंगन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बेटा तुम हमें क्यों बता रही हो तुम्हें बैंगन पसंद है या नहीं? वो आंटी आप लोग हमारे नए पड़ोसी हो ना, और अब तो हमारा आना जाना लग रहेगा। तो आपको पता तो नहीं हमको क्या खाना पसंद है। बोली अलग, भाषाएं अलग, आवाजें कई अलग अलग, पर मंच सिर्फ एक। जी हाँ, ये है इंडिया वॉइस फेस्ट, वॉइस एक्टिंग टैलेंट हंट 2022। देश भर के सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट यहाँ केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं बल्कि आवाज की जादूगरी का हुनर और जौहर भी सीखते हैं। तो इस बार 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बने रहे हमारे साथ। अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें indiavoicefest@gmail.com पर। ठंड की सर्द रात सन्नाटे से भरी अपने साथ कपकपी भी लाती है। ऐसे काली जड़जड़ाती रातों में वयस्क बाघिन अपने झुंड के लिए शिकार करने अक्सर जंगल में निकलती है। कुछ जंगली जानवर जो नदी किनारे रात में पानी पीने जाते हैं, वे अधिकतर शिकार हो जाते हैं। भूखी जंगली शेरनियों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
अच्छा लगता है ना जब मिलता है कुछ अनएक्सपेक्टेड। इसलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स अब सेविंग अकाउंट्स के कई सारे ट्रांजैक्शन। डोंट स्ट्रेस, करो इम्प्रेस। शॉप ऑन फ्लिपकार्ट फैशन, इंडिया का फैशन कैपिटल। Heads up, life just isn't the same without music. Good thing at Raga Music, streaming your favorite tunes is free. Piti, तिब्बत और लद्दाख के बीच हिमाचल प्रदेश में छुपा हुआ एक ठंडा रेगिस्तान। आज मौसम काफी अच्छा है। आज तो पानी बंदी है। क्या बोलते हो सैम, चले? मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं जा पाऊंगा। मेरा पेट खराब है, सुबह से बाथरूम के 10 चक्कर लगा चुका हूँ। ए बुका रेड्डी, तुझे लगता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? गलत फहमी है रे। अगली बार से तूने मेरे गांव वालों को परेशान किया ना, तो तेरे ही महल में घुस के तेरे ही आदमियों के सामने तेरा वो हाल करूंगा कि तेरे आदमी भी तुझे सलाम करना भूल जाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंडिया वॉइस फेस्ट 2022 बहुत अच्छा है। ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या है ये? साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंडिया वॉइस फेस्ट 2022 मुंबई में होने जा रहा है 11 दिसंबर को। टिकट्स ली क्या आपने? मोहम्मद जहीर, अखलाक अहमद, खुर्शीद, लाला जिंदा होते तो वो भी जाते। पता है जब लाइफ में सब कुछ आपके कंट्रोल में हो ना, ये वो फीलिंग है। फ्रीडम इज बेफिक्र होके लाइफ के हर रंग को जीना, कभी दूर रहकर भी अपनों का ख्याल रख पाना और कभी पास रहकर उनकी छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करना, बस बंद आंखों से भरोसा करना। इट्स लाइक अब सब कुछ मुमकिन है, और वो भी आपके घर पे। अब ये हुई ना असली फ्रीडम। अर्बन क्लैप, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स आपके घर, आपके टाइम पे। हमें ये जानकर अच्छा लगा कि आप हमसे प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम तो पानी की तरह होता है, जो कभी अविचल रहता है तो कभी सारी सीमाएं लांघ देता है, या तो विषम परिस्थितियों में भाप बनकर उड़ भी जाता है। और आप कहते हैं कि आपके हृदय में हमारे अलावा और कोई नहीं आएगा। आप युवा हैं और एक योद्धा भी, जो कभी इस नगरी तो कभी उस नगरी। अगर कोई कन्या मिल गई जिसकी आंखें हमसे भी सुंदर हुई, तो आप क्या करेंगे? क्या तब भी आप हमसे ही प्रेम करेंगे? बाबूजी ने ना मुझसे ऐसे कहा, हंसा जरा हलवा बना देना ना, तो मैंने बना दिया था, पर बदकिस्मती से जल गया था पूरा पूरा हलवा। नहीं नहीं, हलवा नहीं हिमांशु, बंगला जल गया था पूरा। Hi guys, this is Yati Sonodia and this is my entry for India Voice Fest. The following clip is from Suicide Squad and it's the character voice of Harley Quinn. पता है तुम क्या कहना चाहते हो। हार्ली, तुम जा भी सकती थी और फिर मैं कहती तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बहरी नहीं हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। और फिर मैं कहती जब आदमियों में किसी की पसंद इतनी खराब हो जितनी मेरी है, तो वो आसानी से कहीं जाने नहीं देते। वो परेशान करते हैं, तुम्हारे डॉगी को मार देते हैं और हर वो चीज जो तुम्हें पसंद हो उसकी जरा भी कद्र नहीं करते, और उन्हें बर्दाश्त करना मौत से भी बदतर लगने लगता है। So the next is the character voice of Bubbles from Powerpuff Girls. हेलो मिस्टर मॉन्स्टर, क्या आप प्लीज यहाँ से चले जाएंगे? वो क्या है ना, हमें हमारा शहर बहुत पसंद है और अगर आप ब्राउन्सविल को तबाह करेंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम आपके लिए शुगर कुकीज लाए हैं। चली हवा चली शहर के यार पार, तुम जानो मैं ना मानू हार।
बड़े बॉस के घर में आपका स्वागत है। दूसरा दिन सुबह 7 बजे। सुबह हो गई मामू। गुड मॉर्निंग बड़े बॉस। अरे जॉर्ज, तुम क्या ढूंढ रहे हो? डायनासोर। दोपहर 1:30 बजे। ये क्या मोटू, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया है? अरे क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। क्या बड़े बॉस, एक खाना बनाने का काम भी उसको दिया जिसको खुद भूख लगती है। अरे वो डोरेमोन, वो कुछ गैजेट निकालो, कुछ खाना। पर मुझे तो गैजेट्स यूज करने के लिए सख्त मना किया गया है। जान बनेगा डॉन, बता दे वो है कौन, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे बड़े बॉस ने मना किया है। अय्यम्मा, डू नॉट फियर व्हेन चिंगम इज हियर। अरे अरे अरे, तुम सब हट जाओ, मैं बनाती हूँ खाकरा ने थेपला ने फाफ। थोड़ा बचे तो मुझे भी देना। ए हाँ हाँ चौक्कस। एक बात प्लीज क्लियर हो जाए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे प्रॉब्लम होगी भी क्यों? सोनाली वॉज माई गर्लफ्रेंड। अरे यार, सोनाली एंड मी फेल इन लव। हो जाता है, शिट हैपेंस। या इट वाज शिट फॉर मी, एंड आई एम श्योर तूने एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचा होगा। इमरान मैन, मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। अर्जुन, अब हो गई गलती, अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या करूं? सॉरी अर्जुन का टी शर्ट पहन के घुमा करूं? व्हाट शुड आई डू, टेल मी। लुक एट हिम यार। लिसन यू बोथ ऑफ यू प्लीज। सोनाली वाज अ बिच, ओके? आई एम रियली सॉरी। या उसने पहले तुझे यूज किया, फिर बीपीएल देके तुझे यूज किया, और फिर तुझे भी डंप कर दिया। शी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम देन, एंड शी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम नाउ। 4 साल पहले यार हमें ट्रिप उसकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। आज हम मेरे वजह से यहाँ पे हैं। डोंट लेट हर रूइन दिस। और कितनी बार सॉरी बोलना पड़ेगा? प्लीज क्लियर जाए, कितनी बार? जब तक यहां से ना निकले ना, तब तक। और ये बीपीएल क्या है? बम पे लात। पागल है पागल वो, पागल कर दी जहां भी ये जाई। देखो कैसे दीवाना कर दे सबको। मेरा नाम शिनचैन है। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, ये मेरा गाना है, शिनचैन नोहारा का, और मैं 5 साल का बच्चा हूँ। और मेरे घर में मेरी मॉम डैड और शीरो है, और मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ आए हैं आपसे मिलने के लिए। मिलो सबसे। दोस्तों, अपना अपना नाम बताओ। मैं बोचांग हूँ। मैं कजामा। मैं नैनी। मैं मसाओ। नमस्ते दोस्तों। देखो, ये सारे मेरे दोस्त हैं और इनके साथ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, सब करता हूँ, और मेरी मोहरा फैमिली को तंग भी करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मुझसे और मिलना है तो आप लोगों को वॉइस फेस्ट आना होगा, वॉइस फेस्ट 2022। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे। बाय बाय। India, a thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world, with a rich cultural heritage and diversity, and the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. Lotus, the national flower of India, representing our culture, history, and heritage, a poignant symbol for humanity, and the inspiration for India's G20 logo design. हर रोज बच्चे आपको करते रहे सरप्राइज नए नेस्ले नैनग्रो के साथ, जिसमें है डीएचए, हाई क्वालिटी वे प्रोटीन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और प्रोबायोटिक्स के साथ। नैनग्रो, ऑल ग्रोथ, ऑल पॉसिबिलिटीज।
गर्मा गर्म सुनहरे गोले राजकुमार को परोसे गए। उसने एक सूंघा, चखा, फिर पूरा का पूरा गोला मुंह में गड़ुप गड़ुप 1, गड़ुप 2, गड़ुप 3, 4। बहुत उम्दा। ठुसे हुए मुंह से वो बुदबुदाया। हाँ, बहुत उम्दा। राजा ने भी घोषणा की। नहीं नहीं, उसने कहा बोंडा। रानी खुशी से चिल्लाई, ये बोंडे हैं। जी, बोंडे। रसोइया जल्दी से बड़बड़ाया और रसोई में भाग गया। Hi, I'm Kaushik Chakravarti, and I'm going to read you a small excerpt from Amish Tripathi's book, Ram, the Son of Ishmael, and the story is about Ram's sister, Roshni. When Roshni had not returned by the next morning, Manthara, her mother, had sent out her men to Saraya to find and bring back her daughter. They had ridden out at dawn as soon as the city gates were unlocked. An hour's ride away from the city, they had chanced upon Roshni's body. She had been brutally gang raped. Her head had been banged repeatedly against a flat surface. The marks on her wrist and her back suggested that she had been tied to a tree. Her body was covered with bruises and vicious bite marks. The monsters had ripped off some of her skin with their teeth around the abdomen and bare arms. She had been beaten with a blunt object all over her body, probably in a sick, sadistic ritual. Her face was torn on one side from her mouth to the cheekbone, the injuries and blood clots in her mouth suggesting that she was probably alive throughout this torture. There were cement stains all over her body. She had died in a most gruesome manner, as one of the assailants had poured acid down her throat. Hi there, my name is Kartikeya Saini and this is the video for India Voice Fest Talent Hunt Round Actor Mimicry. नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। रिश्ते में तो हम आपके बाप का भी बाप लगते हैं, लेकिन नाम जान के क्या कर लोगे अब? क्या बात, आपकी सोच मेरे इरादों की इमारत को हिला नहीं सकती। फटे मोहब्बत की है मैंने गीता से, फटे। ओए लालटेन दी गुल्ली, वो जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, राज तेरा इंतजार कर रहा है। ओए मुकम्मो, खुश हुआ। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। डोंट एंग्री मी। मैं छोटी छोटी बातें करता है हरामी साला। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ एक ही बार बोलता हूँ और वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। क्या बात कर रहे हो? आ जाओ अपनी पर। अच्छा है, देखिए भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, कुछ समझ नहीं। कंट्रोल कंट्रोल होता है। ये इंडिया वॉइस फेस्ट क्या हुई और इसमें क्या करना होगा? ये इंडिया वॉइस फेस्ट क्या है और इसमें क्या करना होगा? अरे इंडिया वॉइस फेस्ट तो एक 7 दिन का महोत्सव है। 7 दिन का महोत्सव, क्या कोई मेला वेला है क्या? आइश क्या बात, तेरे को राजेश भाई समझाएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ राजेश कावा, वॉइस एक्टर, और हाँ, इंडिया वॉइस फेस्ट एक 7 दिन का इवेंट starts from 5th to 11th December. 6 days online, 7 date.
11th December at Auditorium Rangsharda, Bandra. टैलेंट हंट, फ्रेश टैलेंट्स, न्यू कमर्स, सबके लिए एक सुनहरा मौका. टैलेंट हंट सबमिशन शुरू हो गई है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? indiavoicefest.com पे जाओ और अपनी टिकट्स बुक करो. थैंक यू सो मच. फुल पावर, फुल पावर. अरे क्या बात करते हैं साहब. साहब मैं अभी के अभी इंडिया वॉइस फेस्ट की टिकट बुक करते हैं साहब, और आप लोग भी कर लो. समझते हैं ना सलाम साहब. मैंने तो अपनी टिकट ले ली है, और आपने? ऑलराइट, मैंने अपनी टिकट ले ली है और आपने? Once at a small dinner party, the subject turned to space travel. The gentleman seated to my right said, "Lyle, you're much too young to remember this, but when Apollo 2 landed on the moon..." Even if my life depended on it, I couldn't tell you what the chap said next. I simply remember smiling to myself and stretching to get a glimpse of my youthful self in the dining room mirror. Of course, I remember July 1969. Like the rest of the world, I was glued to the television watching Neil Armstrong's size 9.5 B boot hit the moon. However, I certainly was not thinking of moon travel at that dinner party. I was too busy reveling in the fact that this lovely man didn't think I was old enough to remember 1969. I assume his opinion of my youthfulness just slipped out. Therefore, it must be sincere. Sure, now that I think about it, he probably knew darn well I was old enough to remember the moon landing. I bet he was using the maneuver I call accidental adulation. But it doesn't matter. My warm memories of him remain. Accidental adulation is slipping praise into the secondary part of your point, putting it in verbal parentheses. There are those who demand respect out of the position they occupy, and then there are those who earn respect. Colonel Wangchuk may come off as a soft-spoken, light-hearted man, but the charming smile conceals a steely resolve that have shouldered mountains of responsibilities. This is the story of the Ladakhi soldier who attended the call of duty beyond all measures. A treasure chest of fun and exciting prizes awaits you as Discovery's Super School League is back in an all-new season. The clock is ticking and seats are filling in fast. Download Baiju's app now to register for Disney's Super School League Season 5. There was a caterpillar. He had a lot of feet. On every pair of feet, a pair of tiny shoes he wore. They stopped his feet from getting really, really sore. Then, one day, he didn't want to walk or eat at all. And his shoes felt rather tight and rather small. Ouch! He had a quite surprising urge to find them all new feet. So he set off through the woods at once, wondering whom he'd meet. He found a friendly woodlouse underneath some logs. "Oh, hello," Caterpillar asked. "Would you like my wooden clogs?" Woodlouse said. "I love them. I think I'll do a jig." Caterpillar said farewell and then set up off a twig. He walked beneath a spider dangling from above. Caterpillar called, "I bet my slippers you would love." Spider said, "I do. They'll keep my feet as warm as toast." Caterpillar thought they were the ones he'd missed the most.
जो रोबो जीता है वो है यम्मा। अब कौन आएगा? किसके पास हिम्मत है लड़ने की लिटिल यमा से? मैं ट्राई कर सकता हूँ। मेरे पास एक रोबो है, इसे मैंने खुद बनाया है। घर जाओ छोटे, यहाँ का रूल है नो पैसा नो फाइट। ओह, क्या इतने काफी होंगे? तुम्हारा नाम क्या है छोटू? हीरो। हीरो हमारा। अपने रोबो को तैयार करो जीरो। फाइटर्स है दो, बचेगा सिर्फ एक। फाइटर्स तैयार है, फाइट। ये मेरी पूरी फाइट थी। एक और मौका मिलेगा? मान लो कि तुम हार गए हो छोटू। मेरे पास और पैसे हैं। फाइटर्स तैयार है, फाइट। यमा का गेम तो खत्म। ये क्या? ये कैसे? ये नहीं हो सकता।